So, I think we are live now. okay, Assalamu alaikum wa rahmatullah. I have to add one of this person. His name, I can't find his name. Can you? Okay, hold on. This is a student from UK. Who is Taha? Who is Taha? Taha कौन है भाई? सजाद अहमद, कोशिश करना है कि खामोशी हो. Taha, I'm going to. Taha कौन है? Who's Taha? We don't have a lot of time. इनको किसने co-host बनाया? You don't have to give someone a co-host like this. ठीक है ना? Until I tell you who to give the co-host to, right? Okay, so this is me, sir. What is your name over there? So it's a very interesting story today. The story basically is of two students, right? Okay, so Taha is the student. Okay, so you can bring him over, and Huzaifa, as soon as like they are done, you can remove their rights and you can remove them. Okay, this is very important. Will you be able to do that, Huzaifa, or just make me the Yes, sir. So I am just make me available. the full host, right? So that if I have to take it over, I can take it over as well. Okay, you can make me the full host. Okay, inshallah. Okay, sir. So it's a very interesting story today. I believe his name is Taha. Taha, is that you? Aap ho Taha? Hello. Ji, Assalamu alaikum. Hello. Yes, sir. Okay. Walaikum assalam. So it's a very interesting contrast. I just want to start this with a question. The question that came to me was, okay, one of the students, there are two students from Pakistan. One is from Saudi Arabia, other one is from Pakistan. एक आया पाकिस्तान से मास्टर्स करने के लिए और वो हमारा स्टूडेंट था. एक आया जो हमारा स्टूडेंट नहीं था मास्टर्स करने के लिए और उसने मास्टर्स कर लिया. दोनों ने मास्टर्स किया, दोनों को पीएसडब्ल्यू मिला. एक की पीएसडब्ल्यू, सजाद तुम्हारी पीएसडब्ल्यू मिलने में तुम्हारी कब तक जॉब हो गई थी? जी फैसल, पीएसडब्ल्यू मेरा जुलाई में 23 के मिला था. जुलाई 2023 में लगा. और तुम्हारी जॉब कब हुई तुम्हारे हाथ में? विद इन 6 months लगे तुम्हें? सिर्फ प्रोसेस लगने में मतलब सिक्योरिटी के लिए से टाइम लगा, वरना 3 मंथ में हो जानी थी मेरी. 3 months में अगस्त तुम्हारी में जॉब हो गई थी. सो यू हैड टू वेट आउट द होल सिक्योरिटी क्लियरेंस प्रोसेस, राइट? हाँ, 3 मंथ सिक्योरिटी वाले ले गए, 3 मंथ वो इंटरव्यू और कॉल आने में और उनका अपना एचआर डिपार्टमेंट में. हाँ, और लेकिन डेट लगी. सो देयर आर टू स्टूडेंट्स, दोनों पाकिस्तान से आए. दिस इज द सेम स्टोरी फॉर इंडियंस, फॉर बांग्लादेशी, फॉर नेपाली. इट्स द सेम स्टोरी. दोनों मास्टर्स करने आए. आप भी मास्टर्स करने आए, आप भी मास्टर्स. आपने किस यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किए? सजाद, सर मैंने जी फैसल भाई, मैंने हार्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी से. हार्टफोर्डशायर. किस में किया मास्टर्स? कंप्यूटर साइंस में. कंप्यूटर साइंस में. अच्छा, ताहा तुमने क्या किया? सर मैंने साइबर सिक्योरिटी की है नॉर्थ अमेरिका यूनिवर्सिटी से. नॉर्थ अम्ब्रिया. अच्छा, बाय द वे नॉर्थ अम्ब्रिया वही यूनिवर्सिटी जिसके साथ हम आर्टिकुलेशन एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं. ओके, so that's one thing. So the name is out, but I will tell you more about it later on. Anyway, ठीक है सर. so here's the thing. सजाद अहमद, जब तुमने अपना मास्टर्स किया, तुम्हारे पूरी क्लास में किसी की जॉब हुई है? नो फैसल भाई, किसी की नहीं. सब डिलीवरियां कर रहे हैं या सिक्योरिटी कर रहे हैं या फिश एंड चिप्स कर रहे हैं, जैसे मैं करता था. जैसे तुम फिश एंड चिप्स में करते थे, राइट? अच्छा, ये अगर तुम ना पिछले 5 साल का भी रिकॉर्ड देखोगे ना, 10 साल का भी रिकॉर्ड देखोगे, यही रिकॉर्ड है. दिस इज द सेम रिकॉर्ड. The degree is only as good as to take you from your country over to UK or Germany or France or USA or Canada, wherever you want to go. Australia, it's the same story.
But what happens there is after completing the degree, you get your work permit. In UK, it is called PSW. USA में EAD मिलता है, Employment Authorization Document, similar, जिसमें आपको 2 साल, 1 साल, मैक्सिमम 3 साल की काम करने की इजाजत होती है. जर्मनी में भी इसी तरह मिलता है, कनाडा में भी इसी तरह मिलता है. This is what happens. Okay, so you got your PSW, you were able to secure your job in 3 months time, right? The process of the clearance and everything took longer because of the Yes, job. ठीक है ना? बिल्कुल ऐसा अच्छा, ही। तुम्हारी जॉब जो है वो DevOps इंजीनियर की है, right? जी, एसोसिएट डेवऑप्स इंजीनियर। Associate DevOps engineer. What is your salary by the way? 35, 30 कितने दे रहे हैं? वैसे तो उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा था 35 पाउंड और 200 ऊपर, लेकिन जो मुझे उनका आया लेटर उसमें 34 पाउंड और 300 के पास है, क्योंकि उन्होंने लिखा था डिपेंड ऑन एक्सपीरियंस, ऐसा लिखा था ना, तो ठीक है, हाँ. वेरी करेंगे। मतलब कि तुमने यहाँ पढ़ा, हमने तुम्हारा CV बनाया, सब कुछ किया और तुम्हारी जॉब हो गई, राइट? माशाल्लाह, राइट? सो दैट्स अ ग्रेट वो, माशाल्लाह. जितना तुम्हें एक्सपीरियंस था, जितना तुमने काम किया, जितनी तुमने स्टडीज की, वैसे मिला, ठीक है? यानी कि तुम्हारी जो पूरी पाकिस्तान की जर्नी थी, अब तुम यहाँ चढ़ गए हो, अब तुम इसके ऊपर काम कर रहे हो, राइट? अब तुम्हारा जो नेक्स्ट वो क्या है, PSW पे जॉब सिक्योर करने के बाद आगे, मैंने तुमसे कहा था पढ़ाई मत रोकना, ठीक है ना? अगर तुम पढ़ाई रोक दोगे, उधर ही खड़े रह जाओगे. लेकिन अगर तुम पढ़ते रहे ना, तुम ऊपर चले जाओगे और तुम सेटल हो जाओगे, तुम्हें वर्क परमिट भी इशू हो जाएगा. यू विल बी एबल टू डू ऑल ऑफ दोस थिंग्स इंशाल्लाह ऐसा है। इंशाल्लाह. सो जो एक और स्टूडेंट आए, ताहा ताहा आए पाकिस्तान से, सऊदीया से आए. एंड 2000 कब आए थे भाई? 2021 में कब आए थे? कब आए जी थे सर, आप? मैं 2021 में आया था, 2021 में। 2021 में आए और तुमने नॉर्थ अम्ब्रिया यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के एडमिशन लिया, तुमने मास्टर्स मैं भी किया. 2021 में आया था। अच्छा. जी सर। और तुम्हें इसके बाद ना वर्क परमिट मिल गया, PSW. तुम्हारी क्लास में किसी की जॉब हुई? सर मेरी क्लास में एक इंडियन है, ठीक है, उसकी होगी क्लाउड फेयर में, ठीक है। हम्म. तो एक और लड़का था, दूसरा लड़का था, उसकी पहले से जॉब लगी थी रेफरल के थ्रू। लेकिन उसकी रिलेटेड फील्ड नहीं लगी, उसकी वैसे नेटवर्किंग में लगी है, लेकिन जो साइबर सिक्योरिटी में है बेसिकली जो होती है, हम्म. यानी एसओसी एनालिस्ट है या तो और कोई चीज, तो उसमें नहीं लगी बेसिकली। तो सही. बाकी एक एक लड़का है, यकीन माने वो फ्रेंड है सर, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया कि कैसे जॉब लगनी है क्या नहीं। तो उसकी जॉब लगी है उसमें एज अ CRM, फोटो बॉक्स में। सही. सही. नॉर्मली जी होता सर। ये है कि जो जिनकी जॉब्स लगती हैं वो पहले से एक्सपीरियंस लेकर आ रहे होते हैं, राइट? उनका जी पहले ही सर। एक्सपीरियंस होता है, सब कुछ होता है. और इंडियंस जो हैं, इंडियंस के बारे में मशहूर है कि इंडियंस की इतनी जबरदस्त नेटवर्किंग होती है कि वो अपना वर्क परमिट इंडियंस कंपनी में बातचीत करके निकलवा देते हैं, राइट? सो डोंट बी यस सर। सरप्राइज. इंडियंस का वहां पर बड़ा नेटवर्क बना हुआ है और उनके बंदों ने कंपनियां चला रहे होते हैं और वो उनको वर्क परमिट निकाल के दे देते हैं. वो पैसे देते हैं और उनका वर्क परमिट निकल जाता है, ठीक है ना? सो ये एक लंबा चक्कर है, इसके ऊपर मैं फिर कभी बात करूंगा. द होम ऑफिस नोज अबाउट दीज शेल कंपनीज, और होम ऑफिस को पता है, बट दैट बट हैपेंस. नाउ अनफॉर्चुनेटली तुम्हारी जॉब नहीं हुई, नाउ यू आर गोइंग बैक, राइट? यस सर। मैं सिर्फ तुम्हें ये लाकर बताने के लिए, तुम्हें आई डोंट नो कि तुम्हें किसने बताया. यू सेड कि उमर कोई USA में है, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है ना? इफ आई नो हिम और नॉट, एंड ही रिकमेंडेड यू टू मी. द फैक्ट कि तुम्हारा टाइम बहुत कम रह गया है, ठीक है ना? अब तुम्हारा टाइम जो जी है सर। वापस जाने का है, क्योंकि 1 महीना है तुम्हारे पास, राइट? 1 महीने में तुम क्या करोगे? यस सर। There are two options that you can do. Either you can take admission basically in another master's, but again you have to complete and then you have to apply for the PSW. That is a very difficult task because तुम already RQF level 7 की qualification कर चुके हो, right? हाँ। नहीं ना? हाँ जी सर, लेकिन इस तरह होता है कि आपका मास्टर्स किया तो उसके बाद आप दोबारा ही मास्टर्स कर सकते हैं, फिर फिर दोबारा PSW ले लें। लेकिन अब क्योंकि अगर दोबारा इतने पैसे खर्च करने का कोई फायदा नहीं है सर। हाँ, ये एक रियलिटी है कि इतने पैसे तुमने खर्च किए. कितने पैसे तुम्हारे खर्च हुए? तुमने उस जमाने में नॉर्थ अमेरिका की भी फीस 19,500 के करीब है. तुमने जी, ग्यारह अब बारह हजार हाँ. पहले थी 11,500, यानी हाँ. पहले 14,500 इसकी फीस थी, तो लेकिन स्कॉलरशिप के बाद 11,500 हो गई थी। अच्छा, उन्होंने तुम्हें थोड़ी स्कॉलरशिप वगैरह, तो उस टाइम पे भी 14,000 थी, ठीक है ना? तो जी अभी सर। उनकी फीस 19,500 है, बिकॉज हमने उनके साथ, हम पूरा ड्राफ्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और इसमें बड़ा वो है. बट द पॉइंट इज के दिस इज अमेजिंग कि जो है ना, लड़कों को अंदाजा नहीं है. UK में जो भी लड़का आता है
उसके बाद सबसे बड़ा इशू यही होता है कि वो सुनने को तैयार नहीं होते। वो समझते हैं कि भाई मेरी जॉब हो गई, मेरा वीज़ा हो गया है, मैं बस डिग्री खत्म करूंगा जॉब हो जाएगी, राइट? ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिछले साल यूके में 5 लाख लोगों को, ऑलमोस्ट 500,000, हाफ अ मिलियन पीपल वर अवॉर्डेड PSW according to the Home Office website, right? And out of them, only 3% were able to find jobs. 3%. यानी कि 5 लाख का half a million of 3% would be 15,000 students were able to secure jobs. This is a huge, huge number. When I was in a meeting with Northumbria, जब मेरे साथ Northumbria मीटिंग थी, तो Northumbria के उसने यही कहा, भाई तुम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? उसने कहा कि तुम क्या करते हो? उसने कहा मैंने कहा हम जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ाते हैं, हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, टू मेक श्योर कि हमारे स्टूडेंट्स की जॉब्स हो जाए। बिकॉज हम जो पढ़ाते हैं, हमारा एक ही पर्पस है, बच्चे की जॉब हो जाए, ठीक है ना? तो उसने कहा भाई क्यों इतना कर रहे हो, बस इनको पढ़ाओ, डिग्री दो, वापस करो। मैंने कहा नहीं, दैट्स नॉट अवर पर्पस, ठीक है ना? दैट इज नॉट अवर पर्पस। सो अनफॉर्चुनेटली एक बड़ा अच्छा वो है, लिंक है जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहूंगा, जस्ट टू शो ऑल ऑफ यू कि क्या हो रहा है। यूएस के, मतलब कि यहाँ पर क्या, ये दुनिया के हर जगह तुम्हें मिलेगा, यही चीज मिलेगी, ठीक है ना? यूएस के अंदर ये सारी यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है ना? इफ आई टॉक अबाउट नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, इट्स अ ह्यूज यूनिवर्सिटी एंड दे हैव हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। अगर मैं इस पे जाऊं, आई विल बी एबल टू सी नॉर्थम्ब्रिया ये रही, ठीक है ना? ऑलमोस्ट 28,000 है। ये कब का डेटा है? 2019-2020 का। तो अभी अगर मैं नॉर्थ अमरिया पे क्लिक करूं, तो जो स्टूडेंट्स का जो वो है, वो बहुत ज्यादा है। अभी अगर मैं क्लिक करूं, ऑलमोस्ट इनके पास 37,000 स्टूडेंट्स हैं। यू सी, 37,000 स्टूडेंट्स, ठीक है? सो यू आर द अनफॉर्चुनेट कैजुअलिटी ऑफ नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी which was not able to find a job. So now you have two options. सजाद, साजिद, फैसल कुरैशी, ठीक है ना, इसके अलावा और जितने दूसरे बच्चे हैं सब जिनकी जॉब्स हुई हैं माशाल्लाह। द डिफरेंस बिटवीन उस्मान, ठीक है ना, उसकी टिकटॉक में हो गई थी, ही फेल्ड द टेस्ट एंड देन ही हैड टू द सिक्योरिटी क्लियरेंस टेस्ट, but then he got a blue card in Germany. So the difference between all of these students, ठीक है ना, they all had British degrees, they all had PSW, but they couldn't find jobs. But as soon as they did our courses, they completed the internship, they did all of those things, they were able to land on the job. So please, Sajjad Ahmed, don't make the mistake. तुम होम ऑफिस में काम कर रहे हो। सजाद अहमद, मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम्हारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, अल्लाह ताला ने ऐसा ही जो गलत बोला नहीं साबित किया, जाता। अल्लाह ताला ने कहा मोहम्मद फैसल क्या हो गया तुमको, जॉब तो मेरे हाथ में है, ठीक है? ऐसा ही तो अल रज़ाक प्रोग्राम जब मैंने बनाया तो अल्लाह का नाम रखा था मैंने उस पर, एंड यू आर एबल टू सिक्योर द जॉब। मैं तुमसे कह रहा था यार तुम्हारा बड़ा थिक पंजाबी एक्सेंट है, ये है वो है सब कुछ, यू आर एबल टू सिक्योर द जॉब ऑफ ऑल द प्लेसेस यू आर वर्किंग एट द प्लेस। और जहां तुम्हें अभी बड़ी चीजें नजर आएंगी, सेंसिटिव डेटा नजर आएगा, यू विल बी एबल टू सी ऑल ऑफ दोस थिंग्स। तुम्हारी सिक्योरिटी जो क्लियरेंस मिली है ना, द हायर ऑफिस एग्जीक्यूटिव, जो स्पेशल ऑफिस एग्जीक्यूटिव जिसमें भी तुम लगे हो, सो ये चीज है। इफ यू डू योर AI प्रॉपरली, यू विल बी एबल टू गो इन डीपर। सो ताहा, तुम्हारे साथ क्या है? यू हैव टू ऑप्शंस। Even if you go with this degree जी to सर। Saudi Arabia, you will not be able to find a job. Unfortunately, that won't be the case. ठीक है? I'm telling you right now because मैंने सऊदीया में हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स हो रहे हैं मुख्तलिफ उनके साथ, कंपनीज के साथ। They're looking for experienced people. So how do you get the experience? ठीक है ना? You need to register in the AIOPS, complete the RQF qualification. You will complete the basically all the labs of the Al Razzak. Complete all the requirements, ठीक है ना? If you do all of those requirements and if you meet all the requirements, it is upon us to place you on the job in Saudi Arabia, and we can do that within the range of 20 to 30,000 riyal per month. Is that a good salary, by the way, Taha? 20 से So 30 definitely हजार रियाल के? it's worth it, sir. Definitely it's worth it. हाँ, तो 20 से 30 हजार रियाल तक तुम लैंड कर सकते हो। आई एम नॉट श्योर डॉक्टर्स की क्या सैलरी है वहां पर, डिपेंडिंग कि डॉक्टर की सर क्या डॉक्टर्स salary है। की सर इतनी होती है, लेकिन थोड़ी सी इससे आगे ऊपर ऊपर ही जाती है सर। हाँ, लेकिन डिपेंडिंग, अगर डॉक्टर के पास बाहर का पासपोर्ट है तो उसको थोड़ा और ऊपर ले जाते हैं, पाकिस्तानी जी पासपोर्ट सर, है तो बाहर का नीचे रखते पासपोर्ट हैं। तो बहुत करते हैं सर ये। यस, राइट। सो ये है जी बिकॉज
my wife was offered a very lucrative job in Medina, ठीक है ना? So मैं उसके लिए पेपर वर्क फाइल कर रहा हूँ. I'm preparing my paperwork inshallah to file for Saudi PR card, the residency card, right? ठीक है? Because we will start our own things inshallah over there. But the point मैं तुमको बता रहा हूँ कि this is the reality, ठीक है? So अगर तुमने वो सारी requirements पूरी की AIOPS की, if you complete all the requirements, you will land on the job. Unfortunately, अगर तुम मुझे ये पहले मिलते और तुम्हारे पास टाइम होता तो तुम आराम से खत्म कर सकते थे. So let this be a lesson for everyone who is there out there, who are struggling, but they are still have their PSW. You still have an opportunity to secure the job. So अगर तुमने पढ़ लिया कर लिया, you will be able to secure the job faster in UK. Now ताहा तुम्हें सऊदीया में काम करना पड़ेगा, and from there you have to apply for Germany and other countries for jobs. Now हमने असिस्ट किया स्टूडेंट्स को पाकिस्तान से मुख्तलिफ कंट्रीज से बाहर जाने के लिए, and we will do the same for you as well, but you have to meet all the requirements. What passport do you have? सर मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं जर्मनी स्टूडेंट वीजा पे चले जाऊँ, मेरे पास ये 2 ऑप्शंस है, मैं जर्मनी स्टूडेंट वीजे पे जाता हूँ या तो मैं सऊदी अरब चले जाता हूँ अपने फादर के पास, फिर वहां से अगर फिर तुम अपनी जॉब अप्लाई अगर करता तुम हूँ. जर्मनी भी चले जाओ, अगर तुम जर्मनी भी चले जाओ, द ओनली जी प्रॉब्लम इज सर. गोइंग टू बी कि तुम्हारा स्किल, तुम्हें पढ़ाई तो करनी है, फिर भी तुम्हें इसके ऊपर फिर भी नहीं मिलेगा. मेरे जी पास सर. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास यहाँ जर्मनी में जाके डिग्रीज कंप्लीट करके बैठे हुए हैं, कुछ नहीं होता, ठीक है ना? सो जब तक तुम वो नहीं पढ़ोगे जो बताया जा रहा है, तुम वहां जाकर भी चक्कर मार लो, सब कुछ कर लो, ठीक है ना, एंड यू विल बी कमिंग बैक. जी सर, एक्सपीरियंस की बात है ना. हाँ. सो तुमने तो ऑलरेडी ये एक्सपीरियंस, ये तुम्हारा एक्सपीरियंस था, तुमने ऑलरेडी एक्सपीरियंस बना लिया ना, तुम्हें पता चल गया ना, ठीक है? यस सर. तो तुम जाके सबको दावत दो, बोलो भाई दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. आई एम वेरी कैंडिड विद पीपल बट दे डोंट लिसन. मैंने आज अपनी बहन के बेटे को डांटा. मैंने कहा नूह अलैहिस्सलाम के घर में, ठीक है ना, अल्लाह ताला ने उनको पैगंबर बनाया, नूह अलैहिस्सलाम आए, दावत दे रहे हैं, अपना बेटा ईमान नहीं लेकर आया. मैंने कहा लानत है तुम्हारे ऊपर. मैं उसको बहुत डांट रहा था. मैंने कहा कि मैं तुम्हें इतना समझाता हूँ प्यार से. मैंने कहा तो अब तो मैं जब पाकिस्तान आ रहा हूँ, हम पठान लोग हैं, मैंने कहा पाकिस्तान आ रहा हूँ ना, तो तुम कब्रिस्तान में अपनी जगह जाके देख लो, अगर तुमने ये सारी चीजें पास नहीं की, और तुम उसको मार्क कर लो कि ये मेरी कब्र है. मैंने कहा अगर तुमने उस वक्त तक ये एग्जाम पास नहीं किया, पार्ट 1 ऑफ एजुकॉल एग्जाम, मैंने कहा देन यू विल फाइंड योर सेल्फ ओवर देयर. मैंने कहा मैं आई विल इंश्योर कि तुम उधर जाओ, ठीक है? तो जो ना वो बिल्कुल डर गया. अब अल्लाह ताला उसको हिदायत दे. मैंने कहा लेकिन अगर तुमने पास कर लिया तो मैं तुमसे बिल्कुल अलग तरीके से बात करूंगा, क्योंकि साल हो गया मैं तुम्हें समझाता आ रहा हूँ. इतना मैंने जिंदगी में किसी को नहीं समझाया जितना तुमको समझाया है. तो मैंने कहा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद ने उसकी बात नहीं मानी, वो दोज़ख में फेंक दिया जाएगा. नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने बात नहीं मानी, ठीक है ना, उसको दोज़ख में अल्लाह ने फेंक दिया. अबू तालिब ने बात नहीं मानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मैंने कहा अल्लाह ताला ने उसको फेंक दिया. मैंने कहा भाई तुम नहीं बचोगे. मैंने कहा मैं तुमको बता रहा हूँ, दुनिया में तो तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा और आखिरत में अल्लाह तुम्हें नहीं छोड़ेगा, ठीक है? सो उसके साथ मेरा अलग मामला होता है, सो मैं बहुत सख्ती से पेश आता हूँ. यू हैवंट सीन माई स्ट्रिक्ट वो, ठीक है ना? फिर जब मैं सख्त हो जाऊं तो फिर अबू उमर बिन खत्ताब वाली सख्ती करता हूँ फिर मैं, ठीक है? तो एनीवे द पॉइंट इज के यू स्टिल हैव अ गुड फाइटिंग चांस. इफ यू कैन गो टू जर्मनी, जर्मनी चले जाओ, बट यू हैव टू कंप्लीट द कोर्स. तुम्हें अपना कोर्स कंप्लीट करना है. यू हैव टू कंप्लीट द AI ऑप्स, जिसमें DevOps, SysOps, AI, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी सब चीजें पढ़ाई जा रही हैं. इफ यू डू ऑल ऑफ दोस थिंग्स, देन यू विल हैव अ फाइटिंग चांस ऑफ सिक्योरिंग बेटर एम्प्लॉयमेंट इन जर्मनी, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव अ UK डिग्री. ओके. सो वो जो उस्मान है जो वहां पर काम कर रहा है, मैं तुम्हारी इससे बात करवाऊंगा. यू हैव माई नंबर, ठीक है ना, एंड दैट ही विल हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिंग इंशाल्लाह विद इन हिज ओन कंपनी और whatever the cases, but you have to go through all the things. बिकॉज जब उसका इंटरव्यू हो सिक्योरिटी एनालिस्ट का, तो उसने कहा कि ना, उन्होंने उससे डेवऑप्स के बारे में पूछा, सिसऑप्स के बारे में पूछा, AI के बारे में पूछा, ऑफेंसिव सिक्योरिटी पूछी, साइबर सिक्योरिटी पूछी, GRC पूछी. जॉब थी सिक्योरिटी की, और उसको 5 एरियाज के बारे में से सवाल किए. इतने मल्टीपल राउंड्स, उसके एक ही राउंड हुआ था, एक HR राउंड था, एक टेक्निकल राउंड था. 2 राउंड्स के बाद उसकी जॉब हो गई. ही सिक्योर्ड अ ब्लू कार्ड. सो ताहा तुम्हारे पास बहुत अच्छा फाइटिंग चांस है. फॉलो दैट, ठीक है ना, इंशाल्लाह. ओके. थैंक जज़ाकल्लाह खैर जी सर. सज्जाद अहमद. ताहा तुम लोग का रोजा खुलने वाला है, थोड़ी देर में दुआ करना. अल्लाह ताला से जो हम मांग रहे हैं, अल्लाह ताला हमारी हाजात को कबूल फरमाए, ठीक है, इंशाल्लाह. इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर. जी तौकीर भाई, आप बताइए. हुज़ैफा, ये के आप इनको हटा सकते हैं, ठीक है ना?
हाँ, एंड बहुत मालूमाती बातें हुई है भी, और मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना, जी कि जी। राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने से या क्लियर माइंड से डिसीजन लेने से बड़ा फर्क पड़ता है आपकी लाइफ में, करियर के अंदर। असल में मैं एक बात बताऊं आपको, ठीक है, दिस इज वेरी कॉमन थिंग, लोग नहीं सुनते, ठीक है ना, नहीं सुनते। अब अंदाजा आई करें, एम वन मेरी ऑफ बहन दोस्त। का बेटा है, उसको धक्के दे दे के पढ़ाना पड़ रहा है। अब तो उसके लिए मैंने फाइनल वो ड्रॉ कर दी है, तो मुझे सिर्फ पाकिस्तान फोन करना है और जाके उसकी टांगे तोड़ के आ जाएंगे लोग, ठीक है ना, लिटरली। तो मतलब कि खैर हमारा मेरा मामला डिफरेंट है बिल्कुल, ठीक है ना, मैं बहुत सख्त आदमी हूँ बहुत सारी चीज़ों के मामले में, खुसूसन पढ़ाई और दीन के मामले में, राइट। ये दो चीज़ें हैं। मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ कि बच्चों, तुम ना पढ़ाई कर लो, नमाज पढ़ लो, कुरान हिफ्ज कर लो, कुरान हिफ्ज के साथ अमल भी कर लो, ठीक है ना, ये सब कुछ कर लो, तो फिर जो तुम मुंह से बोलोगे मैं तुम्हारे काम करूंगा, ठीक है ना। लेकिन अगर तुमने काम नहीं किए तो बच्चे तुम लोग मुझसे बचोगे नहीं, ठीक है ना। मेरी बेटी बोलती है आप तो मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते, ठीक है ना, क्योंकि मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको। कनाडा का लॉ है। ठीक है ना, ये किताब है बड़ी जबरदस्त, ये हिशाम अल आउदी की है, चिल्ड्रन अराउंड द प्रॉफिट। ये मैंने अपने बच्चों को पढ़ा के बताई, उसने कहा उसको सारी हदीसें याद थी। उसने मुझे कहा आप तो मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते। मैंने कहा तुम इतनी अच्छी बच्ची हो माशाल्लाह, तुम सारे काम वैसे ही कर लेती हो, ठीक है ना, और तुम्हारा भाई भी कर लेता है, लेकिन दिस इज जस्ट लेट दिस बी अ वार्निंग फॉर बोथ, ठीक है। सो मेरी बेटी कहती है बाबा यू आर टू सॉफ्ट फॉर मी ना, आई नो हाउ टू हैंडल यू। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो बच्चे हैं वो अपनी एज से, हर जगह से, हर लिहाज से, हर चीज़ में 2-2 साल आगे हैं, बिकॉज मैं उनके साथ मेहनत करता हूँ, उनको बिठा के पढ़ा कर सब कुछ करता हूँ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन लोग जो है ना, इसलिए मैं बाहर इतना नहीं बैठता, इतनी बातचीत नहीं करता, सोशल मीडिया इधर उधर, बिकॉज वो सब बेकार की बातें हैं। लोगों के घरों में कुछ और हो रहा होता है, बाहर कुछ और कर रहे होते हैं, सब इट्स एवरीथिंग इज अपसाइड डाउन। फॉर मी, एज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, आई एम द शेपर्ड ऑफ माई फैमिली, ठीक है ना। सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई ओन किड्स फर्स्ट, बिकॉज अल्लाह, आई एम अकाउंटेबल फॉर माई ओन किड्स, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला मुझसे क़यामत के दिन पूछेगा कि भाई तुमने अपने बच्चों के साथ क्या किया। तो अगर मैंने गलत काम किया और उनको निग्लेक्ट कर दिया, छोड़ दिया, तो इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है। सो बट द प्रॉब्लम इज कि सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स बहुत बैठे हुए हैं जो कि सोशल मीडिया के चैनल से कमाते हैं, और उनका काम क्या है, आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियोस दिखाना, और आपकी जो है ना कमेंट्स को लेना, थम्स लेना, सब कुछ करना, विच इज ऑल हराम बाय द वे, इस्लामिकली दिस इज the whole income stream is haram, but they're doing it, even the scholars are doing it, right? So what can I say, but the problem, but this deceiving is creating a lot of youth, कि जो यूथ तबाह बर्बाद है, ठीक है ना। तो यूथ बिल्कुल खराब है, बिल्कुल खत्म है, उनमें कोई दम नहीं है, और वो इतने, यानी कि इतना उनको गलत तरीके से गाइड कर दिया गया है ना, कि वो जो है ना तैयार नहीं है सुनने के लिए ना, उनको कोई बात भी करो तो दे आर नॉट विलिंग टू लिसन। This is the reason Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam said, when you see the Dajjal, don't engage yourself in conversation, just run away from it. And prior to seeing him, we have to build our ईमान। अगर ईमान आपका बिल्ड नहीं है ना, तो आप दज्जाल को देखेंगे, दज्जाल को आप जाएंगे इसके बाद बात करने, when you आप जाएंगे मुसलमान, बाहर आएंगे आप काफिर हो चुके होंगे, यू विल फॉरगेट एवरीथिंग, बिकॉज वो दज्जल यानी इतना झूठ बोलता है वो। सोशल मीडिया पे यही चीज है, वो इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, इतनी ऐसी मीठी मीठी बातें करते हैं, सच्ची बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। यही सब बातें करने के लिए सब मौजूद है, ये किताब ले लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। ऐसा कुछ भी नहीं है, रियलिटी इज वे डिफरेंट, वे डिफरेंट, एंड नो वन इज टॉकिंग अबाउट द रियलिटी। जी तौकीर भाई, नेक्स्ट सवाल पूछिए। हमारे हमारे एक साहब हैं, उनको कुछ आपसे पूछना था। एक्चुअली कुछ उनको एक्सप्लेन तो किया, लेकिन वो सर फैसल के मुंह से सुनना ज्यादा ऑथेंटिक है, तो उसको ज्यादा शायद उनको ज्यादा असर करती है बात। इनका केस ये है कि इन्होंने पढ़ना है हमसे, पढ़ना चाहते हैं हमसे, लेकिन ये ग्रेजुएट नहीं है। तो ये चाहते हैं कि लेवल 6 का AIOPS लेवल 6 का हमारा कोर्स करते हैं ये, और उसके बाद इनको ये ग्रेजुएट हो जाएंगे, जाहिर है। इन्होंने कहा इस पे बिलीव है कि नहीं है, या जो भी उनका माइंड था, वेब सर्फिंग किया उन्होंने। उन्हें यूके की साइट पे ये बात मिल गई है कि जो हमारा एजुकॉल लेवल 6 जो है वो BSc ऑनर्स के बराबर है। फिर उन्होंने अगला क्वेश्चन पूछा कि कौन सी यूनिवर्सिटीज है, उनकी लिस्ट बताइए। तो मैंने भी देखा, उससे पहले उन्होंने खुद ढूंढ लिया, एक लंबी लिस्ट उनके पास, जिसमें वो मेट्रोपॉलिटन भी शामिल है, जो पहले गिल्ड हॉल थी, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो बहुत फेमस है, उन सब की लिस्ट मिल गई उनको। उसमें एक और नई चीज आ गई कि अगर आप चाहें तो आप आखिरी साल जो है वो यूके में पढ़ सकते हैं। पॉपअप के नाम से उन्होंने कोई टर्म इंट्रोड्यूस कराया इसके अंदर।
जी ठीक है, जी। कि अगर आप चाहें तो आखिरी साल वहां पढ़ सकते हैं। वैसे तो उनसे मैंने कहा आखिरी साल वहां पढ़ने का फायदा कुछ नहीं, पैसे ज़ाया होंगे। आप पूरा यहाँ पे जो कॉलेज से हमारे यहाँ से पूरा कोर्स करें और डायरेक्ट जॉब के ऊपर जाइए, क्यों एक साल का पैसे वहां ज़ाया करना चाह रहे हैं? ठीक है, तो वो ये जानना चाह रहे हैं कि वाकई जो हमारा लेवल 6 है वो वाकई दुनिया भर में रिकग्नाइज है एज अ ग्रेजुएट, क्या वो ग्रेजुएट कहलाएंगे, इसके अलावा कोई और उनके पास डिग्री नहीं है। ठीक ओके है, तो इसको तो इंश्योर करना चाह रहे हैं सर फैसल की जुबान से। ठीक है, चले रमजान का महीना है, आई होप के इस रमजान के महीने में लोग बात सुन के वो कर लेंगे। ठीक है, सो मैं एक डॉक्यूमेंट खोलता हूँ। ये डॉक्यूमेंट बड़ा कॉमन डॉक्यूमेंट है और ये आपको हर जगह मिलेगा। ये है क्वालिफिकेशन कैन क्रॉस बाउंड्रीज गाइड टू कंपेयरिंग क्वालिफिकेशन। ठीक है, इन इन द यूके एंड आयरलैंड, ये उन्होंने पूरा कंपैरिजन दिया हुआ यूके एंड आयरलैंड का। ठीक है, सो विद इन यूरोप ये इन्होंने बताया है। यहाँ पर आप सब लोग को नजर आ रहा है ना, ये नजर आ रहा है ना? हाँ नजर आ रहा है। सो विद इन यूरोप दो किस्म के आपको वो मिलेंगे, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे। टू ओवरआर्चिंग क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क एग्जिस्ट टू विच द नेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क ऑफ द यूके एंड आयरलैंड रिलेट टू। एक है यूरोपियन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, फिर इनके बाद है यूरोपियन हायर एजुकेशन एरिया ऑल्सो नोन एज बलोगना फ्रेमवर्क। ठीक है ना, बलोगना फ्रेमवर्क जो है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ये दुनिया के जो तमाम जो कंट्रीज है ना, इसके मेंबर बनते हैं। ये लिखा हुआ है, द बोलोग्ना प्रोसेस अ सीरीज ऑफ मिनिस्टीरियल मीटिंग्स एंड एग्रीमेंट्स बिटवीन यूरोपियन कंट्रीज टू इंश्योर कंपेरेबिलिटी इन द स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी ऑफ हायर क्वालिफिकेशन। ठीक है ना, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट वो है। इसके अंदर आपको तमाम यूरोपियन कंट्रीज की वो मिलेंगी। 29 यूरोपियन कंट्रीज हैं सिंस 1999, अब तो बढ़ गई हैं यूरोपियन कंट्रीज, और ये सारी कंट्रीज मिलकर इसमें काम करती हैं। इसके मेंबर्स कौन है, इन सब मेंबर्स के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर। क्रोएशिया है, फलाना फलाना, बेलारूस, ये सब इसमें आते चले गए। अब ऑल मेंबर स्टेट्स ऑफ द ईयू आर पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस विद द यूरोपियन कमीशन ऑल्सो अ सिग्नेटरी, यानी कि सिग्नेटरी है। मोनाको एंड सैन मरीनो आर द ओनली मेंबर्स ऑफ द काउंसिल विच डिड नॉट अडॉप्ट द प्रोसेस, क्योंकि वो इतनी छोटे, ये गैमलिंग हम्स है मोनाको और सैन मरीनो, कुछ है तो है नहीं इनके पास तालीम वालीम का सब कुछ। ठीक है ना, तो एनीवे एक छोटी सी माइक्रो स्टेट है, बाकी सब इसके पार्ट है। ठीक है ना, इसराइल, काजाकिस्तान एंड अनरिकग्नाइज्ड नॉर्दर्न साइप्रस एंड कोसोवो आल्सो अप्लाइड बट डिड नॉट मीट द मेंबरशिप क्राइटेरिया। इसराइल भी इसमें आया था, अच्छी बात है, इसराइल को नहीं में उन्होंने करने दिया। ठीक है ना, तो एक बड़ा अच्छा डॉक्यूमेंट है, इसको आप पढ़ सकते हैं, इसको आप समझ सकते हैं और सारी चीजें मालूम कर सकते हैं। नाउ यहाँ इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सब कंट्रीज के बारे में लिख दिया है, कौन सी कंट्रीज के फ्रेमवर्क के वो हैं, कौन इसकी पार्टिसिपेंट है, फलाना फलाना फलाना। ठीक है ना, सो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, ये जो सारी चीजें बता रहा हूँ ये EQF के अंदर आती है, यूरोपियन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ठीक है ना, चाहिए तो इसको पूरे को जो है ना, एंड द यूरोपियन हायर एजुकेशन एरिया ऑल्सो नोन एज, ये फ्रेमवर्क। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पूरे फ्रेमवर्क का लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो इन्होंने यहाँ बताया है कि यूरोपियन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क गया और द बोलोग्ना प्रोसेस फ्रेमवर्क फॉर हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन FHEQ, EHEQ, इन सब के बारे में। ये EQF और EA दोनों बराबर है, दोनों सेम है। तो इन्होंने बताया कि लेवल 6 जो है, अगर आप लेवल 6 RQF करते हैं, जो यूके में उनकी 4 स्टेट्स हैं, समझो 4 टेरिटरीज हैं। नॉर्दर्न आयरलैंड, इंग्लैंड अलग है, नॉर्दर्न आयरलैंड अलग है, वेल्स अलग है, स्कॉटलैंड अलग है। 4 है ना, 4 समझो कि प्रोविंसेस का हो या टेरिटरीज का हो, जिसको मिला के द ग्रेट ब्रिटेन बनता है ना, द यूनाइटेड किंगडम जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं। लेवल 6 इन सब का बराबर है। स्कॉटलैंड में उसको लेवल 10 और 9 10 कहते हैं, और नॉर्दर्न आयरलैंड में उसको 8 एंड 7 कहते हैं, बट दे आर इक्वल। व्हाट दिस मीन्स इज कि अगर आप यहाँ पर कहीं से भी कोई क्वालिफिकेशन करते हैं, अच्छा क्वालिफिकेशन की इक्वलेंसी क्या है, ये लिखा हुआ है। ठीक है ना, बताया कि भाई डॉक्टरल डिग्री को लेवल 8 कहते हैं। ठीक है ना, लेवल 7 कहते हैं मास्टर्स को, लेवल 6 कहते हैं बैचलर्स को, जो कि ग्रेजुएट डिप्लोमा, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, बैचलर्स, ऑर्डिनरी बैचलर्स, ये सब उसमें, ये उसी के अंदर ही आता है। ठीक है, ये सब इन्होंने यहाँ दिया हुआ है। ये मेरा डॉक्यूमेंट नहीं है, ये उन्हीं का डॉक्यूमेंट है। इसमें इन्होंने पब्लिक इंक्वायरीज के लिए सब चीजें यहाँ पर ईमेल एड्रेसेस दिए हैं, सब कुछ बताया। अच्छा, यहाँ इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताई हुई है। ठीक है ना, कि क्वालिफिकेशन क्या है। इन्होंने ए लेवल्स का भी बताया कि ए लेवल को क्या कहते हैं, दिस इज इंटरमीडिएट कहा जाता है, उसके बाद आप जा सकते हैं। HNC और HND ये हम लोग बहुत जल्दी लाने वाले हैं, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, पियर्सन का।
ये आपको नजर आएगा। द पॉइंट आई एम हाईलाइटिंग इज, आप चाहे कहीं से भी करें बैचलर्स करें, यहाँ से कहीं से भी करें, आप यूरोप में कहीं से भी करो, उसकी इक्वलेंसी जो है वो एक फ्रेमवर्क के मुताबिक होती है, वो है यूरोप में EQF। यूके यूरोप से बाहर है, यूरोप का पार्ट है, नेटो का पार्ट है, मगर बाहर बैठता है, अपनी इकोनॉमी चलाता है। उसने यूरोपियन यूनियन की करेंसी को अडॉप्ट नहीं किया, यूरो को, उसकी अपना ब्रिटिश पाउंड है, तो उसके तहत वो अलग लेके चलता है, ठीक है ना। एंड बट दे फॉलो द सेम फ्रेमवर्क। उनके 4 फ्रेमवर्क्स हैं, वो चारों के चारों फ्रेमवर्क्स मैप हुए हैं यूरोपियन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क से। तो अगर आपने यहाँ लेवल 6 का डिप्लोमा किया, तो आपके लिए बेहतर है कि आप यूके मास्टर्स करने के लिए जाएं। यूके में मास्टर्स करना आसान है, यूके में मास्टर्स करना आसान है, 1 साल का कोर्स है, वो जाके करो, वहां पर ज्यादा बेहतर, ठीक है ना। वो जो टॉप अप डिग्री की आप बात कर रहे हो, हमारी 17 इंस्टीट्यूशंस के साथ बातचीत चल रही है, ठीक है। इन 17 इंस्टीट्यूशंस के साथ क्या हो रहा है कि जो हमारा फ्रेमवर्क की बातचीत सब कुछ चल रही है, यू विल बी एबल टू गो एंड अप्लाई एट दीज इंस्टीट्यूट्स। लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 3 एंड 6 के लिए एंट्री सबसे आसान है। लेवल 3 का मतलब है आपने ए लेवल कर लिया, तो आपको बैचलर्स में मिल जाएगा एडमिशन, किसी भी बैचलर्स में चले जा सकते हैं आप हमारे लेवल 3 पढ़ने के बाद, सिवाय सिवाय मेडिसिन के, बिकॉज हमने मेडिसिन नहीं पढ़ाई, बायोलॉजी सच सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए। लेवल 6 जो है वो बैचलर्स के बराबर है, तो आप किसी भी मास्टर्स प्रोग्राम में जा सकते हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डेटा साइंस हो गया, बिग डेटा हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, किसी से भी रिलेटेड आप उसमें जाके कर सकते हैं, ठीक है। तो तकरीबन 15 से 20 के करीब फील्ड्स बनती हैं जिसमें आप जाके कर सकते हैं। अगेन मेडिसिन में आप नहीं जा सकते क्योंकि हमने मेडिसिन कवर नहीं की, राइट। सो लेवल 4 एंड 5 ये यूनिक है। लेवल 4 का मतलब होता है बैचलर्स का 1 साल आपने पढ़ लिया, लेवल 5 का मतलब होता है बैचलर्स के 2 साल पढ़ लिए। अगर आपने लेवल 4 किया तो बैचलर्स का 1 साल पढ़ लिया, तो आपको सेकंड ईयर के टॉप अप डिग्री में आप एडमिशन, ये होती है टॉप अप डिग्री, टॉप अप डिग्री में फिर आप एडमिशन जाके ले सकते हैं। इन साहब का मैसेज आया था मेरे पास व्हाट्सएप के ऊपर भी, इत्तफाकन मुझे नजर आ गया, मैंने देख लिया, तो मैंने उनको कहा कि मैं इसका जवाब दूंगा, ठीक है ना। तो ये उन्हीं के जवाब है। तो लेवल 4 का मतलब है आपने, फिर आप टॉप अप डिग्री, यानी कि हमने आपको 4 साल, एक साल का बैचलर्स पढ़ा दिया, बाकी 2 साल के लिए फिर आप जाएं। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम होती है, वो ये होती है कि हमने क्या पढ़ाया, आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, उसके कंपैरिजन करके ना वो देखते हैं कि भाई कौन सी चीज कॉमन है, ताकि हम उसको एग्जाम कर सकें। यानी आपने क्रेडिट आवर्स अपने मनवाने होते हैं, ये हमेशा से प्रॉब्लम होगी आपको। इसलिए मैं सबको रेकमेंड करता हूँ लेवल 3 एंड और लेवल 6, ये फास्टर राउट है। अगर तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, 3 साल के बैचलर की फीस है, लेवल 3 कर लो, तुम्हें 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 6ठी 7वीं कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये पढ़ो जाके कर लो, कोई प्री रिक्विजिट नहीं है। अगर तुम्हारे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, तुमने लेवल 6 कर लिया, जाके मास्टर्स कर लो, तुम्हें इक्वलेंसी मिल गई, तुम्हें होम ऑफिस रोक नहीं सकता, होम ऑफिस तुम्हें रोक नहीं सकता, ठीक है ना, वीजा देने से। हमें तो हमारे बच्चे होम ऑफिस में काम कर रहे हैं यार, ठीक है, सही है, नॉट देख के उनका कोई इसमें इख्तियार नहीं है, तुम्हें कोई वीजा नहीं दे सकता, बट दे आर देयर माशाल्लाह, ठीक है ना, ऑफ ऑल द थिंग्स, ठीक है। सो द पॉइंट इज के लेवल 5 का इसी तरह होता है, लेकिन उसके लिए मैचिंग, तो वो मैचिंग के लिए, उस आर्टिकुलेशन एग्रीमेंट्स के लिए हम यूनिवर्सिटी से बातचीत कर रहे हैं, जिन जिन के साथ हमारा स्टैब्लिश होता चला जा रहा है हम कर रहे हैं ना। इसमें हम 2 जगह से कर रहे हैं, एक कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन में और यूके में, और नॉर्थ अमेरिका, USA, कनाडा, सब जगह, और दूसरा जो है हम दूसरी कंट्रीज में भी कर रहे हैं। एक इसे कहते हैं इनवर्ट कॉम आउटवर्ड कॉम, ये हमारी अपनी टर्मिनोलॉजी है, मैं आपको अपनी कंपनी के प्रोसेसेस बता रहा हूँ, क्योंकि मैं सब चीज़ें खुद डिज़ाइन करके उनको देता हूँ, और उसके बाद मेरी टीम माशाल्लाह उसको मैनेज करती है। इनवर्ट कॉम क्या है कि हम इनके पास खुद जा रहे हैं, ठीक है ना, और सॉरी आउटवर्ड कॉम क्या है, हम खुद रीच कर रहे हैं इन तमाम यूनिवर्सिटीज को कि आप हमारे स्टूडेंट्स को अपने पास एडमिशन दें। अगर लेवल 3 कर लिया है किसी भी प्रोग्राम में देते हैं, लेवल 6 कर लिया है किसी भी मास्टर्स में दे दिए, 4 एंड 5 कर लिया है, तो आप जो है ना उसके हिसाब से करें कि आप ये हमने जैसे डिप्लोमा इन डेवऑप्स किया है, ठीक है ना, तो वो BSc इन कंप्यूटर साइंस में जा सकता है, BSc इन साइबर सिक्योरिटी में जा सकता है, BSc इन AI में जा सकता है, यानी कि क्योंकि उसने वो सारे जो पहले साल के जो टॉपिक्स हैं सारे वो पढ़े हुए, मैथमेटिक्स ही पढ़ी, सब कुछ पढ़ा हुआ है। सो दैट इज हाउ वी कैलकुलेट, ठीक है। नाउ ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपको इसके अलावा और जो इनवर्ट कॉम है, वो हम सऊदीया में शाह फैसल यूनिवर्सिटीज़ हैं, मुख्तलिफ रियाद, मुख्तलिफ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, पाकिस्तान है, इंडिया है, मुख्तलिफ जगह पे, यहाँ हम उनसे कह रहे हैं कि आप अपने स्टूडेंट्स को ये डिप्लोमा बिठा के अपनी
डिग्री के साथ इन्फ्यूज करके पढ़ाइए, ताकि उनके लिए बाहर जाने का रास्ता बने। दुनिया में कोई भी यूनिवर्सिटी, ये ताहा यहाँ बैठा हुआ है, सज्जाद यहाँ बैठा हुआ है, हेडफोर्डशायर हो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो, वो आपको ये नहीं बोलती कि आपकी गारंटी है आपकी जॉब हो जाएगी। दे विल नेवर से दैट, बिकॉज बिकॉज ताहा यहाँ बैठा हुआ है ना। ताहा को जरा मैं राइट देता हूँ, और सज्जाद को। सो ताहा, टेल मी, तुम्हारी यूनिवर्सिटी ने तुम्हें कभी सीवी बना के दिया? नहीं सर। तुम्हें कभी बोला कि यार हम तुम्हारे लिए कोई इंटर्नशिप अरेंज करते हैं ताकि तुम जाके वहां काम कर सको? कभी नहीं सर। तुम्हें वो 2 साल की डिग्री में आए थे तुम, बेस्ट मास्टर्स जो होते हैं 2 साल, मैं फर्स्ट ईयर किया था, 1 ईयर किया था। 1 ईयर वाले में, जो 2 साल वाले में आए थे उनको जी भी क्या सर। मिली? नहीं सर, किसी को नहीं प्लेसमेंट मिली। मिली थी हमें थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर इसके बाद जॉब नहीं लगी। हाँ, द पॉइंट इज, आप ऑक्सफोर्ड में चले जाओ, कैम्ब्रिज में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको कोई भी जॉब गारंटी नहीं देता, बिकॉज जो वो पढ़ा रहे हैं उनमें से जितने प्रोफेसर हैं उन्होंने कभी जिंदगी में काम नहीं किया। 99% मैं 99% बता रहा हूँ, ठीक है ना, 100% नहीं बोला, क्योंकि 1% कोई ना कोई आ जाता है। मैं आपको बता दूं, कोई भी ऐसा नहीं है, देयर इज नो वन हु हैज वर्कड इन द इंडस्ट्री and then they can say, okay, we have worked in the industry, so now we will get you in, because they are paper tigers. They are good in writing research papers, which is, by the way, is now taken over by AI. AI can write the whole research paper in few minutes, do all the referencing, analyze hundreds and thousands of research papers, and derive the best thing for you. So this is an extinct species. ये जो प्रोफेसर्स हैं, ये extinct species हैं। in the upcoming years ये खत्म हो जाएंगे। ये जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है ना, दैट यू सी के, जो इन्होंने चूजों की तरह, फार्मी चूजों की तरह वो रखे हुए हैं ना, तस्वीर दिखाता हूँ, तस्वीर ना, ठीक है ना। सो ठीक है ना, कलरफुल, ठीक है ना। सो ये बड़ी फनी सी वो है। सो पाकिस्तान के अंदर, ठीक है ना, ये फार्मी चूजे होते हैं। सो अनफॉर्चुनेटली this is the reality. So all the universities who has thousands of students like these ones, right, that you see here, thousands of students here. अगर तुम combine करो इन सबको, if you see the total of all of these universities, ठीक है ना, it's millions. Almost 3.5 million students पढ़ रहे हैं यूके में इस टाइम पे, 3.5 million students पढ़ रहे हैं। So unfortunately they are like this. They are like this. They are not like वो जो देसी है ना, वो जो देसी है ना, वो देसी ये पीछे बैठा हुआ है, ठीक है ना। These are the desi chickens, ठीक है ना। Unfortunately, it's a very rough terminology, but it's a reality that I'm telling you. अगर आप लोग बैठ के पढ़ोगे, if you work hard, you'll be able to secure much better jobs as compared to anything else. But I hope that people listen. But I do know that they will not listen, because I don't use my credentials. Then I went to Stanford, MIT, and worked in all the top places. By the way, I told you guys, even at Stanford, they said the degree doesn't ensure you a job. But we are happy that all of you already have jobs. ठीक है ना? They say the same thing in Harvard, because universities का जो reality है, it's already open. Because अब जो है ना, companies मान गई हैं, ठीक है ना, यहाँ पर बहुत सारी वो हैं, why universities are failing to prepare students for the job market, ठीक है ना। 6 reasons ये Harvard Business ने कहा है, the universities, the whole education system is failing. Only 3% of the students in UK, the employers, were able to hire students, even though they have a huge skill shortage. The reason is these universities are not preparing the gap to fulfill the skill shortages. They are just basically coloring you guys as desi chickens. Not desi chickens, but like coconut chickens. So you pretend, and you just pretend that you are brown from the outside and white from the inside. Unfortunately, that is the reality. I hope कि लोग सुने, but देखते हैं कि क्या होता है। It's very difficult. जी। सर अगला सवाल ये है कि लोगों को बहुत सारी जाहिर है, जो बंदा जिस प्रोफेशन में होता है वो चाहता है, ये है एक जनरलाइज बातें तो आप सुनते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उसके प्रोफेशन का नाम लेके बताया जाए तो उनको बेहतर समझ में आता है। कुछ क्वेश्चन आए हैं जो कि बिजनेस और मार्केटिंग प्रोफेशनल्स के हैं।
अच्छा ठीक है, बिजनेस और मार्केटिंग प्रोफेशनल्स है। ओके, इनके बाद डिग्रीज हैं, क्या है? हम कहाँ रहेंगे? ज़ाहिर है मोस्ट ऑफ देम आर एमबीएस। ओ, और एमबीएस, ओके ओके। मैं एक आई मीन लेट्स यूज, देखें, what I'm going to use is I'm going to use this as an opportunity because majority of here who are sitting here, they are either South Asians or Asians or Pacific Asians or people who are not in the West, ठीक है, or maybe sitting in the West but they don't have the jobs, right? So I'm going to ask this question जो आपने मुझसे बोला है अभी, and I'm just going to basically ask this question from the from the chat GPT कि भाई क्या होगा, इसका क्या फायदा है ना। सो मैंने ये क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किया है। आई एम ए बिजनेस एंड मार्केटिंग डिग्री होल्डर्स, ठीक है ना, होल्डर और एमबीए, ठीक है, जल्दी जल्दी किया है। तो सो व्हाई शुड आई स्टडी डिप्लोमा इन एआई ऑप्स which comes with cyber security, offensive security, DevOps, SysOps, generalized AI, and generative AI, all combined together into one comprehensive course, which is recognized by EduQual UK and at RQF level 6 of the course comes with hands-on labs, फलाना फलाना, ये वो सब कुछ, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं यूएसए में और इन जनरल इन नेटो कंट्रीज, यूएसए, ठीक है ना, कनाडा, ठीक है ना, और इन जनरल यहीं पर, क्योंकि सब लोगों की डेस्टिनेशन यही होती है कि वो यहाँ आने की कोशिश करें। सो लेट्स सी उसका जवाब क्या आता है। सो परसुइंग अ डिप्लोमा इन एआई दैट encompasses all of these things presents a unique opportunity to enhance your skills and open up new career paths. When you already hold a business and marketing degree or MBA, here's why. Broadened skill set, in demand expertise बहुत ज्यादा है। आप दुनिया की किसी चीज में चले जाओ, उसमें आपको वो मिलेगा, ठीक है ना। Versatile employment opportunities, enhanced job security, leadership roles तुमको मिल जाएंगे, global opportunity prospects तुम्हारे खुल जाएंगे, global demand है talented की, but it's not through the degree. Unfortunately जो डिग्री है वो एक रास्ता बन जाता है, इट्स अ कांडुइट कि वो आपको यहाँ अपने मुल्क से बाहर लेके जा सके। तो अगर तुम पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, बांग्लादेश में हो, नेपाल में हो, wherever you are in whatever country you are, if you want to go and work in the European Union or in the Middle East at high paying jobs, then you need to find basically the striking balance, right? You don't have to ask me the question. It will tell you, you ask the question with the AI, because this AI has access to 70 billion tokens of information, right? It's a similar system that we're using. We call our system Albari, right? Our AI is Albari. I can't demonstrate this over here. That's not, because that doesn't have any, there's a lot of things going on in our company. So that thing जो है वो तमाम डिपार्टमेंट्स का डेटा वगैरह सब एनालाइज कर रही है, सब कुछ। इट्स अ बिग थिंग, राइट? बट दिस इज अ कमर्शियली अवेलेबल फॉर ऑल द जो ना लोग, तो लोग इससे सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपसे सवाल पूछेंगे, आई एम ए बिजनेस प्रोफेशनल, व्हाई शुड आई स्टडी दिस कोर्स, ठीक है ना, दिस इज द कोर्स, बट यू नीड टू आंसर, आस्क द राइट क्वेश्चन। तो देखो मैंने सवाल कैसे लिखा। अगर तुमसे पूछो मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, तुम्हें बताएगा। मैं अकाउंटिंग में हूँ, मैं बताएगा। सो इट विल टेल यू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, but you need to understand what kind of question you're asking, because if you don't ask the right question, it won't be able to give you the right answer. This is the only limitation of AI right now, because it is not sentient, right? It can't have conversation like human beings. Okay? Will it change in the next 20, 30 years? Absolutely, yes, it will change. What will be the landscape at that time? Similar to what you have seen in the movies, it will be very, very different, right? If the world doesn't blow up and things doesn't go sideways and there is no other nuclear war happening, then who knows what will happen, right? But things will go south, I'm sure about this, because of various prophecies and whatever the case is, and you will see things going in the wrong direction. But for now, it will take time, because you have the opportunity, तुम सब लोगों के पास opportunity है कि तुम लोग बाहर निकलो और बैठ के काम करो। So अगर तुमने chemical engineer हो, mechanical engineer हो, accountancy में हो, you have all the opportunities in the world, and we will assist you. We will assist you to place you on these opportunities. हमारा जो Al Razzak program है, that ensures that you are placed in the right employment, right? And that's what we do. So अगर ये ताहा पहले आता, if he would have come to us earlier on
and he had the time, even if he had 6 months, we would have done something for him. And we would have, he had to complete the courses in 3 months' time, but then we would have been able to place him somewhere. Because हमारे पास ऐसे students हैं who only had 2 or 3 months in PSW left, and they've secured the job. Again, where are they right now? I'm not sure, but they were able to secure the employment and whatnot. So all of you have an opportunity, but you have to work hard. There are no easier, there is no free lunch. Aasan nahi. It's not going to be easy. You have to work hard and you have to work smart. And that's what you have to do. Okay. G, next. नेक्स्ट सवाल एक इंजीनियर आते हैं, प्रोफेशनल बन गए हैं, अब आप पूरी लाइफ बैठ के कमाएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं है, रिटायरमेंट तक आप आपकी आवाज कट रही है तौकीर भाई. जॉब Can you send me the written question? I can read it and. तौकीर भाई आपकी आवाज कट रही है. कैन यू जी बोलिए, दोबारा बोलिए. जी तौकीर भाई दोबारा बोलिए. Can you say it again? आ रही है? जी आ रही है. जी आजकल ठीक है, उसमें मुख्तलिफ ज़ाहिर उनके वो है डिसिप्लिन हैं, केमिकल हैं, आर्किटेक्चरल हैं, मैकेनिकल हैं, ठीक है. इन पहले कॉन्सेप्ट ये था कि जब इंजीनियर बन जाए कमाना है के बाद अपनी पोजीशन के ऊपर, सही है. और उनको क्या करना चाहिए? I was able to pick up some of the questions that you were saying. मैं आपको repeat करता हूँ. So the question is कि if someone is a mechanical engineer or basically architectural या chemical या civil, whatever the case is, they think कि एक दफा job हो जाए तो सब में बैठ के खाना है. We don't have to do anything else and just spend our time here and there and just move on, right? That's the question, right? ऐसा ही है Tawkir bhai? Exactly, right. Okay, so I'm going to answer that question. So here's the thing. Saying this is a notion, a very old man wisdom, जिसे कहा जाता है in the industry, that once you complete your degree, once you do all of those things, then I'm fit for life. I don't have to do anything, and I will be able to secure a job. Once I secure the job, I will be able to earn enough. And once I'm in the company, then I will work till I retire. Well, those days are unfortunately gone. Because of artificial intelligence, जिस तरह से AI आई है, सब कुछ आया है, things are very, very different, right? So मैं आपको बताता हूँ. So this is a very important thing. ये एक बड़ी important चीज है. एंड इसके ऊपर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बहुत दफ़ा बात की है, सब कुछ किया है, ठीक है ना. एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट रीस्किलिंग का व्हाटएवर द केस इज. सो दिस इज अ वेरी गुड आर्टिकल, ठीक है ना, which talks about, this is from World Economic Forum. This is the forum that gathers all the data. Reskilling revolution, preparing 1 billion people for tomorrow's economy, right? Now, this came January 16, 2024, updated, right? You can see all the things. इसमें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, green transitions हो रही हैं. दुनिया में जो चीज़ें हैं बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं. ह्यूमन मशीन फ्रंटियर बहुत तेज़ी से वो आ रहा है. If you see, they are very pessimistic and they used lower numbers कि 43% machines will take over, 57% humans will still be working. I disagree with that because within the industry, things are changing very, very fast. And one of the reasons is कि दुनिया में अब जो चीज़ें चेंज हो रही हैं उसमें इतनी तेज़ी के साथ चेंजेस आ रही हैं कि you will be surprised that what is happening, and the speed is very, very fast, right? What this means is कि अगर आप मार्केटिंग में हैं, बिजनेस में हैं, फाइनेंस में हैं, अकाउंटेंसी में हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में है, बिजनेस डेवलपमेंट में है,
Engineering की कोई भी disciplines हैं, ठीक है ना, medicine है, whatever the case is, you will see every sector is going through an AI revolution, because this is where they have the data. Now the AI is coming in and taking over in terms of managing the data, analyzing the data, ठीक है ना, giving you insights, deeper insights into what decisions you should take to make this company much more profitable. And what this means is that if you are not reskilling yourself, as per World Economic Forum, you will lose your job. You will certainly lose your job. This is not me, this is them. And you have already seen this in the industry. आपको नजर आ रहा है. It's already happening. देखो, when this happens ना, होता ही है, physical borders erect हो रहे हैं. There are no logical borders. There are more physical borders. The whole election in UK is about stopping illegal migrants. ठीक है ना? One of the key talking points in the election in UK. The whole election in all the elections in European Union are talking about the same stuff: illegal migration. In North America, in US, this is the number one concern for American citizens in US is illegal immigration. So they are erecting what? Physical borders. And you will see as we move forward in 2024, 2025, as we move forward by 2030, you will see, every country will have resurrected like a complete boundary to protect their national sovereignty or whatever they want to do, right? So they're going to do that. However, you can go on the other side. आप उधर जाके काम कर सकते हैं. You can go and work there if you have the right qualification. What are the right qualifications? These are the right qualifications. You need to hone a couple of things: cybersecurity, offensive security, cloud security, because these things are not going anywhere. Whatever you create, you need security, you need cybersecurity to secure the thing. Even if it's AI, you need to do that. You need DevOps, SysOps, because that's how you're managing this, everything on the cloud. You need artificial intelligence. You need big data. Okay, na? But these five things come first: DevOps, SysOps, cloud security. These are the three areas. AI. Then you can add offensive. Then you can add blockchain. Then you can add quantum. Then you can add, satellite grids. Then you can add robotics. Then you can add any of the other things. And there are 19 things, 19 to 20 things. But the common things are, these are the 5 common things. No one listens to me. I've been saying this for quite some time. Even I've been after working as a CIO, as a CTO. But people like to listen to people who have a large following on YouTube, because that's the way that they are earning money and wasting your time. And you will gladly go there and watch their videos. Go ahead and do that. Okay? And after all these years, you will still be standing at the same spot. So the problem is people don't realize that. And that's exactly what World Economic Forum has said. So if you can harness these things, which is collectively known as AIOps, if you can't harness AIOps, do cybersecurity, do offensive, do cloud, do DevOps, or do SysOps, do AI, do something. But if you can harness all 5 of them together. If you can harness all 5 to 6 of them together, you are much more of a potent force to get into any of these countries. But to say that my job secure, that notion is totally incorrect. I've seen people losing their jobs left and right. It's already happening in the industry, and it will happen at vast scale because of artificial intelligence. AI is going to penetrate every single thing. But human resource can never be negated. Human resource की हमेशा जरूरत होगी. There is always a need for there will always be an accounting department. There will always be a business development department. There will always be a marketing department, a digital marketing, whatever you want to do. There will always be business, accountancy, engineering, and all those concepts. But they need to know and they need to harness AI to be relevant and sit in the industry. If you don't have it, you are irrelevant, you will lose your jobs. So that notion is completely incorrect. You need to reskill yourself to secure yourself and move forward. And you have to keep on studying. Unfortunately, the other truth is you have to keep on studying. If you keep on studying, you will be successful. Okay? Yes. Taha wants to ask a question. जी, बीच में से तौकीर भाई हम कुछ सवालात भी ले लेंगे. जी, नेक्स्ट सवाल पूछिए, फिर मैं कुछ सवालात भी लूंगा. Okay.
अच्छा, जी नेक्स्ट सवाल जो है ये किस स्टूडेंट है? हाँ वेट करना, यस जी। अच्छा, मैं जी पूछूं? सर। तौकीर भाई बोलिए, आप सवाल पहले पूछिए। अच्छा, कनाडा के कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको फील हो रहा है कि टाइम उनके हाथ से निकला जा रहा है, ठीक है, रनिंग आउट ऑफ टाइम है, और उनको फास्टर पेस के ऊपर उनको कनाडा में पीआर चाहिए, या उनको ग्रीन चाहिए, यूएसए में H1B वीजा ट्रैक करना चाहिए उनको, और जॉब नहीं करना चाहते, हाई पेइंग जॉब चाहते हैं जो फ्यूचर सिक्योर हो। I just give me 1 minute. Let me see if I can connect to one of the student. If I can connect to one of them. I'm trying to call one of my student in Canada. He's in Newfoundland and Labrador. Assalamu alaikum. जी कामरान, अल्लाह का शुक्र। Are you available for few minutes? Can you come online? अभी कहाँ पर काम कर रहे हो? उधर ही स्केडा में लगे हुए? Okay, please can you come online? I'm going to send you the link. ठीक है? Jazakallah. Okay. So while talking, I just invited one of my students from Canada. Basically, he came to Canada on a student visa. ठीक है ना? And he was about to go back to Pakistan. ठीक है ना? ये पाकिस्तान जाने वाला था. He said कि यार मेरी कोई जॉब नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, and I'm going to Pakistan. Yeah, I still have his WhatsApp messages, right? So let me see, Kamran Latif. Okay. So he was about to go. So let's hear from him if he can. He came to us. जब ये मेरे पास आया, he came from Pakistan. He couldn't find a job. He completed his degree. He was in Newfoundland and Labrador. And he contacted me and he said, like, basically, I can't find a job. So I told him, study, DCCS. So he started studying DCCS. And he was so disheartened that he said, my family is in Pakistan and I'm here. I'm just going back. There's no point, right? So we developed his resume. He completed his courses. At that time, there was no EduQual exam. He completed his courses and everything. And now, mashallah, he is working. And he is working in Canada. And he secured his PR. And I believe his family is with him as well. So that's another thing. Trying to see if I can open his documents or whatever the case is. So mashallah, now he's earning, I believe, $80,000 to $90,000. I'm going to ask him 75. I can't remember, right? So I'm going to ask him once he comes online. So please keep an eye if you see Kamran here. As soon as he's online, please let me know. I'm going to ask him. So what can we do for Canadian students? The question is, there are lots of students from Canada, from Pakistan, from Nigeria. We have lots of students from India, we have lots of students coming from African regions, right? So there's a ton of students coming in. These students, they have basically, they come with big dreams, right? They come with big dreams, and let me see if I can see, what is your name? So they come with big dreams, thinking like, we will complete our degree and we will be able to secure a job, right? The problem is that there are many colleges here, many colleges here, right? Okay, I'm going to allow him to speak. Make a co-host. Assalamu alaikum warahmatullah. वालेकुम अस्सलाम ब्रदर, हाउ आर यू? अल्लाह का शुक्र भाई। कहाँ हो कमरान, तुम किधर जॉब कर रहे हो? उधर ही लगे हुए डेक्सेंट? जी डैक्सन में ही अभी जॉब कर रहा हूँ। कैसी चल रही है तुम्हारी जॉब? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का, बेहतरीन, जबरदस्त। तो फैमिली आ गई तुम्हारी इधर तुम्हारे साथ है? व्हाट इज जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी इधर ही है। अच्छा, तो पीआर हो गया तुम्हारा? नहीं, उसका वेट कर रहा हूँ, अभी अप्लाई किया हुआ है, बस उसका भी वेट चल रहा इतना लंबा टाइम है, अभी अप्लाई कर दिया तुमने, पॉइंट्स तुम्हारे हो गए थे सब कुछ? भाई तो है। जॉब थी ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो सब कुछ हो गया था, बस ऑलमोस्ट ऑल द स्टेजेस आर क्लियर, सिर्फ सिक्योरिटी में रह गया।
तो सिक्योरिटी वो क्लियर होती है तो वो इंशाल्लाह। security clearance will be done inshallah. You're already working here in a जी very बिल्कुल। sensitive field, by the way, right? So एग्जैक्टली एग्जैक्टली yeah, so you should be fine. मैं इन सबको इंशाल्लाह। बता रहा था कि when did you came to Canada? What was the time? 2019। 2019. जी And when did you came to us after completing your क्या करने आए थे? पोस्ट ग्रेजुएट तुम कुछ करने के लिए आए थे ना यहाँ पर? जी मैंने यहाँ पे डिप्लोमा किया था 2 इयर्स कंप्यूटर सिस्टम्स एंड नेटवर्किंग में। तो Okay. उसकी कंप्लीशन के बाद मैंने अल्नाफी जो था वो तकरीबन 2021 में ज्वाइन किया था, और तुम्हारी अगस्त 2022 में में। जॉब हो गई थी, जी बिल्कुल, 2022 राइट? में मेरी आई रिमेम्बर कि मार्च। तुम थे और तुम कह रहे थे मैं बस पाकिस्तान वापस जा रहा हूँ, आई एम जस्ट गोइंग बैक, नहीं, राइट? मैं रिसेंटली पाकिस्तान से ही आया था। मेरी जो जो फर्स्ट जॉब थी वो नेटवर्क्स में थी और वो ऑनलाइन थी उनके। तो आई डिसाइडेड टू गो बैक टू पाकिस्तान और यही प्लान था कि वहीं से जाके जॉब करूंगा। अच्छा, वहां तो बैठ के जॉब करोगे यहाँ कनाडा की? एग्जैक्टली अच्छा यही अच्छा अच्छा, प्लान था मेरा। सही लेकिन वो सही, ये था कि ये साइबर भी में फिर उसके बाद आपसे मिलने के बाद जब इंटरेस्ट बना है, तो वो माशाल्लाह बड़ा एक अच्छा डिसीजन था। ऑन अ राइट टाइम वो डिसीजन किया था। तो हम्म। उसके बाद फिर जो है ना तकरीबन 6-7 महीने मैंने नेटवर्किंग की जॉब की है और उसी दौरान मैंने ये जो आपके कोर्सेज वगैरह थे वो पढ़े और सीवी उसके बाद बनवाया फिर और चले एक्चुअली गए। एग्जैक्टली माशाल्लाह। एग्जैक्ट सो टेल मी जब तुमने यहाँ पे किया तो तुम्हारी क्लास में जो लड़के थे वहां पर जो इंडिया पाकिस्तान सब जगह से पढ़ने के लिए आए हुए थे, जी बिल्कुल, वो सारे किसी की पढ़ने आए जॉब थे। जॉब्स हुई या सब ऐसे ही घूम रहे हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग उसमें से अगर मैं देखूं जो कि जिनको मैं समझता हूं कि बड़ी अच्छी को जॉब्स कर रहे हैं, तो वो कोई मैक्सिमम नंबर इज जस्ट 25%। बाकी अभी तक जो है ना क्योंकि इमिग्रेंट्स जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं उनका जो फर्स्ट जो गोल होता है वो मोस्टली फोकस करते हैं ऑन इमिग्रेशन ऑनली। और उनमें से मैंने देखा है काफी सारे बंदे स्टूडेंट्स जो हैं वो जो रेस्टोरेंट जॉब्स हैं उनमें फंस गए। कुछ बेचारे दूसरी इस तरह की जॉब्स में लगे रहे कि हम पहले जो पीआर है ना उसको क्लियर कर लें। तो उसमें से सिर्फ समझ लें सिर्फ 20% थे, वो भी जो इमिग्रेंट्स नहीं थे और वो इस तरह की जॉब्स में आए हैं जो कि प्रोफेशनल जॉब्स हैं। तो उसमें 99% जो स्टूडेंट्स हैं मैंने देखे हैं वो सारे अभी तक नेटवर्क्स में ही हैं। नेटवर्क से बाहर कोई भी नहीं निकला। कोई सीआरए में है फॉर एग्जांपल या उस तक किसी और डिपार्टमेंट में है। लेकिन वो सारी की सारी नेटवर्क्स की जॉब कर रही हैं। मूव वहां से किसी ने भी नहीं किया उसके अलावा, मेरे अलावा। हाँ, मतलब एक दफा लग जाए तो बस वो उसी के अंदर। तो तुम एग्जैक्टली न्यूफाउंड एग्जैक्टली। लैब्राडोर में हो ना? हाँ जी, मैं अभी भी उधर ही हूँ और मेरी जॉब जो है रिमोटली है और मैं यहीं से काम कर रहा हूँ। लेकिन इंशाल्लाह फिर इरादा है मेरा मई एंड में मूव करने का अल्बर्टा में। अच्छा, तो मतलब कि अभी तो खैर ठीक ठाक ठंड है वहां पर। ओहो सर, 3 दिन पहले यहाँ पे ऑलमोस्ट 70 सेंटीमीटर स्नो पड़ी है। 3-4 दिन। सुभान अल्लाह यार। हाँ, मुझे मुझे तो जी बहुत अच्छी लगती है बर्फ। मैं अभी जा रहा हूँ डेयर हंटिंग के लिए इंशाल्लाह। माशाल्लाह। आऊंगा अक्टूबर अक्टूबर के एंड में आफ्टर थैंक्सगिविंग ना, ओके जबरदस्त। कैरबू का शिकार करने के लिए अपने बेटे के साथ। माशाल्लाह, आप अभी कह एक रहे थे बेटे बड़ी को देर से प्रैक्टिस करवा प्लान रहा था हूँ, आपका न्यूजीलैंड आने का, गन आप आए लाइसेंस नहीं। बनवा दिए। हाँ, न्यूजीलैंड का आपका बहुत देर पहले का प्लान था, आप आए नहीं यहाँ पे। मेरा है, मुझे लेकर आना है उसको। मैं हो सकता है कि मैं बकरा ईद तो मैं पाकिस्तान में गुजारूंगा, उसके बाद आई इंटेंड टू कम एंड इंशाल्लाह गो। ठीक है। सो ओके ओके। तुम्हारी जो स्टोरी है ना, तुम्हारी अहमद अली खान जो पीडब्ल्यूसी में काम करता है, इसके अलावा जितने बच्चे यहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको मैं यही बताता हूँ कि भाई दे केम हियर and they were looking for a job. They couldn't find the job. I told them, do all of these things and you'll be able to secure a job. And they secured the jobs, right? So, डेफिनेट यस। but अगर तुमने 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 जिस तरह दूसरे गलती करते हैं, तुमने भी वो गलती की है कि तुम आगे नहीं पढ़ रहे, ये तुमने कहा बस ठीक है मैंने पढ़ लिया, बस अब मैं, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सो तौकीर भाई, जो आप कह रहे थे ना कि वो जो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन हो जाती है ना इंसान को कि बस अब जॉब लग गई, अब तो हो गया, सब सब छोड़ दो। सो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट दे हैव। सो उसमें इंसान पढ़ाई छोड़ देता है। बट एनीवे, आई एम रियली हैप्पी एंड प्लीज कि तुम्हारा पीआर भी होने वाला है। ठीक है, इंशाल्लाह बस हो ही गया है खत्म। तो होपफुली इंशाल्लाह विद इन 2-3 मंथ्स तुम्हें जवाब आ जाएगा। व्हेन आई कम इंशाल्लाह आई विल have some tea with you inshallah in Newfoundland Labrador because that's a gift. इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एंड आई वुड रियली लाइक टू एक्नॉलेज दिस के वो जो डिसीजन था ना पढ़ने का अभी, वो मेरे हिसाब से गलत था क्योंकि अभी
खैर उसमें मेरी अपनी कुछ मजबूरियां थी जिस वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया, लेकिन नाउ आई रियलाइज्ड के जो मजीद सर्टिफिकेशंस हैं एटलीस्ट वो मुझे ऐड करनी चाहिए थी, क्योंकि जब आप यहाँ पे एक्सेल करना चाह रहे हैं अपने करियर में तो वो बड़ी ज़रूरी है उसके बाद भी। You नो need डाउट। to infuse artificial intelligence, DevOps, SysOps. If you जी, don't, तो फिर तुम भी यस। कुछ अरसे के बाद जॉब से बाहर हो। This is a आई reality. एग्री, आई This is a एग्री, आई reality. एग्री, I mean, it's आई एग्री। already upon the horizon, so you will see it. But Jazakallah khair for your time. I'm really happy, and please, अभी तो रमजान, अभी रोजा खोलने में टाइम है। तुम लोग रोजा कितने जी, बजे खोलते हमारे पास 7:15 अफ्तारी होती है और 4:30 हमारी बजे। 7:24 है। हाँ ठीक है, सेम है इंशाल्लाह। ठीक जी है, तो जी बस दुआ करते रहना, दुआ में याद रखना इंशाल्लाह। ठीक है, जी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फैसल भाई। जज़ाकल्लाह अल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। सो तौकीर भाई, सबसे अच्छा ये होता है कि आप किसी को लेकर आ जाए ना, तो वो फिर आपको अच्छी तरीके से बता देता है कि क्या है। सो फॉर द स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ अल रज़ाक प्रोग्राम नाउ, बिकॉज ऑफ अल रज़ाक प्रोग्राम, we will assist our students in job placements in Canada, but only if they complete all the key requirements of Al Razzak. Al Razzak is available for level 3, 4, 5, and 6 qualifications, all the diplomas that we offer. But there are specific requirements you have to meet. And you have to complete all the requirements. You need to pass the EduQual exam, part 1 and part 2. You need to do all the Al Razzak labs. If you complete all of them, for level 3, I think it's a handful of labs, 100 to something, 120. Level 4 and 5, it goes progressively up. And for level 6, there are more labs, 250 to 300 labs. If you complete those labs, we will assist you. We will even assist you in terms of guiding how to file your immigration, how to file your job, how to even assist you in terms of looking for LMI, right? Labor impact assessment जो होता है, LMIA, labor market impact assessments, LMIA जो होता है, तो we will even assist you with that as well. But and make sure that we find the right employees for you to do that. But it will only be offered to those students जो already यहाँ पर, जिनके पास कोई working यहाँ पर वो है, कोई स्टेटस है। अगर उनका स्टेटस है, देन वी विल असिस्ट यू। अगर स्टेटस नहीं है, देन वेरेवर, जिस कंट्री में भी हो, इन वट एवर कंट्री यू आर, लाइक इन पाकिस्तान, इंडिया, वेरेवर यू आर, वी विल हेल्प यू विद दैट। इंडियंस जो बच्चे हैं सबसे ज्यादा यहाँ पर आए, 5 लाख के करीब, ठीक है ना, और सबसे ज्यादा पंजाब और इन जगहों से आते हैं। आई हैव मेट मेनी ऑफ देम। कोई उबर चला रहा होता है, कोई डिलीवरी कर, उबर ईट्स कर डिलीवरी कर रहा होता है। द ओनली प्रॉब्लम विद देम इज दे डोंट फॉलो द पाथवे एंड दे डोंट लिसन। जब उनको बोलो कि ये पढ़ लो, वो बंदा टैक्सी चला रहा है, और मैं जी खुश हूँ बड़ा, मैंने कहा यार ये पढ़ लो, पढ़ के कामयाब हो जाओगे। और नहीं जी, पढ़ाई वढ़ाई किसने देखी, बस आगे यहाँ पर आगे बस कर लिया, बस सब खत्म, बस अब ठीक है, अब इधर ही मैं यही करता रहूंगा। तो मैंने कहा कि जब तुम्हारा वीज़ा खत्म हो जाएगा, कह रहा वीज़ा खत्म हो जाए तो हम स्लिप हो जाएंगे। दिस इज देयर मेंटेलिटी। अनफॉर्चुनेटली यही मेंटेलिटी पाकिस्तानियों की भी होती है, असालम सी कर लेंगे, ये कर लेंगे। इंडिया पाकिस्तान सब जगह हालात अच्छे नहीं है, इवन इंडिया में भी दिखा नजर आता है। इंडिया में बहुत बड़ी वेल्थ डिस्पैरिटी है, जो अमीर है वो ओवर अमीर है, जो गरीब है वो बहुत गरीब है। पाकिस्तान में तो हालात ही अच्छे नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को, अगर आज इंडिया, अगर आज इफ टुडे, अगर इनकी एम्बेसी, कैनेडियन एम्बेसी बोले कि हम सबके वीजे खोल रहे हैं, आ जाएं आप सब लोग, आ जाएं, सब भर देंगे आप, दे विल बी एबल टू डू दैट। सब वहां से उठकर आ जाएंगे, बिकॉज एवरी वन वॉन्ट्स टू हैव सस्टेनेबल इनकम, sustainable housing, sustainable healthcare. These are the 3 basic rights for human beings. And the 4th, you can add sustainable food. These are the 4th: housing, income generation, again, healthcare, and food. These are the basic 4 requirements, core requirements for any human being living on the planet Earth right now. And it is all in the limit of the reality. Like, you can achieve all of those things if you study. Now, the study path requires time. There is no skipping that. कि मैं skip करके निकल जाऊंगा या निकल जाऊंगी and I will be able to do that. No, there is nothing like that. You have to work hard. You have to keep on working hard. Every day you have to wake up. Every day you have to be discipline yourself and wake up and get the work done. Even if you spend 3-4 hours, whatever, do it with consistency, and then you will see you are successful. So we will assist students in immigration in US and Canada both, in finding H-1B sponsors, in finding all like job opportunities over here and in Canada and in US, all of the things we will assist with, all of the things, applicable things that we can do possible.
If you go through the Al Razzak program and if you have basically a status already here in Canada, so if you're on student visa or if you're like on some kind of immigration, like even a visit visa or something like that, you're here and you've completed the requirements. So many requirements complete kar liye. We will help you. We will assist you in terms of securing employment here, in Canada. So and US, both of the places, because it's easier to place people in US and Canada because there's a huge demand right now. There's a huge demand over there, right? But you have to meet some of the key requirements. If you meet those requirements, I'm telling you right now, you'll be able to secure jobs much faster. You don't even have to talk to us. Just meet all the requirements and get the resume done, and you'll be sitting over there already. Ji, next सवाल. सर अगला सवाल जो है वो ये है कि अलनाफी जो है बहुत यूनिक है एक एस्पेक्ट के अंदर। एक तो नाम इसका अलनाफी है और दूसरा ये है कि जॉब ऑफर करती है अल रज़ाक प्रोग्राम के तहत। क्या अल रज़ाक प्रोग्राम जो है वो इमिग्रेशन में कोई हेल्प करता है या स्टूडेंट वीजे में या कंसल्टेशन के अंदर या सिर्फ और सिर्फ प्योरली जॉब के ऊपर सारा बेस है? अल रज़ाक प्रोग्राम के बहुत सारे फीचर्स हैं। अल रज़ाक प्रोग्राम की सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आप किसी भी कंट्री से हैं, फ्रॉम whichever country you belong to, it has certain requirements you need to understand. Al Razzak. Some of the key requirements of Al Razzak are that जो आपको मीट करनी है वो कि आप ना बेसिकली प्रोग्राम पूरा कंप्लीट करें। सो अगर आप लेवल 3 में हैं, लेवल 4 में है, 5 में, 6 में, 6 के लिए बाहर जाना आसान है, ठीक है ना। 6 को बाहर प्लेस करना आसान है बिकॉज 6 इज इक्वल टू बैचलर्स। लेवल 3, 4, 5 को आपकी अपनी कंट्री में हम प्लेस कर सकते हैं, wherever you are, फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं से भी आप हैं, ठीक है, वहां हम आपको प्लेस कर सकते हैं। मगर आपने पूरा पार्ट 1 ऑफ द कोर्स करना है, EduQual एग्जाम पार्ट 1, जो कि कोई भी एडमिशन ले, पूरी फीस पे करे, एग्जाम की फीस पे करे, पार्ट 1 एग्जाम निकाल सकता है। पार्ट 2 में उसको, ठीक है ना, क्योंकि वो सारे MCQs हैं, पार्ट 2 में उसको 85% कोर्सेज कंप्लीट करने हैं हमसे। फिर हम उसको टॉपिक देंगे, वो टॉपिक के ऊपर असेसमेंट शुरू करेगा, अपना एक प्रेजेंटेशन इंटरव्यू देगा एंड ही विल बी एबल टू पास दैट। इसमें लोग बच्चे पास भी हो रहे हैं, फेल भी हो रहे हैं। पार्ट 2 इज टफ, सो यू नीड टू पे अटेंशन, बट इफ यू वर्क हार्ड इट्स इजियर फॉर यू, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरी रिक्वायरमेंट है लिंक्डइन का कोर्स। फिर इसके बाद चौथी रिक्वायरमेंट है लिंक्डइन का कोर्स आपने कंप्लीट करना है, तमाम लाइव क्लासेस में जाके बैठना है। फिर इसके बाद चौथी रिक्वायरमेंट्स हैं, दिस अ हैंडफुल ऑफ रिक्वायरमेंट्स। आपने कम्युनिकेशन का कोर्स करना है, यू हैव टू बाय द कम्युनिकेशन कोर्स फ्रॉम अस एंड यू हैव टू गेट इट डन, ठीक है। सो दीज आर ऑल द थिंग्स, ये सारी आपको करनी है। फिर इसके बाद आपको अल रज़ाक लैब्स, जैसे आप पार्ट 1 एग्जाम निकाल लेते हैं, तो आपने पार्ट 1 निकाल लिया तो आपको अल रज़ाक प्रोग्राम के अंदर रजिस्टर कर दिया जाता है। देन यू हैव टू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स। आपको 20 लैब्स दी जाती हैं, यू हैव टू वर्क ऑन दोस 20 लैब्स। सो अगर आपने RHEL का कोर्स कंप्लीट किया या कोई भी कोर्स कंप्लीट किया, विल गिव यू लैब्स एज रिलेटेड टू दैट कोर्स, so you have to keep on doing that. Some of the labs will be given as is, some of the labs will be given as part of the Al Razzak, so there's a mix of labs you have to go through. Those labs will prepare you like for the real deal, कि तुम्हें क्या करना है। Now, depending on your location, if you meet all the requirements, एक साल के अंदर अंदर तुम्हें ये सारे काम करना है। You have to complete all the requirements. You have to write the blogs. You have to do a lot of things. ये सारी चीजें तुम्हें एक साल के अंदर करनी है। एक साल के अंदर वही आदमी कर सकता है जो रोजाना मिनिमम 3, मैक्सिमम 5 घंटे बैठ के पढ़े। 6 घंटे पढ़ता है, मर्जी उसकी, मैं रोक नहीं सकता। मिनिमम 3 आवर्स उसको मिनिमम रोजाना बैठ के पढ़ना है, चाहे वो किसी डिप्लोमा में भी हो, 3 में हो, 4 में हो, 5 में हो, 6 में हो। He has to study. He has to study. So अगर करता रहेगा, he can do it. So if he goes through all of those requirements, then अगर वो इंडिया से है, पाकिस्तान से है, बांग्लादेश से है, नेपाल से है, इनको इनकी कंट्रीज में हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनकी कंट्री में या इनको रिमोट जॉब्स दिलाएं। दिस इज ऑन अस, दिस इज पार्ट ऑफ अल रज़ाक। इफ दे वांट टू गो आउटसाइड टू UK or to Europe or anywhere in Germany or North America for student visa guidance, we can provide them guidance, assist them with the work paper and all of those things, ठीक है ना, writing recommendation letters, all of those things, we will assist all of those things. That's part of Al Razzak. But you have to meet all the requirements. Once you meet all the requirements, then you are eligible for all of these services. You have to meet the requirements first. Then, ठीक है, so उसमें हम गाइडेंस कर सकते हैं। These country के students जो डेवलपिंग कंट्रीज इनको कहा जाता है, we can also place them in Middle East because it's easier. So if you're from Africa or from Asian countries, Asia Pacific, it's easier for us to place you in Middle East because the work permit scheme is easier.
We just place you over there with our contacts. They do all the paperwork and everything for you, and they pay you, and then you start working for them. We are not getting paid by anyone, by the way. हम किसी से कोई पैसे नहीं ले. We're not charging anything. ठीक है ना? Not right now, because we want this program, ठीक है ना, to place at least 100,000 students, 1 million students before we can start say, ठीक है. Because what we're doing is we are disrupting the market. हम free में उनको talent दें. That's what we're trying to do, right? We are disrupting the market because normally बंदों को place करने के पैसे लिए जाते हैं 3 to 4 months salary. ठीक है ना? तो उनकी सैलरी का इक्विवेलेंट लिया जाता है एज ए कमीशन. वी आर नॉट टेकिंग एनी कमीशन. दैट्स अनदर थिंग दैट वी डू, राइट? So we will place you there, you work for them, you do all of those things, but you have to pass the interview. So that's why जो Al Razzak की labs हैं will ensure that you are ready for those roles, because those labs are designed as per the role. ठीक है? Now, when it comes to immigration, the best pathway of immigrating to European Union or to North America, when I say North America, not Mexico, but US and Canada, because all the Mexicans are going to US and Canada. So in the European NATO countries, I should say NATO countries. अगर तुम्हें किसी भी NATO countries में जाना है, we can assist you. And normally people go to US, Canada, UK, Germany, France, ठीक है ना, these big countries, Australia, New Zealand, all of these countries which has the biggest GDP, right? So ये उसमें जाते हैं. So because there are more opportunities there, so we will assist you. But the easiest pathway to go to these countries is student visa. So yes, we will help you with the student visa. Once you pass your degree, because degree is a requirement for those countries, it's an unfortunate requirement. You can get an admission in masters. So तुमने गए, तुमने complete किया, or once you have the work permit, we will assist you in securing employment there. Because of the Al Razzak virtue, you will get an opportunity. So for example, Taha or Sajjad or any of these students who are in Europe or wherever they are, and if they have completed all the courses, they met all the requirements, then we will place you through Al Razzak, basically, right? And that's where we connect with these companies, and we can send you there. So anyone can join, but they have to start the courses, they have to complete. There are certain levels you have to complete. So if you complete all the levels one by one, then we will place you there. That is our money back guarantee. So that is what we call money back guarantee. If you're not able to, you met all the requirements, you did everything, and you're not able to, and we are not able to find the job for you, whatever money you paid minus certain amount, you will get around 80% of it back. That's 80% of it back, right? We'll pay you back if you can't fulfill the requirements in 1 year. So 1 year it took you to complete the course. In the second year, it is our responsibility to basically send you there. And if we can't, then we return your money back. Now no one does that, right? Because no one has the confidence in what they're teaching to place you on the job. Alhamdulillah, we have the confidence, because what we're teaching you, when we enable you with all of these things and we start applying and give you the resume, when you start applying, you already find the job, right? And we start placing you and start sending you for the interviews. When we send you for the interviews, you're already prepared because you already went through the hard parts anyway. So in the course, there's emotional intelligence, there is questions, there are HR related questions, there's a lot of things that you have to go through. In this world, no university does that. No one. The reason is the teachers who are teaching, they're all academic tigers, unfortunately. They're not coming from the industry. Most of them, 99% of them. It's a very bold statement to say that, but that is a reality. If you see any of your teacher, ask them, how many years did you work in the industry? What was your last title? They will say, I worked as an accountant, or I worked as an analyst or something, and then I left my job and went into teaching. Because anyone who comes into teaching, it's the most easiest way, basically entry into the university, into the job market. If you're very good with academics, then you can be a professor in the university. These professors, they have no vision of working in the industry and establishing companies. They're happy with 9-to-5 job, keep on pushing the pencils. They're happy with that. This is not something we do. This is not something. And all the professors we have who are teaching, they're all working in the industry right now. All working in the industry. So there's a big difference. So yes, we will assist you in all the immigration opportunities and all the student visa opportunities and placing you in the job in your country or as applicable outside. It all depends.
The first requirements are you have to meet the requirements. If you meet the requirements, it is up to us to get you in. जी तौकीर भाई। रमशा खान जो है वो डेवऑप्स में इंटरेस्टेड है। शी वांट टू आस्क यू 2 क्वेश्चंस। फर्स्ट, डेवऑप्स को वो कौन सा एरिया है जो रियल लाइफ में वर्क एक्सपीरियंस में सबसे ज्यादा काम था, ज्यादा फोकस करना चाहिए? एक। सेकेंडली, वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसमें इजीली रिमोट जॉब वो ढूंढ सकती हैं घर बैठे काम करने के लिए? बहुत सारी जो डेवऑप्स के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो अब आ रही हैं, अगर मैं पहले पार्ट का जवाब दूं, सो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें सर्वरलेस आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा इस वक्त चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, security as a code, GRC as a code, this is the big buzzwords right now in the industry. ठीक है? Applications की CI/CD की pipelines, this is the old stuff but still relevant. So ये तमाम चीज़ों को आपको sum up करना पड़ता है. DevOps is not, I mean, जिन लोगों ने हमारे पास DevOps पढ़ा, they were able to find jobs and they are working in the industry now. मतलब कि पाकिस्तान से बैठ के रिमोट जॉब्स कर रहे हैं, they are working in US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लिए काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं पाकिस्तान से बैठकर, ठीक है ना, इंडिया से बैठकर मुख्तलिफ जगहों से। दे आर डूइंग दैट, बट दे आर डूइंग इट थ्रू बेसिकली रिमोटली, ऑल थ्रू डेवऑप्स, but the scope is limited. So if you, as we are moving forward, things are getting much more competitive and competitive, right? So if you infuse DevOps के साथ AI, that's much more beneficial for you. If you infuse DevOps के साथ SysOps, that's much more beneficial for you. If you infuse DevOps के साथ blockchain, किसी के साथ कोई infusion करनी पड़ेगी. If you do AI ops, that covers DevOps, SysOps, AI, all the things. But if you can't afford that, then I would say DevOps के साथ offensive मिला दो, that takes you into DevSecOps, right? So you need to find the right combination because industries merge कर रही हैं. Because of artificial intelligence, everything is merging, right? So the whole fabric of the organization is changing very, very fast. So you have to make sure that you go through all the key processes in order to be successful. जी मैं एक लतीफ़ा सुनाना, आपकी अगर आवाज सही आ रही तो आप सुना सकते हैं। मैं आपको एक जोक सुना सकता जी हूँ? जी बोलिए। ऐसा हुआ कि मुझे भी पता चला है कि हमारे यहाँ गवर्नर हाउस में एक फ्री कोर्स करा रहे हैं जिसमें स्टूडेंट्स को वो एवरी सैटरडे बुलाते हैं और वहाँ कोर्स कराते हैं। तो पता ही चला कि एक लड़का है जो फ्री कोर्स करने के लिए हैदराबाद से कराची आता है, बस का किराया दे के 5 घंटे की ट्रैवलिंग करके, और वो वहां पर फ्री कोर्स कर रहा है। ठीक है, तो हमारे लोग फ्री को इस तरह लेते हैं कि कोर्स फ्री होना चाहिए, उसके मुझे खर्चा है ना, वो नहीं। 50 किलोमीटर पे आपको फ्री लंच ऑफर करूं तो आप भागे भागे आएंगे फ्यूल खर्च करके, क्योंकि लंच फ्री है। देयर इज नो सच थिंग एज फ्री लंच, ये लोग समझते नहीं है। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहां पर करप्शन का बाजार बहुत गर्म है और जो है ना अरबों खरबों रुपए की करप्शन होती है, उसमें जो भी हुकूमत आती है पहले किसी को लैपटॉप पकड़ा देती है, लैपटॉप सबको पकड़ा दिए, ठीक है ना, सारा जो बेकार का जो सारा सामान होता है ना, सब उठा के वहां से लाके लोगों को पकड़ा दिया, ठीक है। उसके बाद अब जो वही हुकूमत दोबारा आई है जिन्होंने पहले लैपटॉप तकसीम किए थे, अब वो सबको कह रही है हम आईपैड देंगे। आईपैड पे क्या पढ़ाई होती है क्या? आईपैड तो एंटरटेनमेंट की चीज है। तो लोगों को पाकिस्तान की जो पूरी आवाम है, और ये काम इंडिया में भी है, लेकिन इंडियंस में ना थोड़ा सा मेहनत का थोड़ा ज्यादा जज्बा है, थोड़ी मेहनत ज्यादा करते हैं, मगर इंडिया के अंदर भी ये मसला है। बांग्लादेश में तो बहुत ही हालात खराब है, उनके साथ ये बहुत बड़ा मसला है कि वो जो चीज़ ऐसी मिले ना उसके ऊपर कूद पड़ते हैं। सो दे विल ट्राई टू फाइंड थिंग्स ऑनलाइन ऑन यूट्यूब। यूट्यूब से पढ़ लेंगे जॉब हो जाएगी, यूट्यूब क्या पढ़ा के जॉब करवाएगा? तुम्हें कुछ नहीं करवाएगा। वो जो है ना जाकर फ्री में ढूंढने की कोशिश करेंगे, हैक करने की कोशिश करेंगे। मेरे पास एक स्टूडेंट आया, मेरा मेरा जो मेरे साथ जो लैब्स पे काम करता है, उसामा, उसने मुझे एक मैसेज किया और उसने कहा कि जना फैसल भाई आपसे एक बात करनी है। मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ी अजीब सी चीज़ है ना। दिस इज़ द वे दैट दे अर्न मनी, राइट। तो इन्होंने कहा कि फैसल भाई, उसामा असलम ये हमारे साथ काम करता है, तो इसने कहा कि फैसल भाई ये कोई बच्चा है जो आपके कोर्सेज बेच रहा है, ठीक है ना, 5,000 रुपए में। मैंने कहा अच्छा ठीक है। 5,000 रुपए में 5,000 रुपए में
तो इसने गूगल ड्राइव पे सारा पूरा कोर्स रखा हुआ है, लिखा है लर्न विद फैजान, कॉपी विद क्रेडिट्स, ठीक है, हमारी चीज वो करके कर रहा है। another guy providing Alnafi courses for free download, ठीक है ना। लिखा हुआ है whoever ask, फिर मैंने उसको जवाब दिया, whoever ask for Allah for halal will receive halal, and whoever ask Allah for haram will be given haram. And then I quoted the hadith that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, an era will surely come to people in which a man will not care from where he acquires his wealth, either lawfully or unlawfully. This is exactly what we are going through right now. सहाबा के ज़माने में मसला नहीं था, और इससे पहले जितनी इस्लामी खिलाफतें गुजरी उसमें मसला नहीं था, सल्तनत जितनी भी गुजरी है, अब ये बहुत कॉमन है, ठीक है ना। यूजिंग द सेम वेल्थ, जिसने जवाब दिया, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा लोग तो क्रिप्टो करके ही कहते हैं हमने जो है ना पैसे कमा लिए और अब हम बाहर जा रहे हैं, ठीक है ना, हज करने जा रहे हैं, उमरा करने जा रहे हैं। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, whoever accumulates unlawful wealth and then gives it in charity, he will never be rewarded and the burden of sin will be upon him. यानी फरमाया कि कोई हराम माल कमाए और बोले मैं चैरिटी में दे देता हूँ, जैसे आजकल बहुत सारे यूट्यूब पे लोग करते हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं, यूट्यूब पे पैसे दे कमाते हैं, हर किस्म के खराब ऐड नजर आते हैं, लोग उसको देख के खुश होते हैं, ठीक है ना, सब कुछ होते हैं और उनको वाह 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 करते हैं, वो पैसे कमा रहा होता है, ही डजंट इवन नो वो हराम कमा। दिस इज द हदीस, ठीक है ना, क्लियर कट गाइडेंस उसमें सब है, बट दे वोंट टेक इट। बोलेंगे नहीं नहीं मैंने फतवा ले लिया, पता नहीं कौन फतवा दे रहा है, वो बोलेगा मैंने किसी और से फतवा लिया है, बोलेगा मैंने किसी और से फतवा लिया है, और जो दूसरे आखिरी वाला बंदा है वो शैतान से ले रहा होता है, ठीक है, सही है। तो शैतान बोलते हैं हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है कर लो, ठीक है ना। वो जैसे वो ना अबू जहल अबू लहब सब जब प्लान बना रहे थे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम कैसे कत्ल करें, तो उस पे शैतान वहां पर इंसान की बेस में आया, बोला हाँ भाई क्या क्या प्लान है तुम लोग के पास, सब अपने अपने प्लान्स बता रहे थे। तो अबू जहल ने एक प्लान बताया कि नहीं, उसने एक शैतान ने कहा नहीं ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। अबू जहल ने, किसी ने कहा जेल में डाल दो, उसने कहा नहीं इसके अल्फाज बड़े मीठे हैं, ये बाहर आ जाएगा। किसी ने कहा उसको मुल्क बदर कर दो, उसने कहा नहीं ये बहुत बड़ी कुव्वत जमा करके वापस हमला करेगा। अबू जहल ने कहा कि नहीं देखो, हर कबीले के एक सरदार को लेकर आओ और सब एक हर कबीले से एक बंदा लेकर आओ, सब एक साथ तलवार में, वी विल स्ट्राइक सेम एट द सेम टाइम। सो हाशिम, बनु हाशिम विल नॉट बी एबल टू टेक रिवेंज, वो फिर रिवेंज नहीं ले सकते क्योंकि किस किस से लड़ेंगे। शैतान ने कहा ये बड़ा जबरदस्त काम किया। सो द प्रॉब्लम इज के द प्रॉब्लम विद द उम्मा इज दैट वी डोंट केयर वेयर वी अर्न फ्रॉम, एंड वी डोंट इवन नो कि जो दिया जा रहा है इज इट हलाल और हराम, एंड व्हाई आर दे गिविंग इट टू अस। सो इवन अगर वो पढ़ने के लिए लगा के भी आ रहा है, इस किस्म के जितने प्रोग्राम्स हैं, आई हैव बीन टू दीस गवर्नमेंट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं इनके पास बहुत पहले 2018 में आया था, आई सेड के आई विल ट्रेन 50 लाख लोग पाकिस्तान में, ठीक है ना, एंड वी विल क्रिएट द होल कंट्री इनटू बेसिकली एन आईटी हब, एंड लेट मी डू ऑल ऑफ दोस थिंग्स, ठीक है ना। ऑल आई आस्क यू इज टू प्रमोट दीज प्रोग्राम्स, whoever can pay, who can't pay, you pay for them and I pay for the half, and we will train everyone, ठीक है ना, with all of these things. We don't need IT parks, we don't need laptop schemes, we don't need this and this and this whatever. And they said to me, what is in it for us, हमारे लिए क्या है इसमें? मैंने कहा what do you mean? उसने कहा कि ये जो ना this is ये फाइल है, फाइल, the फाइल के नीचे पहिए लगाने पड़ेंगे, so पहिए लगाने के लिए you need to pay us. I said अर्राशी और मुर्तशी कलाम फिन्नार, रिश्वत लेने वाला दिनार दोनों दोज़खी। व्हाट आर यू सेइंग? तो आर यू सेइंग कि अर्राशी और मुर्तशी कलाम फिल जन्नह? तो द गाय सेड देखें मौलवी साहब, व्हेन यू टॉक अबाउट टू देम अबाउट दिस, देन से मौलवी साहब लिसन, ठीक है ना, ओ शेख लिसन, forget about all of these things, this is all about moving your file. I said I don't need to move my file, Allah is sufficient for me. So this is the problem. There is nothing free. Don't expect anything from the government of Pakistan or government from India, from any of these countries. They will always deceive you. They will always, because this is not their job. Because they appoint wrong people in wrong positions. They don't appoint right people at the right positions. This is the biggest khayana that is happening in each and every country because of one system, which is the democratic system. I'm not going to go in detail, but this is the problem. जी जाकिर साहब ने एक बहुत बेसिक सवाल पूछा है, इसके सवाल के जवाब में बहुत से लोगों को हेल्प मिलेगी जिनको प्रॉपर तारुफ नहीं हुआ है अल्नाफी का या एआईओप्स का। ये खुद एफएससी हैं
और ये कह रहे हैं कितने घंटे की पढ़ाई करनी होगी इनको और टोटल कितने आवर्स होते हैं एआई ऑप्स के अंदर और पढ़ाते क्या है इसके अंदर, क्या वो ये कोर्स कर सकते हैं? उनका बेसिक इन्फॉर्मेशन मतलब नहीं है उनको चीजों के बारे में, और वो एआई के बारे में और आईटी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और तो इंटरमीडिएट है बेसिकली। हाउ ओल्ड इज तो ही? बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल न्यू लोगों के लिए बहुत काम आएगा ये। ये कितने साल के हैं? 19-20 साल के। सो आजकल के ज़माने में, ये मुझसे 2018 में 2019 में किसी ने सवाल किया था कौन ये कोर्स कर सकता है, जब हम लोग ना छोटे छोटे कोर्सेज पढ़ाते थे। उस टाइम पे मैंने कहा था कि मैं यूनिवर्सिटी बना रहा हूँ, अभी टाइम लगेगा टाइम लगेगा। अब हम उस तरफ जा रहे हैं, बन गया सब कुछ। एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है, वो ये है कि अगर आप इस दुनिया में, हर किसी को स्मार्टफोन सबके पास है, राइट? ऑलमोस्ट पाकिस्तान में, इंडिया में सबके पास स्मार्टफोन है, बांग्लादेश में सब, एवरीवन हैज अ स्मार्टफोन। They know how to open WhatsApp. They know how to respond. They pretty much everyone has a Facebook account. Pretty much everyone is on TikTok. I'm not on TikTok, by the way. I don't use it. The company has an account, but I don't use it. Everyone is on Instagram. Again, this is not something I sit on Instagram, but people do that, right? Everyone, not everyone, but I will say 5 out of 10 people are on LinkedIn, because LinkedIn के पास billion audience है, ठीक है? So अगर आप 19 years के हैं and you come in the new generation, from that age group, like from 16, like 14, 15, 16, 12 साल से 13 साल से बच्चे लेकर, like till the age of 50, you can do all of these things. When you hit 50, you can still learn, but you have to do extra effort, right? The Sahaba became basically, Hafiz at the age of 50, 55, 60 years of age. So you can do it, but you have to do extra effort. Like in my view, 55 to 60, a person have a very good memory, right? Because I've seen people in that age bracket having excellent memory, right? So अगर आपके पास वो है, आप कर सकते हैं। अगर आपके पास एक सिंपल कंप्यूटर है जिसमें 8 GB रैम है और 256 की या 250 या 300 GB की SSD ड्राइव लगी हुई है और कोई भी 3-4 साल पुराना प्रोसेसर लगा हुआ है, यू कैन डू ऑल ऑफ दोस थिंग्स। आप सब चीज़ें लर्न कर सकते हैं, कर सकते हैं। जो चीज़ आती है वो आती है टाइम की, आप कितना टाइम लगाएंगे। सो इफ यू कैन डिस्कनेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द सोशल मीडिया, यू कैन लर्न ऑल द कोर्सेज। कोर्सेज कैसे पढ़ने? कोर्सेज लाइन से लिखे हैं, वैसे ही पढ़ने, आप वैसे ही पढ़ें। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। सो अगर आपने वो कर लिया, you will be able to complete the courses on time and you'll be able to move forward. ठीक है? It all comes down to how much time you are willing to invest and how much, and how far you're willing to push yourself, because there's a time limit. ठीक है ना? There's a time limit of being successful. And जैसे हमने बहुत सारे यहाँ पर अपने ट्रेनर्स के लिए भी लेटर लिखे हैं। हमारे पास पहले डॉक्टर सना रशीद काम करती थी, and she wanted to apply like a green card visa for basically O1 visa, E something visa, for US. So we give her the letter. Yes, she has been teaching with us. She did this, she did that. We have already started doing this for our students who are in the States, and we're giving them letters so that they can apply for these things. So we are doing whatever we can in our capacity to help and assist our students. But you have to show that you are willing to work hard. Work hard is something I can't do that for you. This is the only part you have to do it yourself. Reciting kalama is very easy. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. But what happens next is the ultimate test. Many people will fail this test or are already failing this test. So in this month of Ramadan, we should make dua that, oh Allah, that we sign a covenant with you. So हमने आपके साथ एक covenant, एक contract sign किया. Please give us tawfiq that we can fulfill that covenant, that contract with you. So अल्लाह ताला हमें तौफीक दे के हम उसका पूरा हक अदा कर सकें। जी। सर ये एक सवाल पूछा है मोहम्मद जाहिद साहब ने। ये सवाल है इंटर्नशिप के बारे में। वो कह रहे हैं कि वो एआई ऑप्स का कोर्स कर रहे हैं, इंटर्नशिप के जो है एमसीक्यूज है इसके पोर्टल के ऊपर, अब उन्होंने देखा है सब चीजों को। कह रहे हैं क्या हम जब फिजिकली अप्लाई करने कहीं जाएंगे तो एम्प्लॉयर ये पूछेगा आपसे कि आपने जो इंटर्नशिप की है वो आपने वर्क एनवायरनमेंट में की है या ऑनलाइन में की है, हमें वहाँ क्या बताना चाहिए? क्या ये
बैड इंप्रेशन होगा कि अगर आपने रियल वर्क सिनेरियो में काम किया है, यानी किसी ऑफिस से बैठे काम नहीं किया है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके माइंड से, ठीक है, जितनी तो भी क्या ये सेम होगा एक जितनी जो भी डेवऑप्स की जॉब्स हैं, आप ऑफिस जाके करते हैं या यहाँ बैठते हैं? yes, जितनी भी डेवऑप्स की जॉब्स हैं, सिसऑप्स की जॉब्स हैं, एआई की जॉब्स हैं, एमएल ऑप्स की जॉब्स हैं, ब्लॉकचेन की जॉब्स हैं, मोस्ट इफ नॉट ऑल ऑफ देम आर डन रिमोटली, राइट? जो पुराने प्रोफेशंस हैं जो क्लाउड से रिलेटेड हैं, इट्स ऑल डन रिमोटली, राइट? ज़्यादातर रिमोट काम होता है, रिमोट इंडक्शन होता है। देखें वो जो सज्जाद है, who is going to start his job in home office, ठीक है ना, he was saying कि मुझे उन्होंने कहा कि आप यहाँ से जाके ऑफिस से जाके अपना लैपटॉप और वो उठा लें, and then we will give you virtual वो Bismillah. So most of these jobs, if not all of these jobs nowadays, require you to work from home. It's very easy, ठीक है ना? Now they might ask you, you were working from home, then you may have to come here at the office 2-3 days or 4 days, or like once a day, once a week or something like that, or 2-3 days a week or something like that. Yes, I mean you can say, okay, मैं कर लूंगा, because in the first job आपको किसी चीज को मना नहीं करना चाहिए, आप बोले हाँ मैं कर लूंगा, I will do it. So the thing is के that is never an issue. इशू जो होता है वो ये होता है कि आप ऑफिस में आके काम करें, इफ यू आर इन द डिफरेंट सिटी और आपने वहां से वहां आके काम करना है, दैट इज व्हेन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। अदरवाइज ऐसा होता नहीं, ठीक है ना? बट लोगों को आराम से मिल जाती है। पाकिस्तान में तो लोग बड़े आराम से, इंडिया में, पाकिस्तान में, सऊदीया में, मुख्तलिफ जगहों पे लोग बड़े अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। सो यू कैन डू ऑल ऑफ दोस थिंग्स एज वेल। इट ऑल कम्स डाउन टू बेसिकली how you can tackle those questions in the interview, and we teach you and we train you how to do and tackle these questions and how to answer these questions. जी तो सर ये एक और सवाल है कि एक साहब है, तफसील कोई यासिर नाम है इनका, जिन्होंने सिस्को में मतलब 15 साल काम किया नेटवर्किंग में, अब ये सीनियर ऑडिटर है एचबीएल हबीब बैंक लिमिटेड के अंदर। ये कहना चाह रहे हैं कि अगर उनको इंग्लैंड में कोई जॉब करनी हो तो ट्रैक क्या होना चाहिए थ्रू अलनाफी? अगर उन्होंने सिस्को में काम किया हुआ है और अब एचबीएल में क्या कर रहे हैं एज अ सीनियर ऑडिटर हैं ये, इंटरनल ऑडिटर, मोस्ट प्रोबेबली सीएस का ऑडिट ऑडिट कर रहे मैनेजर होंगे, है मोस्ट प्रोबेबली सीएस का ऑडिट कर रहे होंगे, समथिंग लाइक दैट। तो शायद, अगर ऐसा कर रहे तफसील। हैं तो इंटरनल ऑडिट यानी कंप्यूटर सिस्टम्स ऑडिटिंग होगा या आईटी ऑडिट होगा, जीआरसी, समथिंग लाइक दैट। बहुत अच्छा काम है इनके लिए, मगर वही है कि इनको दो रास्ते हैं इनके पास कि या तो यहाँ से इतना अच्छा काम करें कि यहाँ से अगर ये एआई ऑप्स पढ़ते हैं जिसमें डेवऑप्स, सिसऑप्स, एआई तमाम चीज़ें हैं, तो उसके अंदर काम करते हुए यहाँ से ये पूरा अपना वो सीवी सब कुछ बनवा कर, सब कुछ करके यहाँ से ये अप्लाई कर सकते हैं कनाडा, जर्मनी, मुख्तलिफ जॉब्स के लिए। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है इनके पास कि ना वट कि वो यहाँ से ये पढ़कर करके मास्टर्स करने चले जाएं, 1 साल का करके, फिर 2 साल का वर्क परमिट पकड़ के फिर यूके में तलाश करें, या जर्मनी चले जाएं यहाँ से पढ़ के और फिर वो सारे स्किल्स जमा करके फिर जाके वहाँ करें। सो इट ऑल डिपेंड्स। दे हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। मिडल ईस्ट में जाना उनके लिए बहुत आसान है, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर में काम किया है, सिस्को में काम किया है, तो मिडल ईस्ट में जाना आसान है उनके लिए। मिडल ईस्ट में उनकी जॉब हमारे लिए लगवाना आसान है, बिकॉज मिडल ईस्ट में एम्प्लॉयर को वर्क परमिट लगाने के लिए कोई इतना काम नहीं करना पड़ता ना। गवर्नमेंट ने काम आसान किया हुआ है। बाहर मुल्कों में मुश्किल होती है, तो बाहर मुल्क में अगर बंदा ऑलरेडी वहाँ पर पहले से ही हो तो फिर वो काम आसान होता है, स्टूडेंट वीजे पे, किसी और वीजे पे। लेकिन अगर स्टूडेंट वीजे पे, किसी और वीजे पे नहीं है और वो अपनी कंट्री में, तो वहां से उठा के लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो दीज आर द चैलेंजेस वी हैव सीन। सो इट ऑल डिपेंड्स कि वो किधर हैं, कहाँ पर बैठे हुए। बट उनके लिए यहाँ से मिडल ईस्ट का राउट सबसे आसान होगा। एआई ऑप्स पढ़ें, डिप्लोमा इन एआई ऑप्स, कंप्लीट इट, गो टुवर्ड्स मिडल ईस्ट। अल रज़ाक की अगर सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, ठीक है ना, तो वो मिडल ईस्ट में फिर हमारे लिए डालना, उनके लिए आसान है। ऐसे कैंडिडेट को डालना आसान है, इट्स वेरी इजियर। इतना सारा एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, तो 35 to 40,000 रियाल ही कैन कमांड। 30,000, 25 to 30,000, but he can command between 25 to 35,000, I mean comfortably ये कमांड कर सकते हैं। जी सर ये आखिरी सवाल है, ये है तैयबा जुल्फ़िकार ने पूछा है ये, कि जो लड़कियां रिमोट जॉब करना चाहें घर बैठ के, उनके लिए लिनक्स एडमिन की जॉब कैसी है?
या डेवऑप्स में उनको कौन से टूल आने चाहिए जिसके लिए वो इजीली घर जॉब कर सके 100% घर बैठ के विदाउट एनी ट्रैवलिंग। देखें अब तो सारा एडमिनिस्ट्रेटर भी क्लाउड में है। अगर आप लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप रिमोट भी करेंगे तो आप क्लाउड में करेंगे, तो सिसऑप्स तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप सिर्फ RHEL पढ़ के DCCS में से करके आते हैं, यू मे बी एबल टू फाइंड सम एम्प्लॉयमेंट, आपको कुछ मिल जाएंगी, ठीक है ना, बट वो पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर पे मिलेंगी। लेकिन अगर आपको बहुत अच्छी काम करना है, सब कुछ करना है, तो ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज चाहिए। ख़वातीन के लिए सबसे बेस्ट जो है वो डेवऑप्स एसऑप्स मिलाकर पढ़ना है। अगर AI मिलाती हैं तो इसमें MLOps भी दूसरी ऑप्शंस उनके पास खुल जाते हैं, राइट। सो इट ऑल डिपेंड्स के, और उनके लिए ये सारी इंट्रोवर्ट जॉब्स, यानी कि बेसिकली इसमें ह्यूमन इंटरेक्शन कम है, सिस्टम इंटरेक्शन ज़्यादा है AI के अंदर, ML के अंदर, इन तमाम चीज़ों के अंदर, ठीक है। सो इट ऑल डिपेंड्स के वो किस तरह के काम करती हैं। तो अगर यहाँ पर वो डेवऑप्स पढ़ती हैं, डेवऑप्स के साथ ना वो ऑफेंसिव को मिला लें, इट्स ऑल रिमोट। डेवऑप्स के साथ वो सिसऑप्स को मिला लें, इट्स ऑल रिमोट। डेवऑप्स के साथ वो जो है डेवऑप्स सिसऑप्स AI यानी AI ऑप्स मिला के पढ़ लें, इट्स ऑल रिमोट। सो मोस्टली इट्स रिमोट बिकॉज खवातीन के लिए काम करना आसान है, ठीक है ना। GRC में दे हैव टू गो टू द ऑफिस, लाइक IT ऑडिट में दे हैव टू बी एट द ऑफिस। सो इट ऑल डिपेंड्स, राइट। मुख्तलिफ प्रोफेशंस हैं, रिमोट सिस्टम लिनक्स एडमिन है, उसमें तो रिमोट ही लग जाता है काम, लेकिन पैसे कम मिलते हैं, $500 से $600 महीना मिलेंगे, ठीक है, अगर आपको पर मंथ के हिसाब से। दैट्स नॉट बैड बट इट्स नॉट, आई मीन इट्स ओके, बट इफ यू रियली वांट टू गेट अ बेटर इनकम देन you need to know, infuse other tracks in there and build up your skill portfolio, because now everyone is looking for Chuck Norris or Sultan Rai, right, who knows everything. Unfortunately that is the requirement, which is a very unrealistic expectation, but that is the expectation in the industry जो आजकल लोगों से मांगी जाती है, मानी जाती है, ठीक है जी। मैं 2-3 सवाल एक यहाँ सवाल पढ़, जी जी बोलिए बोलिए। एक सवाल, अच्छा अगर आप मतलब वाइंड अप कर रहे हैं, मतलब क्लोज करें तो ठीक है, वरना मेरे पास सवाल खत्म हो गए आज के, लेकिन एक सवाल पर्सनली पूछना चाह रहा हूँ, मैं बाद में पूछ सकता हूँ, आप कैरी ऑन करें। नहीं नहीं, आप पूछ सकते हैं। मैं तो कह रहा था कि अगर किसी को कोई और सवाल, इररेलेवेंट है, जी जी मेरे पास है, एक्चुअली, मेरे पास है। रेलेवेंट भी है। मैं बस ये कह सवाल रहा था ये कि है कि एक मिनट, मैं बस ये कह रहा था कि किसी का कोई और सवाल है, इस सवाल के फौरन बाद जब तौकीर भाई पूछ लें तो फिर वो सवाल प्लीज यहाँ पोस्ट कर दें, मैं कमेंट्स में पढ़ते हुए ओके जवाब ओके दूंगा। ओके, जी आई एम वेटिंग। जी बोलिए तौकीर, आप बोले, यू कैन कंटिन्यू। मैं ये पूछ हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या AI कुरान के ऊपर अनबायस रिसर्च कर सकता है, रिलायबल होगा? सो हियर्स द थिंग, दिस इज अ बिग डिबेटेबल टॉपिक, ठीक है ना। AI के एथिक्स को करना, सब कुछ करना, AI लर्न करता है बेसिकली टोटली थ्रू large learning models, LLMs जो उसके चलते हैं. I mean, that's the way that it consumes large amount of information, right? And through other various means as well. The kind of data you feed in is what it knows. It is not sentient कि वो अपने बेस पे डिसीजन ले. So अगर आप उसको मुफ्ती तकी उस्मानी साहब देंगे और सारी बुक्स दे देंगे और बोलेंगे सब पढ़ लो, वो पढ़ लेगा, ठीक है। और आप उसको जो है ना एक कोई फारिग स्कॉलर दे देंगे, ठीक है ना, जो कि स्कॉलर भी नहीं है, आप उसको दे देंगे जैसे कोई है यहाँ पर पाकिस्तान, अब द प्रॉब्लम ये है कि ना हर कोई स्कॉलर बन गया ना। मैं खुद पढ़ रहा हूँ, भी बन रहा हूँ, बट हर कोई बन गया, हर कोई जिसको दो बातें करना आ जाए वो स्कॉलर बन जाता है। इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट आपको यहाँ बहुत सारी पर्सनैलिटीज नजर आएंगी जो कि बड़े बड़े टॉपिक्स पर बात कर रही हैं। तौहीद और इन सब चीज़ों के ऊपर बात एक अलग चीज़ है, लेकिन ना वो मसाइल और फिक्र आपने नहीं पढ़ी तो आप मसाइल के ऊपर बात ना करें, ज़्यादा बेहतर है। आपकी नॉलेज होनी, सब कुछ होना चाहिए। सिर्फ कुरान व हदीस को उठा के ऐसे नहीं पढ़ा जाता, बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट की जाती हैं। बट एनीवे, बट द पॉइंट इज के ना इस तरह की सब चीज़ें हैं। तो आप कोई वो दे देंगे उसको, जैसे एक कोई है जो साइंटिफिक पोर्टल्स के ऊपर बात करता रहता है, तो उसकी चीज़ दे देंगे। साहिल अदीम, क्या अदीम करके कुछ नाम है, एक इंजीनियर मिर्जा है, मुझे किसी ने उसका क्लिप भेजा था, ठीक है। सो यू विल सी कि AI जो है जब वो लर्न करेगा तो वो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के उसके ऊपर वो बहुत कॉन्टेक्चुअलाइज करके अच्छे तरीके से जवाब देगा। और अगर इन दोनों की बात करेगा तो वो इधर उधर की आए बाएं शाएं और वो सब कुछ करेगा। सो वो लर्न करता है बिकॉज इट गोज थ्रू अ प्रोसेस। सिर्फ ये कह देना कि मैंने तफसीर पढ़ ली है, आई एम नाउ अ स्कॉलर, दैट डजंट मीन एनीथिंग. You have to go through the
through the grind, right? And पाकिस्तान में ऐसे स्कॉलर भी हैं, एक मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, अच्छे मोतबर स्कॉलर हैं, मेरे तो बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं उनके साथ, ठीक है, बहुत शदीद इख्तलाफात हैं, but that's me and him separately, and I have debated these things many times, ठीक है ना, but he's my teacher as well, but because मैंने उनकी मस्जिद से ही पढ़ा है, बैतुल मुकर्रम मस्जिद मेरे घर के सामने, I've spent my childhood there, ठीक है ना। अब एक अलग बात है कि अब मेरे सारे जो शयूख हैं वो सारे मसरी हैं, उस्ताद सब चेंज हैं, तो it's very very different. So what you teach the AI is how it behaves. So अगर आप उसको रेसिस्ट इंफॉर्मेशन देंगे तो वो रेसिस्ट तरीके से रिएक्ट करेगा, अगर आप उसको इसको अच्छी इंफॉर्मेशन कंज्यूम कराएंगे तो वो अच्छी तरीके से करेगा। आप उसको इमाम इब्न तहमीमिया, इब्न कसीर और ये जो बड़े स्कॉलर्स हैं, आप इनकी इंफॉर्मेशन देंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से आपको इसका आंसर देगा। सो द वे यू ट्रेन द मॉडल इज व्हाट यू गेट। इट्स लाइक अ बच्चा है, छोटा बच्चा है ना, आपने छोटे बच्चे को तमीज सिखाई, वो तमीज से जवाब देगा, आपने छोटे बच्चे को तमीज सिखाई, वो बदतमीजी करेगा, बिकॉज उसने यही सीखा है। तो दिस इज द डिफरेंस। AI सेंटिएंट अभी तक नहीं है, और वो उसको होने में भी बहुत टाइम चाहिए। The reason is it requires massive amount of energy. It requires massive amount of compute and many other things, right? अगर आप में से कोई कॉमिक्स पढ़ता है, तो मैं तो ठेलों के पर जाकर ना, जब सुबह के टाइम पे जब सब ठेले बंद होते थे तो वो खोल रहे होते थे, तो मैं खड़े होकर कॉमिक्स पढ़ता था। तो मैं कॉमिक्स बहुत शौक से पढ़ता था, अब नहीं पढ़ता, लेकिन पहले पढ़ता था। जब getting old, I'm 43, I will be 44 inshallah, so I consider myself fit, alhamdulillah. But from the age perspective, yes, it's different. When I was different, 16, 15, 16, 14, I used to read a lot of comics, right? So जिस तरह उसमें दिखाया है ब्रेनियक और जो दूसरी चीजें हैं, ठीक है ना, AI को ट्रेन करने में टाइम लगता है, it requires a lot of resource, it requires a lot of things. They are coming up with new things. देखें अभी जो है ना, NVIDIA ने एक बहुत बड़ा कंसोर्शियम बना रहा है, $6 ट्रिलियन का फंड जमा कर रहा है, उसमें दुबई के शेखों को लगा रहे हैं पैसा फेंकने के लिए, NVIDIA खुद कर रहा है, HP और बड़े बड़े प्रोवाइडर्स। क्यों? बिकॉज वो कह रहे हैं कि हम ना एक दुनिया के सबसे बड़े डेटा सेंटर्स बनाएंगे और AI की जो पावर है सबके लिए अनलीश कर देंगे ताकि हर कोई कंज्यूम कर सके, ठीक है। तो उसके लिए उनको रिसोर्सेज चाहिए। $6 ट्रिलियन गैदर करना, इट्स अ बिग थिंग, राइट। तो इस तरह तो मतलब कि आप समझें कनाडा की 6 टाइम्स ऑफ इकोनॉमी, कनाडा 2 ट्रिलियन डॉलर, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, राइट। तो यू कैन इमेजिन कि इस तरह से वो लोग कर रहे हैं, दे आर गैदरिंग मनी टू बिल्ड अप दैट फाउंडेशन, बट उस फाउंडेशन के लिए रेयर अर्थ मेटल, दूसरी चीजें चाहिए। सो AI इस सूरत हाल में, AI इज नॉट अ मुफ्ती। आप उससे कभी कोई मसला नहीं पूछें, आपको गलत जवाब देगा। बल्कि शेख एक मोरितानिया के एक शेख हैं, शेख मोहम्मद दूदी ऐसा कुछ करके उनका नाम है, वो जो हैं उनसे AI से 6 सवालात किए और उनसे किए, ही वाज एबल टू आंसर दोस क्वेश्चंस एक्यूरेटली एज कम्पेयर टू AI। इसकी वीडियो भी है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो इंसान के ब्रेन का कोई वो नहीं है, कोई रद्द बदल नहीं है। बिकॉज मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, देन वी शुड एंड देन आई विल टेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस। एक जो मछली होती है छोटी, अगर वो कोरल रीफ में रहती है तो उसको बड़ी मछली से बचने के लिए अल्लाह ताला ने जो उसको नॉलेज दी है, अगर आपने उस नॉलेज को स्टोर करना हो, उसको आप नॉलेज में निकाल के स्टोर करें, यू नीड, जैसे कराची स्टेडियम है क्रिकेट का, ऐसे आपको 10 स्टेडियम चाहिए जिसमें लाइन से 4-5 मंजिला बिल्डिंग्स हों और सिस्टम लगे हुए हों, और वो आप फिर वो नॉलेज पूरी एक रोबोट को दें उसके ब्रेन में। कल मैं एक जगह गया था, बच्चों को रोज़ा था, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा है, छोटे बच्चे हैं, तो उनको मैं एक सांप, अजदहा, सारी रेप्टिलिया एक जगह वहाँ लेके गया, तो वहाँ उन्होंने दिखाया कि ना छोटी मछली का ब्रेन इतना सा है, फिर मेंढक का ब्रेन दिखाया, फिर दूसरी चीज़ों का, फिर सांप का ब्रेन दिखाया। दे वर लुकिंग एट ब्रेन्स। तो मैंने कहा देखो ये इन्फॉर्मेशन होती है इसके दिमाग में कि किस तरह से उसने अपने आप को बचाना है प्रेडेटर से, राइट। तो अल्लाह ताला ने इंसान को इतना बड़ा ब्रेन दिया है, ठीक है ना, ज़बरदस्त अशरफुल मखलूक़ात है, हम सबसे बेहतरीन मखलूक है, अल्लाह ताला कह रहा है यू आर द बेस्ट ऑफ द क्रिएशन। तो बात खत्म हो गई कि एलियन शेलियन ये वो सब खत्म हो गया, भाई वी आर द बेस्ट ऑफ क्रिएशन, वी आर द बेस्ट, खलास, इट्स डन। सो व्हाट वी डू इज द बेस्ट, व्हाट वी क्रिएट इज द बेस्ट, ठीक है ना। सो बट पीपल स्टिल गो इनटू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, नो देयर आर अदर थिंग्स, यस वी देयर आर, बट
We are only here to serve Allah subhanahu wa ta'ala. We are not here to contemplate कि भाई और creations हैं, भाई बहुत सारी creations हैं, but we are not here to do that. So it's a very difficult thing. मगर होगा ये फकीर भाई कि आइंदा आने वाले वक्त में लोग AI को ना बहुत ज़्यादा misuse करेंगे. They will misuse it. They will try to create, and one of the biggest challenges जो भी आने वाला है is Israel is already working on this thing. और दुनिया में अगर कोई AI सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा है तो इसराइली यूज़ कर रहे हैं. वो ये है कि ना, they are trying to harness the power of AI in a way that they can create a book opposite of Quran. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, Allah has challenged, the whole humankind. कि भाई, if you think that this book is written by someone, the mafhum of the ayah is, then go and write a book, write a surah, like an ayah, or a surah, or the book, or whatever you can. You will not be able to do it. Okay, if you can, Allah Ta'ala कहता है जाओ कुरान लिखो, कुरान ले आओ, उसकी मतलब किताब ले आओ, चलो एक सूरा ले आओ, चलो एक आया ले आओ, तुम नहीं ला सकते. So ये अल असवद अल अंसी और मुसैलम अल कज़्ज़ाब, ये सब जो कुरान लिखते थे और करते थे, कहते थे कि हमारे वही नाजिल हो रही है, और कादियानी और सब जो भी हैं, जितने भी हैं. So their Quran was always funny. Like मुसैलम अल कज़्ज़ाब जो कुरान लिखता था, it was very funny. It was like मुझे भूख लग रही है, मेंढक खाना खा रहा है, गेहूं उग रही है, ये वो. So his followers said कि यार मोहम्मद का कुरान इतना eloquent है, and your Quran is all about hungry. I mean, it seems like जब तुम hungry होते हो तो तुम पे वो नज़ूल होता है. So the point is कि they are going to do that. This is a very big fitna for the ummah, and they're going to do it. What will be the product? It will not be like the Quran, because this is what is Allah's challenge. This is our iman. If you don't have that iman, khalas, I mean, your faith is in big doubts, right? So that's why it is important for us to read more Quran, adopt the implementation of Quran. Don't follow the scholars blindly, because if you do, you will be disappointed. Don't follow any scholar blindly. I don't follow that. I never do that. There's a hadith by Abdullah ibn Masud radiallahu anhu on that, and he was telling his tabi'in, do not follow the living, follow the dead, do not follow the living. So one of the tabi'in said, what does it mean? He said, follow the sahaba. Don't follow who are alive, because they are going through trials, they're going to fitan, they might pass, they might fail, and you will be disappointed. But follow the sahaba. They were the best generation. So we have to follow the sahaba in whatever we do. So don't follow ChatGPT, don't follow AI, because it will disappoint you. Because the way it is being trained is always biased because of the information it is consuming, and it doesn't have the ability to think, because it is not sentient to think like a human being. No one can create a human being. It is mentioned in the Quran. Many hadith are there as well. No one can challenge. No one can do that. ठीक है तौकीर भाई, जज़ाकल्लाह खैर. मैं एक दो सवाल लेता हूँ, and then I will wrap it up इंशाल्लाह. फकीर भाई आप जा सकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. I will end this session from here. Sayyid No, Abdul I'm listening to you. Okay. Sayyid Abdul Quddus. Yes, go ahead. So I will read the questions here. Mudassir Khan says, can I secure a job in cloud security with just a diploma in cloud cybersecurity without a bachelor's degree? Because I don't have any bachelor's degree. I had taken admission in BBA, but I left that. My plan is to get a job after completing the diploma and then pursue further education in AIOPS, because I can't afford it directly now. My age will be 22 in May 2024, which you know is the age you have to find a job. I think this is not an age to find a job. This is an age when you should be married. The thing is, Mudassir Khan, if you're the same Mudassir who has met me many times in Pakistan as well, if you're the same one, I've told you many times. Yes, cloud cybersecurity में तुम job कर सकते हो if you complete all the labs. ठीक है ना? If you complete the course and the diploma and the EduQual exams and the Al Razzak labs, we will help you. So there are two ways of doing it. You do the diploma. By doing the diploma means you need to complete the diploma EduQual exams, part 1, part 2, both. When you're doing that, then the one thing is left is Al Razzak labs. Why not do that? If you don't do Al Razzak labs, you have to find your job on your own. We will not help you. But if you do Al Razzak labs, then we will help you in terms of finding a job.
So if you meet all the requirements, if you do all of those things, then we will help you and place you, not only help you, but place you on the job. So it's up to you to decide what do you want to do, right? Now you don't have the say कि मेरी जॉब ये हो जाएगी या मुझे ये लगा दे, नहीं मुझे अच्छी नहीं लग रही यहाँ पर जो ना खास लोग नहीं बैठे हुए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, सब मर्दों के साथ बिठा दी, ये वो नहीं, ऐसा नहीं है. This is nothing like that. We will just place you on the job. Whether they pay you 50,000 rupees, 75,000 rupees, 100,000 rupees, it's up to them. But we will place you on the job. That's the kind of agreements we have with the companies. They will evaluate and they will give you the salary as per their evaluation. But we will get you in and we'll prepare you for the interviews. So yes, we can help you, assist you, provided you meet all the key requirements. If you meet all the key requirements, we can help you. Ji Sayyid Abdullah, please write down your questions here so that I can see and then I will answer them questions. जी और बताइए. अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, मेरी आवाज आ रही? जी जी आ रही. फैसल भाई, मैंने मैसेज टाइप भी कर दिया था आपसे. क्विकली बस ये पूछना था, मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था कि मेरा अपना मास्टर्स जो है वो सिविल स्ट्रक्चर्स में ही है. तो एक तो ये मुझे गाइड करिए कि मुझे एज अ कैरियर शिफ्ट सोचना चाहिए या इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन. उसके साथ मुझे ये भी पूछना है कि ऑलरेडी मेरा मास्टर्स है, तो क्या एजुकल की तरफ मुझे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ऑल्दो इट इज़ पार्ट ऑफ द कोर्स. और मैं ऑलरेडी प्रोग्रेस कर चुका हूँ, ऑलमोस्ट 25% पार्ट 1 का मैं कर चुका हूँ, और मैं इंशाल्लाह जल्दी कंप्लीट कर लूंगा. लेकिन क्या यानी उसका मेरे लिए क्या पर्पस होगा एजुकॉल को यानी कंप्लीट करने के लिए? एजुकॉल एग्जाम का एक ही पर्पस है, एजुकॉल पार्ट 1 पार्ट 2 का, टू गेट यू इनटू अल रज़ाक. पार्ट 1 एग्जाम पास करोगे, यू आर पार्ट ऑफ अल रज़ाक. ठीक है ना, तुम अल रज़ाक में आ जाओगे, तुम्हें लैब्स मिलना शुरू हो जाएंगी. पार्ट 2 तुम 85% जब कोर्सेज कंप्लीट करोगे, जैसे जैसे तुम कोर्सेज कर रहोगे तुम्हें लैब्स दी जा रही होंगी. ठीक है ना, और जैसे तुम पार्ट 2 का पूरा कर लेते हो और अल रज़ाक की सारी लैब्स कंप्लीट कर लेते हो, इट इज इनकम्बेंट ऑन अस टू प्लेस यू ऑन द जॉब, राइट? सो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में ही तुम रहोगे, लेकिन फर्क इतना है, तुम स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में एआई ऑप्स को यूज करोगे. ठीक है ना, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग जो जो बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, स्ट्रक्चर्स खड़े किए जा रहे हैं, तुम उसके अंदर हो ना, राइट? ठीक है जी जी बिल्कुल. इसके अंदर बहुत सारा काम है. मैंने बहुत पहले काम किया था हाइड्रो क्वेबेक में. हाइड्रो क्वेबेक इज हाइड्रो क्वेबेक इन इंग्लिश में, in French is I can speak French as well. हाइड्रो क्वेबेक इज अ डिफरेंट वो. सो उसमें जो है ना, वहां पर मैंने काम किया था. व्हाट दे वर डूइंग वाज दे वर पुटिंग सेंसर्स इन द डैम. जी जी जी. ठीक है ना, सो अगर कहीं पर भी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी खराब होती है, क्रैक पड़ता है, दे नो वेयर द क्रैक इज सो दैट दे कैन गो एंड फिक्स इट इमीडिएटली. ठीक है ना, सो दे वर गैदरिंग द डेटा थ्रू सोनार्स एंड डिफरेंट थिंग्स, राइट? सो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जो वो लोग यूज करते हैं. आवर जॉब वाज टू दे, मेरी जॉब क्या थी कि मेक श्योर के, या मतलब कि ना उस टाइम पे जो मेरी जॉब थी वो एमएल ऑप्स के अंदर के मशीन लर्निंग मॉडल्स हमारे जो हैं वो सही काम कर रहे हो और सारा डेटा सिक्योर हो. ठीक है ना, तो अगर तुम्हारे पास स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पूरी डिग्री है, सब कुछ है, और तुम इसमें एआई ऑप्स का कंप्लीट करते हो, तो यू हैव सम एड ऑन स्किल्स. यू हैव डेवऑप्स, यू हैव सिसऑप्स, यू हैव एआई, साइबर सिक्योरिटी, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. उससे तुम्हें फायदा ये होगा कि तुम अपनी सोल्यूशन डिजाइन कर सकोगे. लास्ट मैंने बताया था कि अगर कोई एआई ऑप्स कर रहा है तो उसको कौन कौन से कोर्सेज पढ़ने हैं और कौन कौन से कोर्सेज उसको स्किप कर देने, यानी कि जल्दी लिसन करके बढ़ सकता है. तो ये मैंने एक चीज बनाई थी, बड़ी सिंपल सी चीज है. आई विल शो इट टू यू. ठीक है, सो कोई भी ऐसा कोर्स, ये जो ग्रीन में है, ये वो कोर्सेज हैं जो तुमने कंप्लीट करने. ठीक है ना, अगर तुमने ये कंप्लीट लिसन रीड एंड मूव फॉरवर्ड, ये वो है कि तुमने पढ़ा और तुम आगे निकल गए. ठीक है ना, सुना सुना आगे निकल गया, तो सुना पढ़ा आगे निकल गया, खत्म. ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं. लेकिन इसके अंदर कुछ कोर्सेज ऐसे हैं, लेकिन तुम उनको बाद में रिविजिट करोगे, ठीक है ना. यहाँ पर तुम्हारे पास जो कोर्सेज हैं वो हैं कि जिसको तुम बार बार करो. ये वो कोर्सेज, इनको तुमने बार बार करना है. अगर तुमने ये कर लिया तो यू विल बी एबल टू क्रिएट अ सोल्यूशन. ठीक है ना, यूजिंग डिफरेंट मॉडल्स, जिसको तुम कर सकोगे, where you can utilize AI to create new processes within your company. ठीक है ना, so structural engineering के साथ अगर तुम ये करते हो, you will most probably find better jobs. ठीक है ना, you're in Saudi Arabia, Middle East में हो ना तुम कहीं, if I remember it correctly. Where are you right now? कहाँ पर, किस कंट्री में हो तुम? जी फैसल भाई, वो अनम्यूट नहीं हो रहा था. जी मैं सऊदी अरब में ही हूँ.
जुबैल में ही आपसे बात हुई थी, हाफिज फैयाज साहब, मैं और उस्मान, यस हम तीनों यस यस। हाँ हाँ, तुम्हारे तो एक दोस्त ने तो पूरा वो बनाया भी था, पूरा मुझे कुछ भेजा भी था। बड़ा माशाल्लाह तेज है वो लड़का, बड़ा तेजी से काम कर रहा है। ऑनलाइन राइटर। हाँ हाँ। सो तुम्हें अगर करना है काम, तो तुम्हारी जो ज्यादा अच्छी जॉब्स हैं वो तुम्हें जर्मनी में और यूरोपियन यूनियन में मिलेंगी, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में जो बड़ी कंट्रीज हैं, जर्मनी, फ्रांस, ये यहाँ पर ये लोग बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अपडेटिंग एंड अपग्रेडिंग देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। अगर तुम ना मैनेजमेंट। ये सारे स्किल्स लेकर वहां जाते हो, बोलो आई कैन एनालाइज द इंफ्रास्ट्रक्चर, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, दैट इज अ ग्रेट थिंग फॉर यू, ठीक है ना। तो यू कैन बिकम लाइक अ सोल्यूशन क्रिएटर फॉर देम, राइट। उसमें तुम्हें ज्यादा फायदा है, लेकिन तुम्हें इसके अंदर एमएल ऑप्स के कुछ कोर्सेज वगैरह जो हमने बताए ना, वो तुम्हें थोड़े ज्यादा अच्छी तरीके से करने पड़ेंगे, इसमें तुम्हें सोल्यूशंस बनाना आ जाए, राइट। तुम्हें पीस अप करना आ जाए, डेटा को गैदर करना आ जाए, सब कुछ करना आ जाए। इफ यू डू दैट, बिकॉज तुम्हें वो सोल्यूशंस वापस आके करनी पड़ेंगी, तो तुम अच्छी जॉब सिक्योर कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा फैसल में मैं ऑलरेडी कुछ चीजें ऐसी जैसे कंडीशन मॉनिटरिंग, फॉरेंसिक इंजीनियरिंग रिलेटेड टू स्ट्रक्चर्स, जरूरी नहीं है बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स हो, बहुत सारे प्लांट्स हैं बिल्कुल। पेट्रोकेमिकल, उसमें ऑलरेडी मैं काम कर रहा हूँ। पिछले मेरा तकरीबन एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट मोर देन 10 years। जो सेफ्टी इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम्स हैं, इस तरह की सब चीजों में तुम काम कर, स्काडा में नहीं भी। सेफ्टी, नहीं वो स्काडा में हाफिज फैयाज से आप शायद मिक्स कर रहे होंगे। मैं अपना कंडीशन असेसमेंट ऑफ बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक। तो वो उस पर मैं काफी अरसे से काम कर भी रहा हूँ, और बहुत सारी जगहों पे जो है डाटा गैदर करके उस पर काम करना ही होता है। लेकिन अगेन मुझे ये लगता है कि ये यानी जो ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज में ये काम ज्यादा हो रहा है। होपफुली यहाँ पर भी जो है वो होगा। अभी मैं कुछ प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हुआ हूँ जिसमें एसेट मैनेजमेंट में बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर ये आगे प्रोलॉन्ग यानी कि इसको एक्सपेंड करते हैं तो इसका भी स्कोप यहाँ पर आएगा। तो मेरे ध्यान में है ये सारी चीजें। उसके अलावा पाइथन जो है वो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में काफी ज्यादा यूज हो रहा है, अब उसको भी मैं देख रहा हूँ, उस पर भी फोकस करता हूँ। आपने जब ये शीट शो की थी उसको मैंने स्क्रीनशॉट तो ले लिया था, लेकिन मुझे नहीं पता वो कहीं और अवेलेबल है यानी एज अ शीट नहीं नहीं, फॉर्म ये या। नहीं नहीं, ये तो हमारा अलग डॉक्यूमेंट है। अच्छा इसके सही। अंदर जो है ना, हाँ, हम इसकी शीट बना रहे हैं। इसमें तुम देखोगी एक्रेडिटेशन प्रोसेस चेकलिस्ट का डॉक्यूमेंट है। इसमें हमारे जी जी डॉक्यूमेंट जी जितने डिप्लोमास हैं, जो उनकी मैपिंग है, बहुत सारी चीजें हैं, असेसमेंट्स हैं, कैसे होता है, दिस इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन जो इसके अंदर है, जो कि तुम्हारे अच्छा अच्छा काम अच्छा। की नहीं है। हाँ हाँ, ये नो मैं प्रॉब्लम, शेयर नहीं कर सकता। नो आ, प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हाँ, लेकिन हाँ, इसकी एक अलग से वर्जन बन रहा है, जिसमें हम तुम्हें बताएंगे किस कोर्सेज में तुम्हें तवज्जो देनी है, किस कोर्सेज में तुम्हें निकल जाना है। वो हमारी सेल्स टीम्स के पास, सपोर्ट टीम के पास होगा, और हम अपने स्टूडेंट्स के लिए पोर्टल में हर जगह रख देंगे, सो दैट दे नो। बिकॉज अच्छा देखो, मकसद क्या है? मकसद ये है कि तुम जल्द से जल्द जॉब पे लग जाओ, बेहतरीन जॉब, या और जब लगे हुए तो उससे और आगे बढ़ जाओ ना। हमारा मकसद ये नहीं है कि भाई हम जो है ना तुम्हें पूरा कोर्स खत्म करवाएं, तुम्हें बोले यार 2 साल तुम लो खत्म करो, तुम्हारे पास 18 महीने वैसे भी हैं, ठीक है ना। जी जी साल की फीस पे करता है, उसको 6 महीने एक्स्ट्रा मिलते हैं। हमारा जी मकसद क्या है कि तुम के 6 8 9 महीने में, साल में इतना कर लो, इतना पढ़ लो कि तुम यहाँ से निकल सको। सऊदीया के अंदर काम होगा, वो काम कर रहे हैं। और जो सऊदी प्रोजेक्ट जो है, उसका जो विजन 2030, विजन 2032, वट एवर, राइट, जी जी। उसमें वो पैसे लगा भी 2030। रहे हैं। हाँ। जी और $1 ट्रिलियन, 3 to 4 ट्रिलियन वो लगा भी रहा है, सब कुछ कर रहा है, ठीक है ना। जी बहुत जी सारे स्ट्रक्चर्स नए नए बन रहे हैं, सब कुछ है। और उसकी पूरी कोशिश है कि वो एक डिजिटल इकोनॉमी बनाए, तो वहां पर ब्लॉकचेन, एआई और आईओटी, ऑफेंसिव सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, जीआरसी, इन तमाम पे काम होगा। अगर तुम्हें डायरेक्टर लेवल पे जाना है, कि जहां तुम अपनी पूरी स्ट्रक्चरल प्रैक्टिसेस की ना वो देख सको, या फयाज है तो वो कहता है कि भाई मैं पूरी स्काडा की वो देखता हूँ, तो डायरेक्टर लेवल पे तुम्हें साइबर सिक्योरिटी, जीआरसी, तमाम चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम्म तुम्हारे पास इतनी नॉलेज होगी, इतना हैंड्स ऑन स्किल होगा कि तुम बोल सकते हो कि हाँ, ये हम कर सकते हैं और मैं टीम से करवा सकता हूँ। तो बाहर से हम्म। कंसल्टेंट बुलवाया, काम करवाया, सब कुछ किया। अगर तुम्हारा मकसद है वहां रुकना, मैं तुमको लेकिन पर्सनली मशवरा दूंगा, मिडिल ईस्ट जो जगह है ना, बहुत वॉलेटाइल है, ठीक है। आज अच्छा बादशाह बैठा हुआ है, अच्छा है, टेढ़ा बादशाह आ गया, टेढ़ा भी तो सब टेढ़ा ही है, शराब भी खुल गई, राइट। तो ये भी एक बड़ा मसला है। तो मैं मदीने में था, तो जो मेरा ड्राइवर था, उसका नाम था अबू अब्दुल्ला, वो मुझसे कह रहा था कि मदीने में लोग जो है ना
रात के टाइम शराब पीते हैं। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है? उसने कहा वल्लाही शेख तुम्हें नहीं मालूम यहाँ पर ना, और यहाँ पर बहुत खराबी है, लेकिन बस ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है। तो मैंने उसको बोला कि भाई ये एंड ऑफ टाइम्स की निशानियां भी है ना, होगा ऐसा होगा, तो ये सब चीज़ें तो होंगी। और एंड ऑफ टाइम्स में जैसे अल बिदाया व निहाया में है कि ये मस्जिद नबी बिल्कुल खाली पड़ी होगी। तो मैं आई वाज सिटिंग इन मस्जिद नबी एंड आई वाज क्राइंग कि यार ये मस्जिद एक टाइम ऐसा आएगा खाली पड़ी होगी और यहाँ पर जो है ना अंदर जानवर घूम रहे होंगे, ठीक है ना। सो इट्स अ वेरी टफ टाइम, ठीक है ना, एंड द एनिमल्स विल बी यूरिनेटिंग इन द मस्जिद एंड दी बट दीज आर द एंड ऑफ टाइम्स, बिल्कुल आखिर में जब सब खत्म हो जाएगा ना, खत्म होने वाला होगा, देन अल्लाह विल लिफ्ट दिस प्लेस। तो दीज आर द टाइम्स दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। बट सऊदीया ऑलरेडी बहुत टर्मोइल से गुजर रहा है, there's a lot of things going on। मेरा मशवरा है कि डू दिस एंड मूव टुवर्ड्स यूरोप। You only have to ठीक stay there for few years, 5-6 years. है। You know, once you have the thing, then you can come back. That's it. Now, there is a risk. You have to work very hard in your home to maintain Islam. Because again, as I said, you are the shepherd of your own house. I'm the shepherd of my own house. I'm not the shepherd of YouTube कि मैं बैठ के बयान दे रहा हूँ सबको, बेकार की बात है, ठीक है ना। अपने घर में देखो भाई क्या हो रहा है, सही है ना। सही। तो मैं मैयतों में भी गया हूँ, लोगों को गुस्ल भी कराया है, कब्रिस्तान में खड़ा हुआ हूँ, लिटरली लोग गाने सुन रहे हैं और वीडियो दिखा रहे हैं, और वो बंदा पीछे तक उसको दफन किया जा रहा है, अभी इसको लिटाया भी नहीं है, और कब्र की बोलते हैं कि इस तरह के मैंने सीन देखे। सो इट्स वेरी शॉकिंग, ठीक है ना। और दिस इज द रियलिटी बट नो वन अंडरस्टैंड्स दैट। एंड सो द पॉइंट इज के यू हैव टू वर्क हार्ड। मैं अपने बच्चे को लेके गया, मैंने कहा आओ बेटा तुम 11 साल के हो गए, यू हैव टू स्टैंड हियर एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या होता है। और माशा हाँ, तो मैंने इसको दिखाई, कब्र दिखाई, देखो दिस इज वेयर आई विल बी वन डे एंड यू हैव टू लाई मी डाउन। सो गुस्ल मैंने इसको नहीं करवाया, मैंने कहा मैं गुस्ल दे के आता हूँ, तुम नहीं जाओ उधर। बट दैट्स द रियलिटी, इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट रियलिटी। So we have to work very hard in instilling Islam in our kids' heart. Otherwise, we will lose them. So you can maintain that and then go back and work in Middle East. When you go back in Middle East and work that, from that perspective, तुम्हें पता चलेगा, वो बोलेंगे ओह सैयद अब्दुल कादिर आ गया, बस सैयद अब्दुल कादिर जलानी हो गया भाई, ये तो बिठाओ उसको ऊपर, ठीक है। तो दिस इज व्हाट हैपेंस। अभी तुम नॉर्मल सैयद अब्दुल कादिर, ठीक है ना। तो अगर अब्दुल तुम्हें कुद्दूस सैयद अब्दुल कादिर जलानी बनना है तो उसके लिए तुम्हें जरा जी जलानी है, जी गिलानी कौन है, जो भी है, whatever, right? गिलानी। लेकिन वैसे जलानी। मेरा नाम अब्दुल कुद्दूस है, अब्दुल कादिर मेरे बड़े भाई का नाम है। अच्छा, मैं ये बोल रहा था फैसल भाई, मुझे जो है वो अभी लैब के लिए ईमेल रिसीव हुई थी, लेकिन अभी मेरा यानी अभी मैंने तो कोर्सेज पूरे कंप्लीट नहीं किए, तो उसको मैं इग्नोर करूँ उस ईमेल को, या कोई प्रोजेक्ट ऐसे पॉसिबल होगा कि जो इनिशियल स्टेज में भी मैं इन्वॉल्व हो सकता हूँ उसमें? You can involve yourself in all of the Al Razzak labs. I will show you how the Al Razzak labs are done. But हमारे जो try not to miss any of the live classes. If you miss the live classes of internship, try to watch the videos. ठीक है ना? Learn from there ठीक है। and then go back. Al Razzak labs is where you have to create. We will tell you how to create the systems, how to create the whole process. But then you have to replicate. तुम्हें replicate करना है, वीडियो बनानी है, हमें सबमिट करनी है। हमारी वीडियो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिव्यू करेगी कि सैयद अब्दुल खुद्दूस ने क्या चीज़ सबमिट की है, वो क्या था, आवाज़ की टोन कैसी है, क्या है क्या नहीं है। वी आर यूजिंग एआई फॉर आवर थिंग्स एज वेल, राइट। और फिर हमें रिपोर्ट देगी कि इसने कितना अच्छा काम किया, सारी ऑब्जेक्टिव्स मीट की नहीं किया। तो फिर अब हम उसको लेकर आने वाले हैं कि वो तुमसे इंटरव्यू के सवाल भी करें। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स चेंजिंग। एआई जो है वो 1 लाख से ऊपर एमसीक्यूज बना रही है, मैंने काफ़ी सारे बना लिए उसने। For every topic has 4 different versions of MCQs. So we will keep on reshuffling the labs, the MCQs. So हर बंदे के पास अलग अलग होगी। 10 बंदे हैं, 10 के 10 के पास अलग वर्जन होंगे। वो ये नहीं बोल सकता मुझे ये मिला है, मुझे वो मिला है। The chance of them saying कि मुझे सेम मिल गया is very difficult, right? So even if there are millions of students, I mean it will keep on changing, right? So that's what we're doing. क्विकली बहुत मेरा ख्याल है
ईद उल अजहा पे पाकिस्तान आने का प्रोग्राम बनाने, तो अगर मौका होगा तो आपसे मुलाकात होगी, आप मीटअप का जरूर प्रोग्राम बनाइए। I will be in Karachi, inshallah. जी इंशाल्लाह, मैं भी कराची, तो मैं भी अपने वेकेशन उसी टाइम प्लान कर रहा हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह आपसे मुलाकात इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। होगी। जज़ाकल्लाह जी, खैर सर। तैयब फयाजी, बोलिए, बिस्मिल्लाह। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम। I'm Abdul Tawaf Fayazi from Afghanistan, but now living in Pakistan. My question is just that I'm in DCCS, but I have started new classes. I progressed only 4%. Then I want to ask you that can I join the Razzak Lab or not? And beside this, which country is better for us to go, because I have case in two countries like Australia and Germany. And which one is better for the cyber security and DCCS and other courses? However, I have done my security class and CHV11, and also I am CCNA and CCNP and course certified. Okay, so here's the thing. What do you have to do? For the Al Razzak program, there are certain requirements, and which is mentioned on the website in many videos as well. The first requirement is EduQual exam. You have to pass the EduQual exam, right? Part one. Part one is the MCQs. So you have to go through the MCQs. You have to pass all the MCQs. You don't have to study all the courses to pass the MCQs. MCQs are just, they're too many, and we'll keep on adding, right? The difficult part is the interview and presentation. So we'll give you a topic. We'll issue a topic ourselves. We will give you a topic where you, after passing this, you have to keep on continuing the courses. So for example, if there are 10 courses, you have to complete 9 of them. Then we will give you a topic, right? Now, along the way, we will also see that if you have completed all the part one of the exams, we will register you in the Al Razzak labs. Then you will start receiving the labs. The labs, if someone wants to ask me how the labs looks like and what those labs are, I will do a separate program to show you the labs. How do they look like and what do they have to do, so on and so forth, right? So there's a ton of things that you have to go for. I'm going to show all of that. Just give me 1 minute. The difficulty levels are different, and I'm going to hide everything up. So then I just show you the key things. So these are the labs, right? The labs are given as per, I've hidden all the things because these are our own internal things. So I can't share all these documents, but you will find them throughout the portal. So you have to go through the labs of many Red Hat exams, KCNA, and many other things. There are more things in there. There are also basically different, sorry, wait a minute. There are also certain different things in there as well, like Al Razzak roles as per the diploma program. So there are certain roles. So if you're doing diploma in cloud cybersecurity, the roles are different. If I have to read the roles from here, let me see and open the roles sheet, right? Job roles and responsibility. For DCCS, you'll be working as basically, if I can find that. I don't have the document with me right now, but it's going to be similar to system administrator, cloud administrator, automation engineer, infrastructure engineer, SOC engineer, GRC. So there are different roles. So you have to do all the labs of these different roles, right? So once you complete all the labs, once you complete then part two of the requirement and all those things in 12 months time, and you meet the other requirements of LinkedIn course and communication course and all of those things, then we will place you wherever you are. So if you are in Middle East, wherever you are or in Middle East, but if you are looking for us to place you in Germany or in Australia or in other countries, you need to have at least more qualifications like AIOPS, first of all. Since you have already applied for these countries in whatever programs you've applied for, I don't know how long it will take, but if you get an opportunity, go to Germany, because the German economy is much bigger. If you get the blue card,
which you will, I believe, if you have applied as, whatever the case is, you will be able to work anywhere within Europe. And the European countries are too many. And right now, the European Union is going through a digital transformation because they're upgrading their defenses and their economy to withstand Russia, right? So you have much better opportunities in Germany as compared to in Australia. Australia is too far away. Yes, there are projects going on, but it's less dynamic as compared to Germany. If you compare the GDP of these two countries, Germany is much bigger as compared to Australia. So Germany is like this, Australia is like this. So you can imagine. Just look at the GDP, the gross domestic product of these two countries, and so you will realize, even though Australia is too big, it's a whole continent in itself, but still, the economy is much smaller as compared to Germany. If I search online, just to make sure, Germany versus Australia, population and economy size, right? So comparison, I'm just looking at the comparison, right? So you can see world top economies, right? This is and let me look at the data of 2023, because 2024 is still started. So the global forecast, you can see shrinking economies, whatever, right? So this one, Germany, see, this is the German economy. And do you see Australia here anywhere? I mean, it's a very small place. Even if you look at the numbers, I mean, the growth is very different, right? Let me see here if I can find some good things. SubhanAllah. So I would suggest you, go for Germany as compared to Australia. But if you get Australia first, then yeah, I mean, go ahead. Australia it is then. I mean, whatever comes first for you, whatever, like right now, you're not in the position of choosing, right? Whoever sponsors you first, just go there and just work there. That is my recommendation for you. Okay. Okay, Abdullah. थैंक यू सो मच फैसल भाई. मैं आपको तकरीबन कोविड से फॉलो कर रहा हूँ एंड माय क्वेश्चन मैंने टाइप भी किया है. मेरी जो जॉब है वो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के साथ मैं टीचिंग कर रहा हूँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर. माय पैशन इज़ टू यू कैन से वर्क ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और जो न्यूबीज़ हैं उनको आईसीटी इंट्रोड्यूस करना. बिफोर ज्वाइनिंग वर्चुअल यूनिवर्सिटी, इससे पहले मैंने रूट्स में सर्व किया है और फ़ज़ाइया जो स्कूल कॉलेज है वहाँ सर्व किया है. सो आई टीच आईसीटी फ्रॉम ग्रेड 1 टिल यू कैन से यूनिवर्सिटी लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ तक. मेरा अभी जो करंटली पैशन है या जो मैं दो फील्ड्स को देख रहा हूँ आई रियली लाइक. एक तो डिजिटल लिटरेसी का बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि डिजिटल लिटरेसी नहीं है पाकिस्तान के अंदर. मतलब आप जो बात कर रहे हैं डेवऑप्स की या इसकी, मैं कुछ बच्चों को पढ़ा रहा हूँ वर्चुअल में, तो यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स भी आते हैं, दे आर इन फाइनल सेमेस्टर और उनको स्काइप के ऊपर ना स्क्रीन शेयर करना भी नहीं आ रहा होता. तो मैं बेसिकली काम करना चाह रहा हूँ इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन के अंदर, ई लर्निंग के अंदर. फिर मैं ये देख रहा था कि ई लर्निंग के अंदर भी बहुत सारी नई जो है ना जिद्दत आ रही है. एआई, जैसे अभी आपने जिक्र किया, एआई जनरेटेड क्वेश्चंस हैं. एक तो मुझे थोड़ा सा एडवाइस करें कि हाउ आई कैन बिल्ड माई सेल्फ इन दिस कैरियर. मेरा जो फोकस है वो एजुकेशन, लर्निंग डेवलपमेंट, ई लर्निंग इसके ऊपर है. इसके अंदर फिर मैं देख रहा हूँ कि कंप्लाइंस और गवर्नेंस की चीज़ें भी आ रही हैं, जैसे CMI5 है, XAPIs हैं, कुछ टेक्निकल चीज़ें भी हैं, फिर ऑथरिंग टूल्स हैं. तो वेरी बिग थिंग जो ई लर्निंग डेवलपमेंट है. अभी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा इस पर वर्किंग कर रहे हैं. तो अलनाफे किस तरीके से काम करता है, आपका LMS कैसे काम करता है, लर्निंग एनालिटिक्स आप कैसे लेते हैं? एक तो आई वुड लाइक टू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस और थोड़ी सी मुझे एडवाइस भी करिएगा. मैं देखें, अपनी इंटेलेक्चुअल चीज़ें तो शेयर नहीं कर सकता कि हम क्या करते हैं. दिस अ लॉट ऑफ थिंग्स. मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, हमारे पास एक डेटा लेक है. सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स मैं अगर बताऊंगा कि तो आई वुडंट बी सरप्राइज दैट आपको भी नहीं मालूम होगा, राइट? हमारे पास डेटा लेक है, हमारे पास अपनी डेटा स्ट्रीम्स हैं, हमारे पास जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं AI, वो बेसिकली अजोर के ऊपर है.
हमारे अपने सिस्टम्स हैं। अभी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं टेस्ला के सिस्टम्स जिसके ऊपर हम अपनी एआई चला रहे हैं, राइट। हम जेमिनाई को भी देख रहे हैं जो गूगल की तरफ से आई है। क्लाउड जो माइक AWS का प्लेटफॉर्म है वो भी यूज़ कर रहे हैं। अभी जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं जो ओपन एआई भी साथ में हमारे चल रहा है। सो दिस अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि टीचर्स की जॉब बहुत ज़्यादा खतरे में, बिकॉज टीचर्स की जगह प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स आ जाएंगे जो कि अच्छी तरह लिखेंगे कि भाई उनको क्या चीज़ चाहिए, व्हाट आर दे लुकिंग फॉर। सवालात बनाना, सवालात चेक करना एआई कर रही है हमारे पास, हमें किसी बंदे की ज़रूरत नहीं है। एक ज़माने में हमें डबिंग के लिए लोगों की ज़रूरत होती थी। हमने 1.5 से 2 करोड़ रुपए लगाए सिर्फ ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन करने में। यानी बच्चे हमारे लम्स के GI की जिनकी इंग्लिश अच्छी होती थी उनको हायर करते थे, और वो हम उनको 2,000 2,500 घंटा देते थे रुपए, ठीक है ना। वो हमारे लेक्चर सुनते थे और उसको लिखते थे इंग्लिश में, तो ट्रांसक्राइब करते थे और ट्रांसलेट करते थे। दे विल ट्रांसलेट एंड ट्रांसक्राइब। वो सारा काम हमारा अब एक मॉडल है विस्पर का, इट्स नो सीक्रेट। जो भी इसमें काम करता है दे विल लर्न, एंड दिस इज व्हाट वी टीचिंग। हमने उसको हार्नेस किया, अब हम उसकी कंपनी बनाकर उसको बेचने, अब उसको रिलीज करने वाले हैं, राइट। सो बट इट टुक अस टाइम टू डेवलप दोज थिंग्स। तो वो क्या करता है कि वो पूरा 10 मिनट का लेक्चर है तो वो 10 मिनट का लेक्चर 5 मिनट में पूरा ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट और ट्रांसक्राइब कर देता है इंग्लिश में। उर्दू में हम बात कर रहे हैं, वो उर्दू हमारी सुनता है, उर्दू अरबी इंग्लिश जो भी लिख रहे हैं वो सब लिख रहा है, सुन रहा है और कर रहा है। इट्स वेरी फास्ट। वी यूजिंग टेस्ला। टेस्ला इज अ ग्राफिक्स कार्ड जो कि अब अगेन मैं बहुत सारी चीज़ों में बात नहीं करूंगा क्योंकि वो फिर आपको भी समझ नहीं आएगी, बिकॉज आप टीचिंग में आ रहे हैं ना, टीचिंग में एक लिमिटेशंस हैं, और आप LMS बहुत आगे निकल चुका है। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो अगर मैं इतनी टेक्निकल उस पर बात करूंगा तो इट्स बियॉन्ड एनीवन्स कॉम्प्रिहेंशन राइट नाउ, एनीवन हु सिटिंग हियर राइट नाउ मे बी देयर माइट बी अदर पीपल जिनको पता हो, ठीक है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हम कर रहे हैं। इसके अलावा अब बहुत सारी हमें जॉब्स खत्म हो गई, हमें किसी का काम नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो एक ही जगह हमारा जो मार्केटिंग का बंदा है, हमें किसी कंटेंट क्रिएटर की जरूरत नहीं है, कंटेंट क्रिएटर फारिग हो गए, ठीक है ना। ब्लॉग राइटर्स फारिग हो गए, एक एक करके सब जाते चले गए, AI ने सबको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। हम सिर्फ लाइन लिखते हैं कि हमें इसके ऊपर चाहिए, वो हमारी सब चीज़ें लर्न कर रहा है कंटिन्यूसली। इट्स अ वेरी एक्सटेंसिव फील्ड, ठीक है ना। वही चीज़ जो है अब हम अपना जो नया अपग्रेडेड अपडेटेड जो वो बना रहे हैं उसके अंदर नई चीज़ें आ रही हैं। सो दिस अ लॉट ऑफ टन्स ऑफ थिंग्स जिस पे हम काम कर रहे हैं, एंड दे आर चेंजिंग, दे आर मॉर्फिंग वेरी वेरी फास्ट। दिस इज अ वेरी वेरी डायनामिक डिसिप्लिन, राइट। सो मैं ये कहूँगा कि अगर आपको इसमें काम करना है, you need to start somewhere by learning it first. What is happening? What is DevOps? What is SysOps? What are all of these things? जो आप बात कर रहे हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जो लोग आते हैं, अनफॉर्चुनेटली ये प्रपोजल मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के पास लेके गया था, खालिद महबूब सिद्दीकी साहब के पास, जिनके लोगों ने मुझसे कहा था कि पहिए लगा दें। तो मैंने कहा नहीं भाई, पहिए शही कोई नहीं लगते, अजीब बात कर रहे हो तुम ना। तो ये सब चीज़ें हैं, बट द थिंग इज के देयर इज अ लॉट ऑफ करप्शन, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड दैट्स व्हाई पीपल आर बैकवर्ड, राइट। आई वुडंट बी सरप्राइज क्योंकि आपके पास जो लोग आ रहे हैं वो इसी तरह के लोग हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर दूसरे कामों में बिजी हैं, ठीक है ना, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट AI जिस हिसाब से काम कर रही है, अभी हम जो प्लेटफॉर्म टेस्ट कर रहे हैं उसमें AI सारे सवालात भी लिख रही है नोट्स को देखकर, नोट्स भी बना रही है, ठीक है ना। नोट्स को फिर जब बच्चे सबमिट करेंगे चेक भी करेगी। एग्जामिनर्स की ज़रूरत नहीं है, कुछ की ज़रूरत नहीं है। आई मीन थिंग्स आर गोइंग एट लाइटनिंग स्पीड राइट नाउ। इन द नेक्स्ट 5 to 10 years यूनिवर्सिटीज़ के मॉडल्स बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे बाहर ममालिक में। पाकिस्तान जो है ना, कैचअप तो पाकिस्तान तो गर्क हो जाएगा, ऑलरेडी गर्क हो गया है, ठीक है ना, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और उसके टुकड़े हो जाएंगे। जैसे डॉक्टर साहब रहमत ने भी कहा है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ टुकड़े होंगे। एक टुकड़ा जो है सरहद का वो वहाँ चला जाएगा अफगानिस्तान के पास, ठीक है ना, जहाँ पर डॉलर 70-75 रुपए का है, हमारे पास देखें क्या हालत है। और भी दूसरे इश्यूज हैं, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब चीज़ें हैं जिस मुल्क में जो है ना, अगर इंसाफ ना हो तो वो चाहे काफिर का क्यों ना हो, मुसलमान का क्यों ना हो, अल्लाह ताला गर्क कर देता है। तो काफिर का होगा, इंसाफ होगा तो उसमें भी अल्लाह ताला उसको सलामत रखेंगे। Whatever they're doing something right. That's why things are right now stable here and they are way backward over there. So आपको पहले लर्न करना पड़ेगा, अपने अंदर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, जहां आप डिप्लोमा इन AIOPS पढ़ें, सब चीज़ें करें,
जब आप ये सब चीजें पढ़ के करके आते हैं, then your perspective will change immediately, and then you'll be able to understand कि क्या हो रहा है, and then you'll be able to move forward and do all of these things. This is my recommendation for you. ठीक है जी? जी फयाज अहमद साहब, बस मैं 2 सवाल और लूंगा, प्लीज पेश कर दीजिए, मैं पढ़ के ताकि इसको अस्सलाम आंसर। वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है फैसल भाई, खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया सर मौका देने का। मैं असल में पूछना ये चाह रहा था फैसल भाई, लास्ट टाइम भी जब आपसे बात हुई थी वो इतनी डिटेल में बात नहीं हो सकी थी। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि मेरा जो बैकग्राउंड है, आपने मेरा सीवी रिव्यू किया होगा इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल सिस्टम के हवाले से। तो बैचलर में इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसके बाद मास्टर्स जो है वो कंट्रोल एंड ऑटोमेशन में, और मैं पिछले 12 साल से अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में हूँ। तो मैं AIOPS में अभी 2 मंथ्स अगो मैंने लिया है, और अभी एजुकॉल के एग्जाम्स वगैरह भी जो है ना वो तकरीबन 6 to 8% हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं फोकस जो है ना वो AIOPS में किसके ऊपर ज्यादा करूँ? जब आप अपनी सारी अपनी चीजें कंप्लीट कर लेंगे ना, अभी हमने जो हम सबको जो टॉपिक्स दे रहे हैं ना पार्ट 2 के लिए, हम उसको दे रहे हैं उसके जी बैकग्राउंड के जी ऊपर। तो आपको शायद ईमेल आई होगी कि आप अपने सीवी जमा करवाएं। जब आप पार्ट 1 के सारे कर जी लेंगे ना, जी 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 आपको जी एक ईमेल आएगी कि आप अपना सीवी जमा कराएं। अब जो भी जी एग्जाम जी की फीस जमा कराएगा उसको एक ईमेल आएगी, आप अपनी सीवी जमा कराएं, अपनी लोकेशन बताएं, सब कुछ बताएं आप कहाँ पर हैं। तो जी। मैं, ईमेल आ गई है, ईमेल आ गई है। हाँ, वो इसलिए कि हम उसके बेसिस के ऊपर लोगों को टॉपिक देंगे कि उसकी लोकेशन क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी सीवी में क्या नजर आता है। अगर हम इसकी सीवी में एक पैटर्न नजर आएगा, जैसे आप थे, आपसे पहले जो अब्दुल कुद्दूस साहब थे, अब्दुल कुद्दूस साहब को जी मैं जी फिर अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे काम करवाऊंगा ताकि वो फिर वो जर्मनी और उसके हिसाब से वो कर सकें, यूरोपियन यूनियन के हिसाब से कर सकें। आपका भी इसी तरीके से होगा। इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स में इस वक्त बहुत काम हो रहा है एआई के अंदर इन्फ्यूजन का। उनको क्लाउड में, सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम बहुत पुराने पुराने चलते हैं, राइट? जी जी। आपको अभी तक बिल्कुल मैंने अपनी जिंदगी में विंडोज 3 के सिस्टम्स भी देखे हैं। 3.1 चल रही है, सही चल सही। रही है, उसको कोई हिलाएगा भी नहीं, वो बोलेगा भाई नहीं हिलाओ उसको, ये चल रहा है ना, पूरा पूरा बिल्कुल प्लांट है। चल रहा है। ठीक है, 40 40 साल से पंपिंग के सेशन चल रहे हैं, पुराने पुराने बिल्कुल। हाँ वही वही PLCs लगी हुई हैं, हाँ, बस अपग्रेड हो वही जाती है। पीएलसीज, वही पुराने एचएमआई, हर चीज चल रही है। उन्होंने क्या स्टार्ट किया हुआ है? TCS। बस उन्होंने क्या किया, इसको पूरा इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा भाई काट दो सब कुछ, बस यहाँ चलेगा, अंदर ही बस। अंदर होगा। प्रॉब्लम वहां आ जाती है कि अब सैबोटेज और दूसरी चीजें, फिजिकल सिक्योरिटी का मसला आता है। कोई भी आए, यूएसबी कहीं डाल दे, कुछ कर दे, खुद सब उड़ा देगा। ठीक बिल्कुल है ना? तो ये बिल्कुल। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छी जॉब्स हैं, बिकॉज अब वो क्या कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी, अब नया क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग उसमें आ जाती है, ठीक है ना, उसमें विंड टर्बाइंस, ये सब चीजें, उसके स्ट्रक्चर सब। तो उसमें आप हो गए, आपके दोस्त, या आप तीनों दोस्त हैं ना, आप, फयाज जी जी। और और उस्मान तीसरा कौन है? उस्मान उस्मान वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हाँ, तो ये तीनों जो है ना, ये तीनों यूरोपियन यूनियन में जाके उतर सकते हैं। ठीक है ना, बिकॉज इनके लिए काम करना यहाँ पर आसान है। आप तीनों यहाँ सऊदीया में भी हैं, तीनों वहां पर भी जा सकते हो। तो वो इंशाल्लाह। ज्यादा आप लोगों के लिए बेहतर है, क्योंकि वहां पर ऐसे लोगों की उनको जरूरत है। तो आपके अब पास ट्रेडिशनल एक्सपीरियंस भी है, आपके पास हाईटेक चीजें भी आ गई हैं, आपने वो काम भी कर लिया। यू विल बी एबल टू सिक्योर जॉब्स मच फास्टर इन जर्मनी एंड यूरोपियन यूनियन एज कम्पेयर टू एनीवेयर एल्स। ठीक है ना? अब I wouldn't be surprised if you even come to USA as well, right? USA में उनकी स्किल शॉर्टेज इतनी हो गई है कि दे आर ओपनिंग न्यू कैटेगरीज, राइट? फैसल सो भाई, कनाडा कैसा है? क्योंकि क्विकली वहां पे पासपोर्ट अवेल कर सकते हैं 3 साल के अंदर, एज कम्पेयर कनाडा टू में आपको पासपोर्ट US और जल्दी मिल UK। जाता है, एब्सोल्युटली यस। आप पीआर पे 2 साल गुजार दें, तीसरे साल फाइल कर दें, ठीक है, बिल्कुल और चौथे साल आपको पासपोर्ट मिल जाता है। सो बिल्कुल। 3 से 4 साल का टाइम है, आपको पासपोर्ट मिल जाता है। आमतौर पे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पकड़ कर यहाँ से यूएस चले जाते हैं, सही सही। क्योंकि कनाडा जो है वो यूएसए की कॉलोनी है, जो यहाँ से दूध, डबल रोटी, अंडे, टिम्बर, हर चीज यहाँ से वहां जाती है, राइट? सही कनाडा की सारी लैंड मास के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, ठीक है ना, लेकिन पॉपुलेशन जो है वो कराची के बराबर, ठीक है। सही और सारी सही पॉपुलेशन जो है वो साउथ ऑफ यूएस बॉर्डर 100 किलोमीटर्स में रहती है, ठीक है। सही ऊपर नॉर्थ सही सारा खाली, ठीक है ना। सही। तो मेरे एक उस्ताद हैं जो मुझे मॉरिटेनिया से जो कुरान पढ़ाते थे, तो वो अभी येलो नाइफ में रहते हैं, बिल्कुल एक्सट्रीम नॉर्थ है वहाँ पर। आम दिनों में भी -20 -30 रहता है, ठीक है। अल्लाह तो अकबर। वहाँ सिर्फ 1500 लोग हैं, 1500 मुसलमान हैं, पता नहीं इतने, ठीक है ना। बाकी सब वो नेटिव्स हैं, नेटिव अमेरिकन है ना, उनमें भी वो इस्लाम कबूल कर रहे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। जबरदस्त आदमी है वो, ठीक है ना। मैं उनके साथ इसलिए पढ़ता था क्योंकि उनको खलफ और जो है ना वर्ष और इस तरह की किरात जो है ना, जो बड़ी रेयर है, वो आती हैं, क्योंकि अब तो दुनिया भर माशाल्लाह पे पड़ता है।
सऊदी ने माशाल्लाह, सबको बिल्कुल हफ्ते पे लगा दिया है, ठीक है ना। तो बाकी जो 20 रिवायात हैं, 20 में से सिर्फ एक रिवायत जो है ना वो पढ़ी जाती है सऊदीया के अंदर। जो सब वही पढ़ते हैं, लेकिन बाकी रिवायत को भी जिंदा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज दे विल गो, मिट जाएंगी सारी, ठीक है। तो एनीवे द पॉइंट इज के मसर और दूसरी जगहों पे वो होता है, तो जी आपके लिए बहुत अच्छा चांस है कि आप जो है ना वहाँ जाएं, वहाँ पढ़ना। सीमेंस, श्नाइडर इलेक्ट्रिक, इस कंपनीज में आपके लिए घुसना आसान है अगर ये ऑलरेडी सही। सऊदी में भी काम कर रही है, ठीक है। ये तो ऑलरेडी हम इनके साथ काम कर रहे हैं, श्नाइडर की पीएलसीज हैं और सिमेंस की पीएलसीज हैं, वीएफडीज हैं और हाँ, डीसीएस इनको सेव करना, डेल्टा इनको भी। सिक्योर करना। तो फिर मैं जी आपको जो काम दूंगा ना, फिर मैं आपको, आप एज एन इंजीनियर है ना स्काडा के, फिर मैं आपको जी काम जी दूंगा जी। कि इसके साइबर सिक्योरिटी और एआई के अंदर लेकर आना। मैं आपको सही उसमें भी काम, तो आपकी जो लैब्स होंगी वो बिल्कुल डिफरेंट होंगी। शुरू में कुछ लैब सिमिलर है, आगे जाके आपकी लैब्स ठीक बिल्कुल टेलर्ड होंगी आपके कैरियर के हिसाब से। दैट्स व्हाट वी गोना ठीक डू। इंशाल्लाह। तो आप अभी सही। तो अपना वो करें, जब आप कर लें उसके बाद देन वी विल सी इंशाल्लाह। आज इंशाल्लाह कराची में मुलाकात होगी इंशाल्लाह बकरीद पे। मुझे बड़ी खुशी हुई अभी सुन के, माशाल्लाह अब्दुल कुदूस से आप बात कर रहे थे, तो अच्छा, नहीं इंशाल्लाह नहीं, प्रोग्राम इंशाल्लाह बनाएंगे इंशाल्लाह। कराची में कहाँ पर आपसे रहते हैं? मुलाकात। मैं नॉर्थ कराची आपने में होता हूँ, इत्तेफाक ऐसा कि मैं भी बकरीद पे जा रहा हूँ पाकिस्तान जी। अच्छा, आपने डॉक्टर शमीम आजम का नाम सुना है? डॉक्टर शमीम आजम, गुलशन इकबाल में होते हैं। मैंने नाम नहीं नहीं मैं नहीं सुना सर। बहुत मशहूर डॉक्टर हैं डॉक्टर शमीम आजम, डॉक्टर अच्छा परवीन आजम। जी जी। अच्छा मेरे मेरे फादर इन लॉ हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ परवीन आजम जो गायनेकोलॉजिस्ट है। जी जी, परवीन आजम सही 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 सही, माशाल्लाह। को तो पूरा ठीक। पाकिस्तान जानता है वो। जी 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 जी। वो बहुत मशहूर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी 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 जी। तो वो मेरी सही। मदर इन लॉ है, तो एवरीवन नोस। तो माश उनके घर के पीछे ही मेरा घर है, उनका घर देख, आप पूछ लें घर बस कहाँ है, लाल घर है बड़ा सा, उसके पीछे ही बस मेरा घर इंशाल्लाह है। इंशाल्लाह। मिल जाएंगे इंशाल्लाह, मिलेंगे इंशाल्लाह। चलें, मैं इंशाल्लाह आमतौर पर मुलाकात होगी मस्जिद में कराची लोगों से मिलता हूँ, मस्जिद में आ जाओ यार, ठीक है, या चाय के होटल पे फजर के बाद, ठीक है। फजर सही। के बाद बोलता हूँ कोई भी नहीं आता, सब सो जाते हैं। ठीक है, तो सर वहां पर आपका बैठ, रोड मैप क्या है सऊदी अरब में? एक आखिरी सवाल था, आपका रोड मैप क्या है सऊदी अरब में, ये मुझे पूछना था। मैंने राइट भी किया था क्वेश्चन कि हम आप किसकी तैयारी करें, जो ऑलरेडी सऊदी अरब में लड़के मौजूद हैं, दे शुड बी फर्स्ट बेनिफिशियरी ऑफ योर प्लान देखें, सबसे इंशाल्लाह। पहले सऊदी के जो लड़के हैं ना, उनको सऊदीया में एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ा। आपको जी। पता है अभी अकामे की फीस कितनी, राइट? आप खुद वो अकामे की फीस दे रहे हैं या कंपनी दे रही है? वो तो कंबाइन दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह, में बच्चे ही पैदा हुए हैं सब अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे सेट हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे। हाँ, लेकिन अब जो हालात हैं वो बहुत मुश्किल होते चले जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। आइंदा आने वाले जो सऊदीजाइजेशन हो रही है ना, कि वो जो नेशनलिज्म जो उनकी चल रही है ना, जिसके जी जरिए वो समझ रहे हैं कि इससे कामयाबी हो जाएगी, इससे कामयाबी नहीं होगी। मैं तो बहुत खास और सख्त क्रिटिक हूँ। सऊदी में आप मेरे साथ मत चलिएगा, ऐसा ना हो मुझे पुलिस पकड़ेगी आपको भी ले जाएगी, ठीक है। सर साथ साथ जाएंगे फिर आपके साथ। नहीं नहीं, आप मेरे साथ बिल्कुल मत जाएं, मेरे साथ, मैं बता रहा हूँ ना, मुझे बहुत दफा जो है ना वार्निंग मिली है, मक्के में और मदीने में, ठीक है ना। तो मैं तो कभी आपको अपने साथ नहीं चल, मैं बोलूंगा मेरे साथ मत चलो, ठीक है ना। सही। हाँ हाँ, मैं सही ठीक बता रहा हूँ, मेरे साथ मेरे जो सऊदी दोस्त हैं वही चलते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको ठीक अभी से ठीक। बता रहा हूँ कि मेरे साथ मत सही चलिए। सही लेकिन है। क्योंकि मैं बड़ा सख्त क्रिटिक हूँ और सख्ती से बात करता हूँ, मैं तो सही। रबी अल मदखली के खिलाफ हूँ, और ये सब जो जो है ना, जो बादशाह के सपोर्टर्स हैं, मैं, ठीक ठीक। है। सऊदीया जो है ना एक वॉलेटाइल रीजन है। सऊदीया के अंदर आप 20 साल गुजार लो, 25 से 40 साल गुजार लो, आपको जब चाहें जिस वक्त चाहें मर्जी होगी उठा के फेंक दें, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये जगह सही नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। आप यहाँ रह सकते हैं, आप अगर आप सऊदी रेजिडेंसी भी अप्लाई करेंगे तो वो आपको 8 लाख रियाल समथिंग की मिल रही है, ठीक है उसमें ना। ही पासपोर्ट नहीं है सर, सिर्फ रेजिडेंसी जी, है, बस मैं, पासपोर्ट हाँ, नहीं। मैं कर रहा हूँ ना, मुझे पता है। तो उसमें भी कोई पासपोर्ट वगैरह नहीं है, तो वो भी अगर बादशाह, अगर ये बादशाह भी है, दूसरा आ गया, उसने कहा नहीं भाई ये सब खत्म, ठीक है ना। और अगर वो बहुत ही अच्छा होगा, बोलेगा पैसे आपके वापस कर दो, बस जाओ, सब बोलो सब जाए, ठीक है ना। ये भी हो सकता है। एनीथिंग कैन हैपन बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी वॉलेटाइल रीजन, ठीक है। आई वुड ऑलवेज एडवाइज यू, इट्स अ गुड प्लेस टू लिव। मैं खुद जब मूव होऊंगा, मदीने मूव होऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। इट्स अ इंशाल्लाह गुड प्लेस टू इंशाल्लाह। लिव, यस, एब्सोल्युटली यस। हाउएवर, ठीक है ना, यू शुड हैव अ सेपरेट कंट्री पासपोर्ट। इस वक्त दुनिया इंशाल्लाह में, ओके। हाँ, आप जर्मनी का ले लें, जर्मनी में भी आपको इतने में अच्छा मिल जाएगा। आपका जो स्किल सेट है, आप डायरेक्ट ब्लू कार्ड पे जा सकते हैं, आपको कोई स्टूडेंट वीजे ठीक। की जरूरत भी नहीं। आप हो गए, आपके जो दोनों दोस्त हो गए,
स्टूडेंट में और आप में फर्क है ना, आप ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम करते हैं, आपने सिर्फ अपने आप को अपग्रेड किया है एआई के हिसाब से और आप अब उधर जा रहे हैं। इट्स अ कंप्लीटेड। अगर आपको अपॉर्चुनिटी सिंक्रोनाइज करना मिले है एआई यूएसए के की, साथ। हाँ अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली यूएसए कनाडा की मिली, एब्सोल्युटली टेक इट। ठीक है ना। ठीक। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली यूरोप की, एब्सोल्युटली टेक इट। सेटल डाउन, सेटल हो जाए, सब कुछ कर लें, फिर उसके बाद आप वापस चले जाएं सऊदी, या फिर आप रह लें, आप रह सकते ठीक हैं, है। आप ठीक है। पैसे कमा सकते हैं, आपकी सेविंग है, सब कुछ है। ठीक है ना। टैक्स तो ऑलरेडी लग गया है वहां पर, कितने परसेंट है, 18% है, 15% है 15% ना। तो टैक्स तो वैट। ऑलरेडी लग गया है वहां पर। अभी वो और भी दूसरे काम करेगा, क्योंकि अमेरिका सबसे ज्यादा उनसे लेता था पेट्रोल, अब सारा, अब वो कहते हैं ना, नॉन ऑयल, यूएस नॉन ऑयल यूएस फ्रेंडली इकोनॉमी। नेशन, तो अब कनाडा से जाता है सारा पेट्रोल। बिल्कुल राइट। बिल्कुल। So things have changed drastically. So in the next upcoming years, it will change much more because everyone is going toward green energy transition, right? बिल्कुल और बिल्कुल ग्रीन सर। एनर्जी में बहुत काम हो रहा है, यहाँ पर बहुत काम हो रहा है। आप यूएस जाए, मैं भी फ्यूनरल अटेंड करने जा रहा था, पूरे पेंसिल्वेनिया में आधे रास्ते में तो मुझे बड़े बड़े विंड टर्बाइंस नजर आ रहे थे। इतने मैंने कहा ये पहले तो नहीं था, अभी कैसे आ गए, पूरी पहाड़ उन्होंने भर दी है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट गोइंग ऑन। ठीक है। और वो सारे विंडी एरियाज हैं, सब जगह वहां पर यही हो रहा है। सो दे आर यूजिंग ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी, एंड दे आर ऑल्सो गोइंग टुवर्ड्स न्यूक्लियर एनर्जी एज वेल। ठीक है ना। सो क्योंकि उसका फुटप्रिंट कम है ना, एज कम्पेयर टू बिल्कुल फॉसिल फ्यूल्स के। जी तो सर। ये लोग इस पे, क्योंकि इनका वेदर चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है, ये बहुत कंसर्न हो गए। ठीक है, कि आलूदगी और सब चीजों से बहुत परेशान हो गए, तो दे आर चेंजिंग। 2030 में, 2034 में सारी यूरोपियन गाड़ियां जो हैं वो इलेक्ट्रिक होंगी, उनका सही। मैंडेट है। आप लोगों के पास और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में बहुत काम है, इन सब चीज़ों में बहुत काम आ रहा है। सो दे आर लुकिंग फॉर इंजीनियर्स, सो यू विल स्क्वाडली सिट देयर। द अदर थिंग इज के यहाँ पर भी इसी तरह यूरोप और यूएसए में वो नई स्कीम्स लेकर आएंगे, दे विल ओपन द गेट्स। वो कनाडा की तरह स्कीम लेकर आ रहे हैं, अभी इस पे बात हो रही है, पॉइंट सिस्टम। सही। They will close down visa lottery. They will close down all the other things. They are sick and tired of all the other immigrants जो आते हैं और फिर कुछ काम हम जैसे उधर छोड़, because यूएस की इकोनॉमी चेंज हो रही है, इट्स चेंजिंग, इट्स मॉर्फिंग। ठीक है ना। बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट पैदा हो गया उनके दिलों में इमिग्रेंट्स के खिलाफ, और इलीगल भरे में सारे। ठीक है। तो मैं एक मुसलमान दुकान में गया, नहीं क्या नाम था उसका, मोइन ब्रदर्स, मोइन समथिंग, वहां अंदर वो बना रहे थे, अपने कजन के साथ गया तो वो बना रहे थे वहां पर फिली स्टेक सैंडविच। ठीक है। तो अभी रमजान से 2 दिन पहले की बात है। ठीक है ना। तो इतवार के दिन, ठीक है ना, मैं सुबह गया तो उसको, बच्चे को कुछ खाना था, मैंने कहा अच्छा मैं लेकर आता हूँ, देखता हूँ हलाल दुकान कहाँ है। तो उसने कहा बाल्टीमोर में हलाल दुकान यहाँ पर है। मैं चला गया, मैंने कहा यार मुझे कुछ दे दो खाने के लिए, क्योंकि मैं होटल में ठहरा हुआ हूँ और खाने को कुछ है नहीं। तो वो जो खाना बना रहा था वो स्पेनिश था, मैक्सिकन। सही। मैंने बोला सही। कि हलाल है भाई ये, मैंने कहा ये क्या कर रहा है बंदा, किसी से पाकिस्तानी है, उसने कहा हाँ भाई ये सब हलाल है, 100% हलाल है। मैंने कहा यार भाई ये वो बना रहा है पीछे, कह रहा है भाई वो बना रहा है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ सब जबिया हलाल है। मैंने कहा कहाँ से लिया है सब, मैंने शुरू हो गया उसके साथ। मैंने कहा यार मुझे बताओ सब कुछ भाई, तो उसने सब मुझे वेरीफाई किया। मैंने कहा अच्छा ठीक है सही। मैंने कहा ये कहाँ से आ गया, कह रहा है भाई ये चीप लेबर है यार। ठीक है। सही। ये इसको, ये काम कर रहा था, इसको निकाल दिया था, इसको उठा के लगी थी पुलिस, वापस आ गए, घूम फिर के वापस आ गया। तो वो जो टीवी में दिखा रहे थे, मैंने कहा तो वो जो टीवी में दिखाते हैं कि रोजाना 12,000 15,000 20,000 बंदा आ रहा है, कह रहे वो बिल्कुल आ रहा है भाई, इसको उठा के डिपोर्ट करके ले गए थे, ये घूम फिर के वापस आ गया 3 महीने बाद। सही। ठीक है। तो सही। क्या यार, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। एंड यूएस के अंदर अब उनको एक नया सिस्टम चाहिए, सो दे हैव अ न्यू सिस्टम एंड दे आर लुकिंग फॉर पीपल। सो आई एम टीचिंग दिस टू सेम, मतलब कि मेरे पास एक, देयर वाज अ मैक्सिकन गाय, स्पेनिश गाय फ्रॉम मैक्सिको, ही इज वर्किंग हियर इन कनाडा ऑन $3 एन आवर। $3 मिलते हैं उसको 1 घंटे के, $3 1 घंटे। बस। He came in my house to fix a machine, जहाँ मैं बैठा हूँ, this is my gym, see this is my सही। gym। So ये माशाल्लाह। ट्रेडमिल है, ये माशाल्लाह। ट्रेडमिल है, ठीक है ना। ये माशाल्लाह। ट्रेडमिल है, तो इस ट्रेडमिल को फिक्स करने के लिए, द गाय हु केम टू असेंबल, बेसिकली दिस इज माय बेसमेंट, दिस इज द जिम एंड माय ऑफिस। ठीक है। सो जो वो काम करने आया था, ही वाज अ स्पेनिश गाय, सो आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम कि भाई तुम कहाँ से हो, इधर से उधर से। तो उसने कहा कि आई एम फ्रॉम स्पेन। तो उसको टूटी फूटी इंग्लिश आती, उसने कहा बट आई नो मुस्लिम्स, क्योंकि स्पेन में दावत तबलीग वाले लोग जाते हैं, दावत देते हैं, अल्लाह उनको जजा दे, बड़ा अच्छा काम करते हैं, वट। ठीक है, इख्तलाफ है लेकिन अच्छा काम करते हैं भाई, ठीक है सही है। In every capacity they do something, so if they're doing something right, let them do it right।
So उसके साथ जो दूसरा था वो मुसलमान था, वो रिवर्टेड मुसलमान था, and he was from Colombia. So there was a Colombian Muslim and there was a Spanish Christian, both in my house and from Mexico, and they were assembling the machine. So I started talking to them. Said, "How much do you earn?" He said $3 an hour. I said, "That's not possible. How could that be? इतना तो कोई illegal क्यों भी नहीं देता?" उसने कहा, "That's my salary." So मैंने उसको बोला कि this is a great concern. I mean, how can you survive? He said, "It's better for me to do some work here as compared to Mexico, where there is nothing." मुझे इसका आज मैसेज आया था फाक्स, उसका मैसेज आया, तो लेट मी सी, मैंने इसका नंबर सेव किया हुआ था, ब्रदर फर्नांडो, ब्रदर फ्रॉम मैक्सिको, दिस इज हिज नंबर, लेट मी शो यू हिज नंबर, ठीक, सो ब्रदर फर्नांडो, ब्रदर फ्रॉम मैक्सिको, ठीक है, सो ये इसका, सुभान अल्लाह, एक मिनट, ये इसका मैसेज है, अजीब, एक मिनट सब्र कीजिए, वेट अ मिनट, सो सर इससे ज्यादा तो बंगाली यहाँ पे कार वॉश करके कमा लेते हैं माशाल्लाह, जितना आप बता रहे हैं। That's what I'm saying. This is very very alarming, right? So ये मेरे पास आया था and मैंने इसको बोला भाई प्लीज कॉल मी बैक, मतलब कि मेरे बॉस ने वो किया है, मैंने कहा मुझे ट्रेडमिल मूव करनी है, लास्ट टाइम ये मेरे पास लास्ट ईयर आया था और अभी दोबारा ये आया, तो इसने मुझे नंबर दिए, सब कुछ किया, मैंने कहा मैं तुमसे बात करता हूँ, मैंने कहा प्लीज मुझसे बात करो ताकि मैं तुम्हारे लिए वो कर सकूं और तुम्हें बताऊं कि तुम्हें यहाँ जॉब प्लेसमेंट मिल सकती है, ठीक है ना, और तुम्हें मैं लगवा सकता हूँ यहाँ पर, तुम वो कर लो, क्योंकि मैक्सिकन्स इट्स इजियर फॉर देम टू कम हियर टू कनाडा ऑन अ विजिट वीजा, ठीक है ना, जैसे दुबई के वीजे लेते हैं ना पाकिस्तानी, जी सर, Spanish, they can, because of the North American treaty, there's a treaty between these countries, right? So they can come here for 6 months and they can extend their stay for another 6 months. So what they do is they come here and they do all the hard work. ठीक है, खाने की सब्जियां पिक करना, फार्म पे काम करना, and but they are paid under the table very very low. अल्लाह, This is the reality. When I was in Medina, I asked the person, "How much do you earn?" And he said, "My salary is 400 riyal." I said, "I just bought food from the hotel. I was staying at Movenpick Hotel, right? In front of Medina." I said, "I just bought the food for 250 riyals. How can you survive in 400 riyal?" He said, he was from Pakistan. He said, "It's Ajib." His answer was very strange. He said, "Alhamdulillah, I asked Allah to give me an opportunity to come and clean the masjid of his beloved messenger. माशाल्लाह, माशाल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि So I'm वसल्लम, happy. सुभान अल्लाह, I said, Ajib, मेरे पास जितने जेम पैसे मैंने कहा ये लो यार, अल्लाह अकबर, अल्लाह ठीक है, अकबर, ये सब रखो भाई तुम, ये सब यार मेरे पास और नहीं है, मैंने कहा मैं मशीन के पास गया, मैं निकाल के लाया, मैंने कहा ये भी रखो तुम, अल्लाह अकबर, ये सुभान जरूरत नहीं है, अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स अजीब, मैंने कहा तुम खाना कैसे खाते? So उसने कहा कि from 10 kilometers far away from this place is our tent city, there's a tent city, and 15-20 kilometers out of Medina. So he said like that's where we stay, in the morning we come here, 12-hour shift, then we go back and we stay there. So sometimes they give us dal, some rice, and people come and they ask us and they give whatever they can. But I said, this is, I mean, how much do you make like after, because I saw him, he was cleaning and his hand was like this. One hand was like this and he was standing with his broom. So I went to him, I said, and I saw him like people were coming and they were putting money in his hand. So he was kind of begging. I said, why are you doing this? This is the house of the last beloved messenger of Rasul of Allah subhanahu wa ta'ala. What are you doing here? So उसने कहा कि भाई ये इस तरह से, मैंने कहा यार मैं क्या बोलूं? When I started giving bayan in Medina, I said there is no Islam in Medina. So the Arabs were standing like this, said like, how can you say that? I said there is no Islam in Medina. Do you know how much this person earns? He said, no, this is not our job. I said, this is your job. You should know how much he earns. His salary is 400 riyal. The person said, I can't believe that. I said, go and ask him. All of these people, they are earning the same salary. So they were on a Bin Laden company group contract. And in Makkah, the contract is with some other company. Can't remember the name. Nesma. No.
So the cleaners, they have on their shirt, it says the company name, right? So Yes. they are paid 600 riyals, something like that. It doesn't matter how old you are, it doesn't matter how long you have been serving in the masjid, but and they do all the hard work. After every salah, Barter they it. Barter have it, them. sir. Yes. It's very, very tough. Yes. You know, and they keep on cleaning the masjid, they keep it clean and neat. And all the Arabs, they sit on this mimbar like this, you know, the shurtas. They have a seat which looks like it's a seat of a pharaoh or something, which is very high. It's Yes. ajib, like, you know. So I said to them, like, there is no Islam over here. There's no Islam. If Prophet Muhammad ﷺ would have been alive, he would have allowed this, what is happening right now. So what I'm saying is there's a lot of things going on in Saudi Arabia. Yes, sir. Yes, sir. If you are a high earning person, you can do a very sustainable lifestyle. But if you are not, then it is very difficult for you to survive. You know, if you do AI ops, you can earn, you know, 35, 40,000, 50,000 riyal if you have a foreign passport, right? But if you don't have a foreign passport, then it becomes very difficult, right, for you to survive. Because the Saudis, you know, the Saudis, they told me, I asked one of the shurtas, what is his salary? He said, like, I earned 8,000 riyal. I said, are you satisfied? Oh, akhi, wallahi, like, you know, it's too many issues. Some money goes into my rent, then my telephone, and he had the most expensive telephone. iPhone. Every security guard had iPhone 14. iPhone. Yes. Because I had the phone. Because this is iPhone 14, right? I change my iPhone every 3 years. Right? So at that time I changed my phone because I get it free. Right? Right? Alhamdulillah. So alhamdulillah, that's the contract that they give it to me. So every 3 years. So I said, like, you don't need this expensive phone. How much you paid for it? And they pay for the phone over there. It's not as if they get it for free. So you can imagine they have a very expensive lifestyle, and they will never be able to do, you know, one of the receptionists at Movenpick Hotel, I asked him, you know, he saw my name and he said, Dr. Faisal, like, what do you do? So I don't know who told him Dr. Faisal, because my wife was a doctor. So he assumed like I'm a doctor. I said, like, no, I'm not a doctor. What did you study? So I told him, like, I went to MIT, Stanford, like, and did all of these things, but I'm working now. So I asked him, like, you know, what do you do? So I changed the subject. I said, what do you do? He said, like, I did my degree in computer science. I said, what are you doing here? I couldn't find a job. So I'm working as a reception at Movenpick. This was an Arab guy. This was an Arab guy, right? So things are getting very, very competitive in Saudi Arabia. And they will get more competitive because the infrastructure that they're building, they will require more things. So he is trying to create a consumer-based economy. So once someone is trying to create a consumer-based economy, you need more consumers to come in. Right? Just like USA, just like Canada. You buy more. Canadian economy is resource-based, natural resources. US is all consumer-based. They rely on consumer consumption. China is similar, and manufacturing. Right? So they balance it out. Pakistan, there is no economy. It's just rishwa, right? So it's just like Karzalo or Khajo. So you can just rent, like, just get whatever you can, and all the journals, they go outside. You haven't done breakfast with these journals. I have done that. You haven't eaten food with them. I have done that. If I say something, you'll be like amazed. People who eat in gold-plated plates, do you expect them to manage the countries? No. You know, I'm fasting right now, and I'm telling you, people who eat in gold-plated plates, do you expect them to run the countries? That's not happening. So this whole nizam, this whole democracy system, it's a very crippled system. So anyway, so inshallah, my recommendation to you is just go out, secure yourself, then come back. This is my recommendation. Thank you, sir. Thank you very much. Jazakallah khair. Yes, Taha, you're the last person, because then I will see if anyone has written anything over there. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam wa rahmatullah ji. Sir, I was just getting home. Literally, मैंने बिना सर एक शेशे पे रुक के बैठा रहा, आपकी बातें सुनता रहा. मैंने कहा
शायद अभी बारी आएगी, अभी बारी आएगी, अब बारी आएगी। Sorry, तो यार, there's so many things कोई going on. मसला नहीं, I कोई have to मसला go. नहीं ठीक. सर। मैंने आपकी सारी बातें सुनी है, फयाज भाई की बातें सुनी है, तो जो कमाल भाई आए थे उनकी बातें सुनी है। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि जिस तरह फयाज भाई भी हैं सऊदीया में, अभी आप कह रहे थे कि सऊदीया में बड़ा ना ये बड़ा टफ हो जाना है। तो इन्होंने बेसिकली ये है कि आपको देखे, मैं अगर सऊदीया जाता हूँ, जिस तरह मेरे फादर है अभी सऊदीया में, ठीक है, मेरी माशाल्लाह बर्थ उधर हुई है, मैं उधर जाता हूँ, मैं वहां पे अगर जॉब लेता हूँ सर, बाद में अगर जब मैं मैरिज करता हूँ, ठीक है, तो मुझे अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना है, तो उनके लिए लहदा वीजा लगवाना है सर। तो मैं क्या अच्छी चीज ऑप्ट करूँ, मैं जर्मनी जाऊं या तो मैं सऊदीया जाऊं? क्योंकि सर देखिए, मैंने पहले भी डिग्री की है, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है अभी खास, तो उसकी बेस पे कहेंगे आपको एक्सपीरियंस नहीं है कोई, तो वो मुझे सर जॉब ना दे तो फिर क्या फायदा है सज्जाद जर्मनी जो जाने का? तुमसे जो तुम्हारे साथ सज्जाद बैठा हुआ था, उसकी भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ भी नहीं था। उसने सारा हमारे साथ पढ़ा, सब कुछ किया। उसके 6-8 महीने की इंटर्नशिप के ऊपर उसकी होम ऑफिस में जॉब हो गई। ठीक है ना? होम जी ऑफिस वही जगह है जो सबकी वीजा इशू करती है। ठीक है ना? तो जी, क्रोटन में आई है ना, लंदन में? हाँ, मैं दैट्स वेरी। लंदन लंदन में ही होता हूँ। ये रिमोट काम करेगा, इसके मजे हैं। ठीक है ना? सो और मैंने इसको कहा था कि तुम यार, इसने कहा मैं इंटरव्यू में फेल हो गया। मैंने कहा तुम्हारे तो इतना अच्छा, तुमने सारे सब कुछ कर लिया। तो मैंने कहा तुम मुझसे जरा इंटरव्यू दो। तो जब जिस तरह ये उर्दू में बात करता था, इसी तरह रिच एक्सेंट में इसने, पंजाबी एक्सेंट में, ही स्टार्टेड टॉकिंग टू मी इन इंग्लिश। आई सेड यार एक मिनट सब्र करो, जस्ट वेट अ मिनट, योर एक्सेंट इज वेरी थिक इन इंग्लिश, राइट? सो यू नीड टू चेंज दिस, बिकॉज कह रहा है कि मैं आई कैन पास द टेस्ट एंड एवरीथिंग, बट मैं फेस टू फेस इंटरव्यू में फेल हो रहा था। Of all the things, he ended up working at home office, where I could never imagine. Home office में जहाँ माशाल्लाह, सारे गोरे बैठे होते हैं। ठीक है? पर बस ये अल्लाह की कुदरत है। ठीक है ना? तो this is the thing. So if you work hard, you can secure it. So if you ask him, वो शेफील्ड से पढ़ा उसने, अदर फील्ड शेफील्ड, वो कह रहा था कि किसी की जॉब नहीं हो, सिर्फ पिछले 3 साल के उठा के देख लो, किसी ये बहुत कॉमन है। मैं जब यूके में आया था, आई केम ऑन द सेम थिंग। ठीक है ना? और आई केम विद द सेम एस्पेक्ट्स, मैं इसी तरह आया था। और यहाँ तौकीर साहब बैठे हुए हैं, मुझे अभी भी नजर आ रहे हैं। तौकीर भाई आप चले आते। तौकीर भाई बैठे हुए थे यहाँ पर। एंड व्हेन आई एंटर्ड कनाडा यूके It's फर्स्ट, very interesting. I'm listening. व्हेन आई एंटर्ड कनाडा यूके, तौकीर भाई के घर पे मैं सबसे पहले आया था। सेकंड डे को मैं तौकीर भाई के घर पे आया था। ठीक है? और तौकीर भाई को मैंने वहाँ देखा, और मुझे बड़ी मोहब्बत हो गई इनसे, इनके भाई सबसे, इनसे खास थी। ठीक है ना? सो इट वाज वेरी डिफरेंट। एंड देन आई सॉ पीपल लीविंग लेफ्ट एंड राइट। ठीक है ना? अराउंड मी, एंड तौकीर भाई वाज वन ऑफ देम। तौकीर भाई, आप अपनी स्टोरी शेयर करेंगे? आप भी यूके रह चुके हैं, आपने बड़ी चीजें देखी। सर बस एक और क्वेश्चन था, मैंने बस ये पूछना था। अ, जी मैं सर, आपको कहा सर मैं मैं, आपको कहा मैं आपको बताता हूँ। तौकीर भाई जरा शेयर कीजिएगा अपनी चीजें। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, हुआ इस तरह से कि मैं इनसे उम्र 10 साल बड़ा हूँ। ठीक है। और जब हम वहां पे आए थे तो ये लोग बहुत नौवर लड़के थे बेसिकली। और मैं एमबीए कर चुका था, और मैं सिर्फ वीजा बढ़ा रहा था आगे ताकि स्टे करूँ और कुछ पैसे कमाऊं, जो मैंने खास कमाए ही नहीं। ठीक है। जब फैसल साहब आए थे तो वो बिल्कुल लड़के थे, लड़के का मतलब लड़के ही थे बिल्कुल ही। ठीक है। अच्छा, दाढ़ी थी इनकी, टोपी पे लगाते थे, और सब लोग वहाँ जॉब करते थे। हमारे जितने लोग थे हम लोग शेयरिंग करके रहते थे, बहुत अच्छे हालात नहीं थे किसी के भी, सब एक जैसे थे उस वक्त। ठीक है ना? तो उस वक्त हमने इनसे कहा भाई कि जॉब करो, तो पाकिस्तान रहे पैसे कब तक चलेंगे? इन्होंने मना कर दिया कि नहीं जनाब, जहाँ अल्कोहल होगी, जहाँ पोर्क होगा, मैंने काम ही नहीं करना। हमने कहा भाई रुल जाओगे यार। लोग मजाक उड़ाते थे इनका। हमारे एक शोएब सिद्दीकी साहब होते, वो तो थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा सा ज्यादा सेकुलर थे। वो तो बहुत सारी बातें कह दिया करते थे। हाँ, ठीक उन्होंने है। बहुत मुझे इन्होंने कहा बहुत नहीं, सारी मैंने करना बातें ही बोली नहीं भी। है। जी जी। हाँ, वो बहुत वो एंटी मुल्ला थे बेसिकली। ये समझ लिया आसान अल्फाज में। ठीक है ना? अभी वही रहते हैं वो। तो वो उन्होंने कहा भाई जॉब करो, यहाँ पे रुल जाओगे। जो पुराने सीनियर थे वहां, उनका एक ही तरीका था, भाई पैसे कमाओ, यहाँ पे क्या कर रहे हो यहाँ से? उन्होंने कहा नहीं, मैंने करना ही नहीं है। फिर एक सेंसबरी है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ की, है सुपर स्टोर चेन है, यहूदियों की है वो। इन्होंने वहाँ इंटरव्यू दिया, वो इंटरव्यू लेते हैं, वीडियोस दिखाते हैं, उन्होंने क्वालिफाई कर लिया। ठीक है। और जब क्वालिफाई जॉब ऑफर की, उनका एक शर्त है मेरी, हालांकि वो शर्त सुनते नहीं है, जाहिर है उनकी उनकी टर्म्स होती है। उन्होंने कहा, फैसल साहब ने कहा जनाब मेरी एक शर्त है कि मैं अल्कोहल को पोर्क का हाथ दिलाऊंगा। ये क्या बात हुई? मैं उन्होंने कहा मान ही बस ये लिया। रीजन बताओ। रिलीजियस रीजन मैं नहीं करूंगा।
तो वो इतना मुतासिर हो, उसने कहा ठीक है जी मैं आपकी फाइल, जब तक आपने काम करना है इन डिपार्टमेंट में आपकी जॉब नहीं लगेगी। और जब ये घर पे आए तो हमने कहा वाकई एक बंदा साबित कदम हुआ, ठीक है। और हम इसको कहते रहे यार गलती कर रहे हो, पैसे खत्म हो जाएंगे, कंगले हो जाओगे, ठीक है ना। और खातिम इसको नौकरी अच्छी मिल गई, ठीक है। तो ये बात पहला लेसन था मेरा कि वाकई अगर बंदा खड़ा हो इस चीज के मजबूत होके, वो चीज को अल्लाह ताला दे देते हैं, सिर्फ आजमाते हैं, टाइम से आजमाते हैं और पैसे से आजमाते हैं। तो ये सारी चीजें थी वहां से। ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। मैं जो है ना 6 महीने तक मैंने जो सेंसबरी में एक ब्रेड होती है वो भी खाई है, सिर्फ ब्रेड और बेक बीन्स। तो हम इनके घर इस बहाने से जाते थे कि वहां पर ना ये लोग खाना बनाते थे, तो हम बैठ के खाना भी खा लेते थे, ठीक है ना। लेकिन हमने बार बार खाना बनाना वही सीखा है, खाना बनाना वही सीखा, वरना पहले वे में अंडा फ्राई करके खाते थे, ठीक है ना। जी जी। तो मेरे साथ जितने लड़के थे जिन्होंने हमारे साथ रहा, तो हमने घर में जो है ना, मैं अब बिल्कुल डिफरेंट थियोलॉजी का हूँ, ठीक है। लेकिन मेरी तालीम मौलाना जो है ना हकीम अख्तर रहमुल्लाह, मौलाना यूसुफ लिद्वानी रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती आजम पाकिस्तान जो थे मुफ्ती रशीद रहमुल्लाह, इनसे इनसे थी। और मुफ्ती तकी सानी साहब की मस्जिद में बचपन से पढ़ा, उनके भाई को देखते आ रहे थे, उन्हीं की मस्जिद में बैतुल मुकर्रम में पढ़ा सब कुछ। तो एक चीज़ थी कि साबित कदम थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक टाइम ऐसा था कि मेरे पास पैसे ताहा बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। मैं टोटल 400-450 पाउंड लेकर आया था, ठीक है। एंड टाइम वॉज पासिंग बाय एंड आई वॉज रनिंग आउट ऑफ मनी एंड देयर वॉज नो मनी, ठीक है ना। देयर वॉज अ टाइम वी वर वेरी रिच एंड देयर अ टाइम केम वी लॉस्ट एवरीथिंग, वी लॉस्ट एवरीथिंग। So I was on the floor, ठीक है ना। But my parents told me that if you be, my mother, especially my mother, she told me कि अगर तुम साबित कदम रहोगे तो तुम बहुत कामयाब होगे, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। You know, वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो पेशावर की जो औरतें होती हैं बुर्खा पहनना सब इस तरह से है, बट वो बच्चों को बहुत पढ़ाना सब कुछ करना उसका काम था। तो देयर वाज अ टाइम, आसिफ सिद्दीकी साहब एक थे, अब वो पाकिस्तान में है वो भी, ठीक है। आसिफ सिद्दीकी साहब मुझे ले गए एक जगह, एक शॉप थी जो 11 बजे के बाद शराब नहीं बेचती, क्योंकि वहाँ लाइसेंस होता है 11 बजे के बाद यू कांट सेल वाइन, राइट। सो आई वाज स्टैंडिंग बिहाइंड, दिस वाज माय फर्स्ट डे एंड आई वाज वेयरिंग अ कैप एंड this I can't remember, I can't forget this thing. I will always remember this thing and it comes to me once in a while. मुझे वो नजर आता है बंदा कि मैं रिसेप्शन पे खड़ा हुआ था, so behind the till there was a lot of wine, there was a lot of bottles of wine and I was very depressed कि where am I standing, what am I doing, I'm running out of money, what should I do. It was very ajeeb feeling, right? So a person came and it was 11 o'clock at night and me and another guy was there at the shop, right? So a person came and he said, "Am I Muslim?" I said, "Yes, I am." Yes. So now he was an Arab and that this shop was near the Edgware Road, right? वहां पर करीब थी उसके। तो उसने मुझे बोला कि उसने मुझसे अरबी में बात की। मैंने अरबी तो लोग करीब, मैंने कहा कलील, मैंने कहा इतनी ज्यादा उस टाइम पे नहीं आती थी। तो उसने कहा अच्छा, उसने कहा कि उसने दोबारा बोला आर यू मुस्लिम, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह यस आई एम। उसने कहा if Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sees you like this standing behind Khamar, he will cry, right? But if Umar bin Khattab sees you like this, he will chop off your head. What are you doing here? मैं जब सुना ना, I immediately called Asif bhai and I said, it was 12 o'clock at night, and I said to Asif bhai, यार I have to go, I can't work here. Asif bhai said, यार मैंने अपनी जो है ना दाव पे लगा के मैं बिठाया, तुम क्या कर रहे हो, यू कांट डू दिस, यू कांट डू दिस, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तुम क्या कर रहे हो फैसल, मुझे जॉब से निकाल देंगे, वो बड़ा ख़राब आदमी, ये वो। मैंने कहा यार आसिफ भाई मैं काम नहीं कर सकता, अगर मैंने काम किया ना मैं इधर ही मर जाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि ये चीज़ गलत है, ठीक है ना, मेरे लिए ये गलत है, मैं इधर खड़ा ही नहीं हो सकता। सो आई लेफ्ट दैट, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे बिकॉज मुझे सुबह कैश पैसे मिलने थे 35 पाउंड्स, ठीक है, मुझे पैसे मिलने थे। तो मैं वहां से पैदल चलकर घर आया, वाइट शर्ट। So I still remember that day. So when some people come to me and tell me their stories, I've already been through all of those things and many, many other things. That's something I don't want to share right now. But the thing is, if you are consistent and if you are persistent
and if you keep on doing things, you will be successful. ठीक है? If you are not, अगर देखो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम ना इबादत करो और वो बेशक थोड़ी हो लेकिन कंसिस्टेंट हो, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो बिलीवर ज्यादा कीमती है जो कंसिस्टेंट है और जिसमें ईमान है और वो साबित कदम है, एज कम्पेयर टू वो कि जो बस फजर की नमाज पढ़ेगा बड़ी जबरदस्त तरीके से, ज़ोहर असर मगरिब में सब गायब। ठीक है ना? तो अल्लाह ताला को कंसिस्टेंसी पसंद है। इफ यू आर कंसिस्टेंट, आई कीप ऑन टेलिंग दिस टू एवरीवन, तो वो बहुत कामयाब है। अगर वो नहीं करेंगे, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। मैंने ऐसे लड़कों को देखा है, वो जो सज्जाद था, वो फिश एंड चिप्स पे काम करता था। उसने अपने फॉर्म में क्या लिखा? ही वॉज अप्लाइंग एट होम ऑफिस। उसने अपने फॉर्म में लिख दिया फिश एंड चिप्स। मैंने सर पकड़ा, मैंने कहा ये तुमने क्या किया? मैंने उसको बोला तुमने क्यों लिखा? उसने कहा फैसल भाई बस ये। मैंने कहा यार अब दुआ करो, मैं भी दुआ करता हूँ तुम्हारा काम हो जाए। ठीक है? सज्जाद मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पर, इज दैट द सेम सज्जाद? तो उसका काम हो गया, अल्लाह सेलेक्टेड हिम। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। जी मैं सुन रहा हूँ तब से। जी जी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये फिश एंड चिप्स में काम करता था, ये इतना सीधा साधा आदमी था। इसने लिख दिया, फॉर्म भर रहा था। मैंने कहा तुमने फॉर्म कहाँ भरा? कह रहा है मैंने रेफरेंस, मैंने कहा मेरे पास रेफरेंस नहीं आया। कह रहा है मैंने डाल दिए थे फिश एंड चिप्स। फैसल भाई वैसा हुआ, मैंने आपसे रब्ता करने की कोशिश की ना इंटरव्यू के लिए भी और भी काम के लिए, तो हाँ फिर मैं आपका बिजी था रिप्लाई यार, नहीं मैं आया, नहीं तो फिर उठा मैंने सकता ऐसे था। कर दिया। हाँ मैं क्या चलो देखी जाएगी जो होगा अल्लाह की तरफ से। तो जो आपने बात की है वो ऐसे ही हाँ बिल्कुल दुरुस्त है। कंसिस्टेंसी, मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती थी कि अपना एक, आपने पूछा क्या रैंक है, तो मैं ये नहीं बोल सका कि वो हायर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये नहीं बोला जा रहा था। मतलब ऐसा था इंग्लिश, अभी भी ऐसे ही है, लेकिन अल्लाह की तरफ से ही है कि जो अल्लाह ने दिया है, वरना अपने में तो कोई कमाल नहीं। So I'm telling you guys, like, listen, someone asked me, someone तौकीर भाई आपसे किसी ने पूछा ना कि जो है ना फला फला सुंदर पिचाई बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ। भाई मैं यूएस में उतरा एयरपोर्ट पे, every time when I had to travel locally from basically California back to Ohio. My wife was a doctor, ठीक है ना? She was working in US, and I had the work authorization and everything. She was a US grad, and they used to ask me to sit at the airport for every time for 2 hours. So मैं चले जाता था एयरपोर्ट, दो फ्लाइट अगर मेरी 5 बजे है तो मैं 1 बजे जाता, क्योंकि मुझे पता है मुझे 2 घंटे एक्स्ट्रा बिठाएंगे. So they used to run background checks on me every single time, and I had the highest authorization to work in the US for the major companies. ठीक है? With the same beard in the cap, I went to the only difference was I wore custom suits because मैं broad था, ठीक है ना? तो मुझे ऐसे बाजार के सूट नहीं आते ठीक है? तो ऐसे मैं पहन लेता था, ठीक है? But I went there and they knew about me. They knew what I was doing. They knew where I studied from. But because of the hostility जो चल रही थी, they used to make me sit every time for 2 hours, every single time. ठीक है ना? After many years, they said, यार अभी बंदा बिल्कुल क्लियर है, इसके पास तो हाईएस्ट क्लियरेंस है। जो मेरी क्लियरेंस कर रहा होता, जो मेरे पर रन चेक कर रहा था, मेरे पास उससे ज्यादा क्लियरेंस थी कि मैं उसको भी देख सकता था कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, किधर किस एयरपोर्ट पे बैठा हुआ है, क्या है। I had the access to the database, but I never did that. मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास मुझे काम है. So if you stick to what you're doing, and if you're honest, and if you work hard, and if you rely on Allah subhanahu wa ta'ala, He will help you. He will help you. I've seen it with my own eyes. Okay? When I started this project, I left a very hefty job. $50,000 महीना कमाना बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना? डॉक्टर्स कमाते हैं यहाँ पे, सही है? So $50,000, that's my last salary, ठीक है ना, जब मैंने छोड़ा है, ठीक है? It's very difficult to leave more than $1 million package and start this, but I knew what I was doing, what I planned to do, etc., etc. I started with one company, now there are 4 companies. ठीक है? So it all comes down to how you work hard. ठीक है ना? And you don't have to change your appearance, you don't have to change yourself. Don't change yourself. ठीक है? And if you want to draw inspiration not from the YouTube personalities. सब झूठ बोलते हैं, जो तुम्हें एडवर्ट दिखा रहा है ना, धोखा दे रहा है, तो हराम कमा रहा है, गलत है, ठीक है? क्योंकि सब हर किस्म के एडवर्ट्स आते हैं मेरे पास। मैं किसी की वीडियो खोलता हूँ, अजीब एडवर्ट्स आते हैं। मैं कहा यार ये कैसे, शराब का एडवर्ट आ रहा है, उसका एडवर्ट, क्या क्या ये क्या, व्हाट इज हैपनिंग? ठीक है? LGBTQ फलाना फलाना, इट्स ऑल मेस्ड अप.
And they do it. And they should, and this is how they're earning. And they have a fatwa. I will just give like a little portion of it. Rasulullah, and I read you the hadith. Rasulullah says, if you earn haram, and even if you get some in charity, Allah will not make it halal. ऐसा होता तो आसिफ अली ज़रदारी तो बहुत नेक आदमी है यार फिर, ठीक है, नवाज शरीफ तो बहुत नेक आदमी है फिर, तो उनसे बड़ा तो कोई नेक है नहीं. This is not how you do things. In Islam, you have to be steadfast. Then Allah will help you. It is not your appearance, trust me. You know, it is not your appearance that counts. It is what you deliver that counts. To Allah, it doesn't matter कि तुम्हारा रंग गोरा है, काला है, कैसे हो, क्या नहीं हो. What matters is कि how दो चीजें हैं जो अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र किया है. If you have those in your deeds, Allah will accept the deeds. Otherwise, if you bring a mountain of deeds, Allah will reject them. ठीक है ना. मेरी माँ से पूछा कि ना जो मदर टेरेसा है जन्नत जाएगी या दोज़ख जाएगी. मैंने कहा भाई, the criteria in front of Allah is if you do the deeds and it meets to need two criteria. Done for the sake of Allah, first criteria. Second, it is mentioned in the Quran. Second is as per the sunnah of his last messenger, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. If it meets these two criteria, Allah will reward it in the hereafter and in this dunya. If it doesn't meet these two criteria, Allah will give you whatever you have here. There is nothing for you on the day of judgment. There is nothing. There is nothing. So you need to make sure that you meet these two criteria. Allah will, and never deceive anyone. झूठ नहीं बोलो, हमेशा सच बोलो. बहुत बड़ी चीज है सच बोलना. This is the biggest problem. The biggest fitna is everyone is telling lies. Idhar udhar sab jagah. And always try your level best to do whatever you can and stick to the principles of Islam. Allah will give you victory. Allah has promised you the victory. The only thing is, Allah will wait. And He waits. And there is a wisdom behind it. We don't know. He knows. Ke kab dena hai. But when He grants you, you will be satisfied. And if it doesn't give you here, it will give you on the Jannah. On that day, you will see what Allah will give it to you, right? But always ask Allah, oh Allah, there are certain du'as I make. If someone asks me like the du'as, there are lots of du'as that in the hadith, all the great du'as. Allahumma la ilaha illa antal mannan, badi'us samawati wal ard, dhul jalali wal ikram. There are many beautiful du'as that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gave us, but you can ask any du'as you want in your own language as well when you're doing sajda, right? So sajde mein dua mango Allah Ta'ala se, jab subhana rabbil ala पढ़ लो, सब कुछ पढ़ लो, सुबह कुद्दूस या रब्बुल मलाइकति वर रूह, जितनी दुआएं जो अस्कार हैं पढ़ लिए sajde mein. Then you can ask for many other duas from Allah subhanahu wa ta'ala. That is a secret. And working hard. Eat less, train yourself, make yourself fit as if you have to fight right now. Be always ready. And Allah will give you success every step of the way. But you have to work hard. झूठ बोलकर रिस्क कमाना बहुत आसान है. आज अगर कोई बोलना शुरू करे तो millions of उसके followers हो जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं. That's the easiest way. But सच बोल के काम करना is the most difficult. But Allah give you taskeen, Allah give you sakina and your rahmah. And the risk you earn from telling the truth is much better in the eyes of Allah as compared to haram. Like I showed you the guy who's selling our courses, somehow he was able to get them and he's selling them. He's earning haram, right? So if you ask Allah haram, Allah will give you haram because it is Allah who is giving. If you ask halal, Allah will give you halal. It all comes down to, what are you asking? So that is what it is. So take care of the time and inshallah, all of you will be successful. Meet the requirements of Al Razzak. If you meet the requirements of Al Razzak, it is our responsibility to place you. Again, our responsibility. So if you really want to be relaxed and say, yeah, I just want to do my part. Do your part by meeting all the requirements of Al Razzak, get all the exams done, everything done, and then go for it, inshallah. We will place you, inshallah. Okay? Jazakallah khair. I have to go now. I'm very tired. I have spoken a lot. बहुत बोलिए. अस्सलाम वालेकुम. Walaikum salam.